बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अली सलमान स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची से अपने तमाम नाजरीन को इस ज़बरदस्त मैच के चौथे और आखिरी दिन खुश आमदेद कहता है कि जहां पर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल अब इस मैच में आ गई है और 55 रन पे 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। इस वक्त सेंट्रल पंजाब के एक ज़बरदस्त स्पेल किया सिंध के बॉलर्स ने कल तीसरे दिन खेल के अख्तामी लम्हात में और 5 बड़ी कीमती विकेटें हासिल की और स्पेशल विकेट हासिल की आबिद अली की, सुहेल खान ने, जो इस मैच में सिंध को इस वक्त ड्राइविंग सीट पर लेकर आ गई है। तो बड़ा ज़बरदस्त ये मैच है। 5 विकेटें अब तक गिर चुकी हैं, 5 मजीद विकेटें बाकी हैं, लेकिन 251 रन की जो लीड है वो अब सिंध को हासिल हो चुकी है। तो अब दोनों ही टीमें यहाँ पे पॉइंट लेवल पे एक दूसरे के साथ तगोदाव करते हुए, क्योंकि 16 पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे सिंध की टीम को मिलेंगे और बॉलिंग पॉइंट 3 पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो 19 पॉइंट्स के लिए इस वक्त सिंध की टीम जो है वो स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि पॉइंट लेवल पे जो सूरत हाल है वो लम्हा ब लम्हा बदलती नज़र आ रही है। लेकिन जो परफॉर्मेंस दी है सिंध के बॉलर्स ने, सिंध के प्लेयर्स ने, उसके हवाले से गुफ्तगू करने के लिए और अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से बात करने के लिए मेरे फेलो एंकर अली यूनुस के साथ इस वक्त मीर हमजा मौजूद है। सो ओवर टू अली यूनुस। Mir Hamza, over 10 years of cricket, over 350 wickets, so without reward, अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हैं? जी बिल्कुल, एज ए क्रिकेटर आपको शायद सबसे अच्छी जो मोटिवेशन मिल सकती है वो अपने आप से मिल सकती है। रिवॉर्ड मिले ना मिले, इन द एंड आप प्रोफेशनल होते हैं, आपको हर बार एफर्ट करनी पड़ती है, आपको हर बार परफॉर्मेंस करनी पड़ती है। दैट्स इट। इस पिच की अगर हम बात करें, सबसे बेहतरीन बॉलिंग की आपने पिछले मैच में भी, इस मैच में भी, क्या राज है इसका? कोई ख़ास राज नहीं है। जब 4 डे क्रिकेट खेल रहे होते हो तो आपको पेशेंस से बॉल करनी होती है और आपको मेरे ख्याल से बैट्समैन रीड करना होता है, कंडीशंस रीड करनी होती है कि इस पिच पे किस बैट्समैन के लिए कैसी बॉल करनी है। तो मैं हर मैच में यही करने की कोशिश करता हूँ और माशाल्लाह से इसका रिवॉर्ड भी मिल रहा है। और कितना हेल्पफुल होता है आपके साथ सुहेल खान है, ताबिश खान है, आपके पार्टनर्स? जी बिल्कुल, बहुत बर्डन कम हो जाता है जब आपके पास इतने एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर्स होते हैं। सुहेल खान, ताबिश खान मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, उनसे भी मुझे सीखने को मिलता है और हमारा एक बहुत अच्छा ग्रुप बना हुआ है एज ए बॉलिंग यूनिट। और इससे फ़ायदा ये होता है कि कभी मुझसे अच्छी बॉलिंग नहीं होती तो वो दोनों जो है ना वो कम बैक करते हैं, कभी उनसे नहीं होती, तो हमारे तीनों का एक बहुत अच्छा एक यूनिट बना हुआ है। और माशाल्लाह से जिस तरह की परफॉर्मेंस हमारी चल रही है, कोशिश यही करेंगे कि ये आगे मैचेस में भी यही चलता रहे। 5 विकेट हासिल करनी आज के दिन में आपने, कितना जल्दी रैप अप करेंगे चीज़ों को? जी बिल्कुल, फास्ट बॉलर हमेशा चाहता यही है कि वो विकेटें ले और जल्दी से जल्दी ले, लेकिन 4 डे की खूबसूरती यही है कि आप जितने पेशेंस से बॉल करेंगे और जितना रिलैक्स होके एक लाइन पे बॉल करते रहेंगे, उतना बॉलर इंजॉय भी करता है और विकेट्स भी मिलती हैं। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच मीर हमजा एंड ऑल द बेस्ट फॉर द डे। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपने सुना मीर हमजा को अली यूनुस के साथ गुफ्तगू कर रहे थे और मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं हमारे क्रिकेट एनालिस्ट, फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान अंडर 19 अहमद सईद। इनको खुशामदीद भी कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अहमद, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। अच्छा अहमद, अभी आपने मीर हमजा की गुफ्तगू सुनी, क्या कहेंगे मीर हमजा की इस गुफ्तगू के हवाले से? बहुत ही अच्छी उन्होंने बात की है कि फास्ट बॉलर जो है हमेशा पेयर में बॉलिंग करते हैं और यही उन्होंने जिक्र भी किया उसका कि कभी सुहेल खान और मीर हमजा की एक पार्टनरशिप बन जाती है और हमने देखा मैचेस में कभी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की और इस बार सुहेल खान और ताबिश खान इन दोनों की, तो ये कॉम्प्लीमेंट करना होता है एक दूसरे को फास्ट बॉलर्स ने। और कभी एक अगर किसी का ऑफ डे है तो दूसरा जो एक्सेल करता है अपना हाथ उठा के कहता है कि जी अच्छा जी आज मैं संभालता हूँ, और इसी तरह से जो है फास्ट बॉलर्स हमेशा पेयर्स में हंट करते हैं। और इनके पास तो खैर ये अब ट्रायो है, पेयर भी नहीं ट्रायो है, तो अगर किसी का एक का ऑफ डे है तो बाकी तो संभाल लेते हैं और संभाल रहे हैं अब तक। और इसीलिए क्रिकेट को टीम गेम कहा जाता है कि सब मिलके ही परफॉर्मेंस देते हैं जब भी टीम कोई जीतती है। लेकिन इस वक्त स्ट्रगल करती नज़र आ रही है सेंट्रल पंजाब और आबिद अली की विकेट ने इस मैच का मोमेंटम सेट किया है। क्या कहेंगे, बड़ी प्राइज विकेट थी आबिद अली की। पहली इनिंग में भी हमने देखा कि मुकाबला आबिद अली और सिंध के दरमियान था, इधर आबिद अली आउट हुए और इधर जो है वो बैकफुट पर आ गई सेंट्रल पंजाब। जी हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट है, जाहिर है वो टेस्ट प्लेयर हैं और एक्सपीरियंसड हैं, टॉप स्कोरर भी थे यहाँ अपनी पाकिस्तान ड्यूटी पे जाने से पहले। लेकिन बहरहाल अगर आप अभी देखें तो रिजवान हुसैन क्रीज पे मौजूद है, फ़हीम अशरफ एक और टेस्ट प्लेयर हैं जो अभी विकेट पे मौजूद हैं। रिजवान हुसैन 200 रन कर चुके हैं यहाँ पे। तो आज सुबह उनसे बात भी हो रही थी, मैंने कहा भाई कुछ उस 200 रन को याद करो और आज फिर कुछ इसी तरह का करके दिखाओ। तो
मुश्किल ज़रूर लग रहा है, नामुमकिन क्रिकेट में कुछ नहीं। क्रिकेट में नामुमकिन कुछ नहीं है। जिस तरह अहमद सईद हमारे क्रिकेट एनालिस्ट बात कर रहे हैं कि रिजवान हुसैन ने 200 की इनिंग खेली है, तो इस ग्राउंड पे जो सबसे बड़ी इंडिविजुअल इनिंग है 253 रन की, जो रिकॉर्ड साज इनिंग है, वो रिजवान हुसैन ने ही खेली है अगेंस्ट सदर्न पंजाब। लेकिन आज के दिन पिच कैसा बिहेव करेगी, दोनों टीमों में से किसको ज़्यादा फेवर करेगी, कौन इसको ज़्यादा इसका एडवांटेज ले सकता है, ये बताने के लिए हमारे पिच एक्सपर्ट मेरे फेलो कमेंटेटर शाह फैसल इस वक्त मौजूद हैं पिच रिपोर्ट के साथ। सो ओवर टू शाह फैसल। स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इस जानदार विकेट पर शानदार मुकाबला देखने में आया है। तीनों दिन बॉलर्स और बैट्समैन दोनों के लिए मदद मौजूद रही है और आज के चौथे दिन अगर देखा जाए तो मॉइस्चर का जो कंटेंट है वो काफ़ी ड्राई है, घास अभी भी मौजूद है, लेकिन उस ड्राइनेस की वजह से अगर मैं आपको नज़दीक से दिखा सकूं तो ये कुछ क्रैक खुलने लगे हैं। ये राइट हैंडर की ऑफ स्टंप के बाहर हैं, लेकिन ये जो क्रैक्स हैं ये बिल्कुल स्टंप्स की लाइन में हैं। ज़्यादा कुछ वेयर एंड टेयर नहीं हुआ विकेट में, लेकिन जो ड्राइनेस है वो चौथे दिन स्पिनर्स को भी मदद दे सकती है। ओवरऑल फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए ये एक बेहतरीन पिच रही है और इस पर अभी तक हमने 3 मैचों का रिजल्ट आते देखा है और आज भी इस चीज़ का इम्कान है कि एक टीम फातेह होकर यहाँ से निकलेगी। जी व्यूअर्स, आपने सुना शाह फैसल को पिच रिपोर्ट के साथ। और ट्रेडिशनली चौथे दिन जो है वो पिच है बड़ा अच्छा खेलती है और इस पिच की जो खासियत है वो ये है कि जो जो वक्त गुजरता जाता है यहाँ पे पिच मजीद बेहतर से बेहतर होती जाती है। अब आज किस स्ट्रेटजी के साथ सबसे पहले सेंट्रल पंजाब की बात करेंगे, उतरेगी या क्या कहेंगे? जी हाँ, अब ये देखिए आपके बॉलिंग का जो वो है, हम अबरार की बड़ी बात कर रहे थे कल। अबरार को तो अभी तक मौका ही नहीं मिला है, अभी तक उनका जो ट्रम्प कार्ड है वो इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं आया। बड़ी अच्छी लेंथ पे बॉलिंग की है, जो सेंट्रल पंजाब ने मिस किया था पॉइंट अपने, उसमें बैकवर्ड ऑफ गुड लेंथ जो उन्होंने थोड़ी सी बॉलिंग की है, इस विकेट पे जो है वो लेंथ नहीं है, वो करके दिखाई सोहेल खान ने भी और ताबिश खान ने भी कि किस लेंथ पे बॉल करेंगे। तो अब भी 4th डे भी जो है वो बैट्समैन जो है उससे परेशान रहेगा। लेकिन आप देखिए अगर मामला उससे आगे बढ़ भी जाता है फास्ट बॉलर से, तो अबरार फिर एक फैक्टर हैं जो कि तंग करेंगे इनको। सेंट्रल पंजाब की पहली कोशिश क्या होगी? क्या लंच तक कोई विकेट ना गिर देंगे, सेशन टू सेशन खेलेंगे या आवर टू आवर खेलेंगे? मेरा ख्याल से सेशन टू सेशन, जाहिर है प्लान तो यही करेंगे कि विकेट्स ना गिरें। ये आखिरी पेयर है जो कि आप समझ लें कि रिकग्नाइज बैटिंग पेयर समझ लें, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट इनकी पार्टनरशिप है। अगर ये लंच तक खेल गए तो कुछ मैच में जान आएगी और हो सकता है उसके बाद जो है वो थोड़ा, जाहिर है कराची भी क्योंकि क्रम्बल करने लगेगी, थोड़ा प्रेशर में बॉलर्स आते हैं तो गलतियां भी ज़्यादा करते हैं। लेकिन अगर लंच तक जो है वो कराची जो है 1-2 विकेटें लेने में कामयाब हो गई तो फिर तो सिर्फ ये देखना होगा कि अब मैच कब और कितनी जल्दी ख़त्म होता है। अच्छा, आपको लगता है जिस तरह हम पहली इनिंग में बात करते हैं मैच सिंध वर्सेस आबिद अली है, तो अब ये मैच जो है वो सिंध वर्सेस रिजवान हो गया, क्योंकि एक जेन्युइन बैट्समैन है, फ़हीम अशरफ बॉलिंग ऑलराउंडर है, रिजवान जेन्युइन बैट्समैन है, इनको जो है ज़्यादा फोकस करेगी, टारगेट करेगी सिंध। जी हाँ, जाहिर है फ़हीम अशरफ बैटिंग की जो उनकी टैलेंट है उसको सब जानते हैं, पता है सबको कि वो क्या कर सकते हैं। जेन्युइन ऑलराउंडर के तौर पे पाकिस्तान की टेस्ट टीम में शामिल है। और जाहिर है रिजवान, जैसा कि हमने जिक्र किया, 200 रन बना चुके हैं इसी ग्राउंड पे। पहले आपने कहा कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट उनकी इंडिविजुअल स्कोर है, तो जाहिर है रिजवान एक एक्सपीरियंस भी खिलाड़ी हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है। लेकिन इस पेयर के जाने के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगी सेंट्रल पंजाब के लिए। और इस पेयर के जाने के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगी सेंट्रल पंजाब के लिए। लेकिन सिंध की जाने से जो ट्रम्प कार्ड है अबरार, अब तक हमने उनको एक्शन में नहीं देखा। चौथी इनिंग में जो स्पिनर का रोल है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कल हमने देखा फास्ट बॉलर ने डोमिनेट किया, फिर एक रनआउट भी हुआ, उसके बाद फील्डिंग भी बड़ी अच्छी की सिंध ने। क्या चीज़ थी जो सिंध को वापस लेकर आई? सोहेल खान की हम जितनी तारीफ करें कम है, असद शफीक की तारीफ करें कम है, हसन ने जो बैटिंग की वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। जी हाँ, बिल्कुल, बैटिंग तो उन्होंने दूसरी इनिंग में की ही बहुत अच्छी है। बड़ा बदकिस्मत रहे असद शफीक, अपनी सेंचुरी मिस कर दी। उन्होंने बेहतरीन इनिंग्स थी। और जिस बात पे हम एम्फसाइज करते आए हैं कि कुछ शॉट्स हैं जो इस विकेट पे नहीं मारने, असद शफीक ने बिल्कुल उसी तरह खेला। और वही जो मैं कहूँगा कि सेंट्रल पंजाब ने जो लेंथ्स मिस किए हैं बॉलर्स ने, उसका खमियाजा अब उनको भुगतना पड़ रहा है। और राइट, उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस वक्त 55 पे 5 है सेंट्रल पंजाब, 251 की रन्स की लीड है यहाँ पे सिंध की टीम को। मैच में क्या होगा, अब से थोड़ी देर के बाद इस मैच का लाइव एक्शन शुरू होगा और बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग लाइव एक्शन होने वाला है। और ये सब बताने के लिए आपको हम लेके चलते हैं अपने कमेंट्री बॉक्स की जानिब। Welcome to State Bank Sports Complex. It's Sindh versus Central Punjab. Round 9, day 4, and what a day it will be. It's going to be a very daunting task for Central Punjab to come out of the dig they have found themselves in from last evening. They need 252 runs to win this game,
And for Sindh, it's just 5 wickets to take to win this game and keep their hopes alive for that race of the final. Rizwan Hussain still there on 21 alongside Fahim Ashraf, who's still there with him on 11 runs. I've got Shah Faisal alongside me. A very good morning to Shah Faisal. What do you make of the day? Which side it is going? Hello and very warm welcome. Very good morning, Ali and all viewers. Yeah, you summed it up nicely. A daunting task there for Central Punjab. They're in a huge hole right now and won't be easy to come out of that hole in the face of some excellent bowling from the Sindh seamers, in particular Sohail Khan. Just 1 wicket away from getting into the tail, and they're really in the box seat right now, the Sindh team. Sohail Khan, you mentioned about what a wonderful spell of bowling it was last evening. And for Central Punjab, you talk about better fight was expected. Fahim Ashraf played well for his 11 runs off 11 deliveries. It's not going to be easy against this top quality bowling side of Sindh, which includes Sohail Khan, Mir Hamza, Tabish Khan, Ibrar Ahmed, and the star of the tournament. Mir Hamza will start with the proceedings of this 4th day here at State Bank Sports Complex, where they need to take 5 wickets to win this game. Very formidable trio of pacers. Mir Hamza is going to get us started. 2 slips in a gully. Pretty regulation for the left-handed Rizwan Hussain. Oh, I thought there was an edge. Wonderful start by Mir Hamza to this day. Excellent bowling. Probably not the right sort of choice to start of the day for Rizwan. Nervous shot. For a moment I thought as well that it did take a nick, because the deviation as it passed the bat, look at that, clear deviation, but no edge. Lucky for Rizwan Hussain. Very lazy looking start. This should allow him to open up his eyes and dig in for the big fight. It's also such a huge opportunity for somebody like Rizwan Hussain to make a mark, to show his mettle, to show his skill, what he's made of. Because if you're able to take your team to anything close to a draw even, that will be such a huge performance. It's not going to be easy, but still it's doable. People have done it before. We remember the test match for Kamran Akmal and Misbah-ul Haq did it once. Kamran Akmal and Abdul Razak did it once. It has been done before, Shah Faisal. Absolutely, that's the motivation and that's the beauty of this game. And Rizwan Hussain is one of the men who can do it, should be thinking along those lines, and he can dwell on that magnificent knock that he played earlier in the season at the same venue, 253 runs. He really played beautifully. So he has good memories of this ground. The best thing that I want to see today for Central Punjab to put up a fight. I don't care where they end up, but at least they shouldn't go down without a fight. Such a lovely game of cricket. Yesterday morning it was Central on top. Ghats. Oh, that's a misfield. This will run away for 4. That's a good start for Rizwan Hussain. Not so good from Ahsan Ali for Sindh. He'd already had a couple of sighters, short and wide deliveries. He missed out on. This time he put bat to ball. But should be disappointed. Ahsan Ali fielding at point. Very crucial position. Should have done better. Slow to get down. Sloppy. It's very important that Sindh don't get lazy. They shouldn't be thinking that they won it, because it's just half done yet. They need to take 5 wickets to win this game. This is better. We said what we expect from Central Punjab. Make a good point about Sindh too. They are in a dominating position, but the job is not done yet. And if they turn up thinking that it's going to be a walk in the park
and don't do their disciplines as well as they have done for the past 3 days, they could still face a lot of resistance and make it difficult for themselves. That will be the end of the first over of the day. Central Punjab 59 for 5. That's the batting card. More of a sorry card for Central Punjab. Abid Ali was bowled off a beautiful delivery by Sohail Khan. He could only manage 4 runs. Imran Dogar was LBW by Sohail Khan. He could manage 1. Ali Zarab against Sohail Khan into wickets. 8 runs he could score. Saad was bowled off a beautiful delivery by Tabish of 4. And that run out of Saif Badr to end the day for Central Punjab, who scored 5 runs. It's been Rizwan Hussain on 25 and Fahim Ashraf still on 11. 59 for 5 Central. Not a single batter got into the double figures on that card, and the bowling card dominated by that man, Sohail Khan. 3 for 13. They're an excellent bowling unit, like we heard from Mir Hamza earlier. If one doesn't get you, the second will do, and if doesn't, then the third one. Even Tabish bowled a magnificent spell. It's Abrar Ahmed to start off the proceedings. Spin straight away. It's not going to be easy facing Abrar from these two left-handers, and he would like bowling to left-hander that will be coming into them. His usual deliveries, and then the googly that he bowls, the surprise delivery. Are you surprised to see Abrar instead of Sohail Khan at the beginning of the day? A little yes. I was hoping to see Sohail Khan to start off the day, but that's how Sindh plans. You can always expect different things from Sindh camp. They're in a commanding position. That's a good run. Sohail Khan at mid-on, but still hitting and running Fahim Ashraf. Good judge of a runner Fahim Ashraf is. They would need to do that. Strike rotation is pretty important. 2 left-handers though, that would allow Abrar to settle into a line and length around the wicket. Oh, that's lovely. Excellent batting by Rizwan Hussain. Just tried hitting straight, and that's the right way of playing to Abrar. Wonderful shot. He means business. First boundary of the morning. It was a flighted delivery. If you pardon, second boundary. But the opportunity was there. He threw the ball up in the air, and it was in the slot. He picked the right areas, like Ali said, straight down the ground. Good blow. Oh, is that edge? Is there an edge? Oh, wonderful, wonderful comeback by Abrar. It was a googly, leaving Rizwan Hussain. Look at that flight again. Not perturbed by that lofted drive. And look at the bounce. From a good length. Turn and bounce. Abrar is in the business. Another reason that Fawad Alam has opted to go with Abrar is probably the ball is still new, and he likes the ball newish. He would like to skid the ball. 17 overs gone, 64 for 5 Central Punjab. Always explaining his moves. There's a lot of senior cricketers in this Sindh side, and they played together for a long time. That's why that communication is always there. I'm sure plenty of advice and suggestions flying around for Fawad Alam. But he made the call to bring Abrar in, and that was a very teasing over. With every delivery Mir Hamza bowls, he expects to get wicket, and that's what we expect from him too. Over 350 first-class wickets, 10 years of experience behind him, still very young, still very fit, still full of motivation, full of energy. It's wonderful to have such performers in your side as a captain. Mir Hamza, Sohail Khan, Tabish Khan, Abrar. It's such a strong bowling unit. It's make the job easy for the captain.
Off the back foot, straight to Fawad Alam. You were talking to him in the morning, and he made a lot of sense the way he put up with your questions and the answers he came up with. It suggests that he's a very good reader of the game too. And like you said, very young, very intelligent. And this season has been a very good one for him. Absolutely, it's not easy, Shah Faisal, playing cricket for so long without much of reward. You got to keep yourself motivated. Just go through these phases of life, performing years and years. It's just a wonderful effort by Mir Hamza. Your favorite part. This is the fourth day pitch. How dry it is. Around where the bowler's footmarks are. And you see some cracks opening up. A few of them are right down the middle. We've seen a couple of deliveries keep very low. One to Rizwan Hussain from Sohail Khan last night. It has been an excellent strip, you have to say. Everybody had something to take from this wicket throughout the 4 days. You cannot ask for a better pitch for a first-class game. On the first day, bowlers have their say, and then as the day progresses, as days progress, day 2 and day 3, batters come into the game. Bowlers still have plenty, but they have to be disciplined. And this is what we're talking about, the potency of the Sindh seam attack. 2 of the 3 here, always talking to each other, communicating. Off the back foot again by Fahim Ashraf. He's a good enough batter though. And coming back to that interview with Mir Hamza, the way he spoke about the trio of fast bowlers, how they complement each other. And it's not just who takes the wickets, but they all complement each other. And at the end of the day, either 3 of them, one of them can walk away with the wickets, but the other 2 do play their part to make them a very formidable unit. That's in the gap. This will give Fahim Ashraf the first boundary of the day to him. Good way to end the over. 18 overs, 68 for 5. Width on offer. Fahim Ashraf likes to free his arms like any other left-hander. Angle the face of the bat to just find that gap. 4 runs. Good start for Central Punjab. And you could see the determination on the face of Fahim Ashraf and Rizwan. They've gotten away to a good enough start to give him some hope. But still a very long way to go. Remember, twice scored over 300 has been chased at this ground. So there is still hope. But that 5 wickets that fell last evening will definitely haunt Central Punjab. Because as you were mentioning earlier, it gets better and better for batting. So they must have that believed. But the way they played last evening, these Central Punjab were pathetic. Their shot selection, their running between the wickets. They never look like they're going for the chase. It seemed like they lost it after Sindh scored so many runs. Sometimes it's a battle in the mind. Their minds were tired, the application wasn't there. And talking about the wicket, but what got them last night was the pressure. The scoreboard pressure, they were behind in the game, had to negotiate a small session, but all was too much for them. Like I said, shot selection, running between the wickets, the footwork was sluggish, and I, for one, make it just because they weren't ready for the fight in their mind, so the execution fell apart. It's a good start by Fahim and Rizwan. They'll have to do a lot of work. It's a daunting task. It's not going to be easy. But it's very important they plan out this inning. Play sessions. At the moment, it should be in their minds to play out this session till lunch without losing a wicket and put the pressure back on Sindh. Yes, they will face challenges. One of them is right on the screen. Abrar
big test for this man. There's an appeal. Whoa, no says umpire. Oh, I thought that was really close. Maybe a touch high. He was setting him up for that. He was bowling wide of the crease throughout the over. And this one was slightly slower. It gripped and turned. The impact, the height, a little bit of doubt in my head, and rightly so. It needs to go to the batters despite it being hitting on the back leg. "19 overs gone, 69 for 5. Such a good appeal by Abrar. And Fahim Ashraf must feel very lucky the decision went his way because it hit the back leg. Let's have a look at it again. Wide of the crease. Big turn, the impact. I don't think height was an issue because, like you rightly said, it hit him on the back leg. And also he shuffled across. You could see his, there you can see again, you can see his leg stump right there. Have a look at that. It was a big spin. Maybe impact, yes. Just marginal. Yeah. Very marginal. Good appeal nonetheless. And a very good delivery. It's going to be such a huge task for Rizwan and Fahim, because this inside is a very quality bowling lineup. They'll keep coming at you. Oh, that's through the gap. Wonderfully timed by Rizwan Azam. Will earn him a boundary. This is a good start for Rizwan. Boundaries are flowing this morning. They had a sweeper back there at deep point, but this one went finer. Have to see if he was in full control of that stroke. Yes, he was. Just angled the bat at the last minute, directing the ball down into the ground and away from the fielder. It takes us back to that innings from Rizwan Hussain. He really peppered those boundaries, the short boundaries behind square. He scored plenty of runs in that direction. Yeah, that is the reason, because they have that deep fielder, deep point fielder, Ahsan Ali. But the last boundary he took, it was such a nicely timed shot, such nice placement, that there was no chance for the fielder at deep point to cover that. Attack is one way of defense. You can think on those lines, that keep attacking, keep getting runs. They need 234 runs. That's a long way to go though. Still, they got to keep believing. Oh, that was nicely driven. Careful with that running between the wickets. You already have a run out in your inning. You don't want another one. Good save from Asad Shafiq there. Still diving around. 100% commitment, suggesting there was a bad bounce. It was very well watched. Kept his eyes on the ball. 10 out of 10 for the experienced man. Mir Hamza is bowling that attacking line and length. He's not afraid of being driven. They can afford to do that. They got plenty of runs behind him. 234 runs still. And for them, it's just a matter of 5 good deliveries. Those 5 wickets they need to take to win this game. But on the other hand, I always believe that it's a huge opportunity for somebody like Rizwan Hussain to make a mark, to create a name, to earn respect and name. That's what he should be looking at. And that's not going to happen with a 60 or a 70. You've got to get a big 100 here. Get a 150, get a 200. But with very little or no margin of error, he has to be spot on. Like we just saw, they've had a good start, but Fahim was almost dismissed of that close LBW shout. They have to be on the button at all times. Again, that's wonderfully timed. Angling it towards third man. This is beautiful batting by Rizwan Hussain. Second boundary of the over in the same area. Wonderful way to end the over. He's
found a liking to that line and length from Hamza. He's prolific in that area, and he's using Hamza's pace. Look at that, just timing the ball, no flourish whatsoever. Using the pace of Hamza, timed it magnificently, found the gap. Sometimes situations like these, when you're down and out, brings the best of you from you. And Central Punjab would be hoping that this could be the day for Fahim Ashraf and Rizwan Hussain. They have the skill, they have the potential to do it. It's not going to be easy, but nothing comes easier at this level. You got to bring your A game every time you come to the ground. Early days, but look at Sindh camp. They already need to have a meeting. This has been a rollicking start for Central Punjab. 22 runs have come. I mean, they still got a long, long way, like Ali said. But the start will give him some hope. And the need for Fawad Alam to gather his troops. Just 20 minutes into the day. Maybe he could sense it. That's what big cricketers do. The body language, maybe. There was a lazy effort by Hassan Ali that let it through his fingers for 4. Maybe he could sense that the body language is getting down. It's not the same intensity as it was the last evening. You can expect that to happen. Absolutely. They were on such a high. It's very hard to replicate that on a new day. That's why everyone felt if they had another extra hour or so last night, they could have wrapped up things then. But now to start all over again, it is a new day and it's not as easy. Especially if you face some resistance from the batters, it makes your job a little bit difficult. And the intent was different because they had to take 10 wickets last evening. Maybe this morning they might be thinking only 5 wickets, only 5 good deliveries will do the work. But that's not how it should be. The intent should be the same as it was last session yesterday. Change of grips for Rizwan Hussain. Maybe an extra grip. He'll be in action soon. Tabish Khan, the great Tabish Khan. What a performer he has been over the years at this level. As we see Abrar Ahmed again to Fahim Ashraf. I like their intent. I like Fahim Ashraf and Rizwan. They're in with a purpose. Can they do it for a longer period of time? That's the question. You can also keep an eye on Abrar where he delivers every ball from. He's using that crease beautifully. Goes wider, angles the ball in, and then he has the option to bowl the leg spinner from there or straighten the googly down the line. Very clever piece of bowling and a good battle. That's the challenge. They're going to face all day long Central Punjab. So with every delivery they face, they got to bring their A game on. They've lost big wicket, that big wicket of Abid Ali, that was such a huge loss for them. Had Abid Ali been there today, they would have been satisfied, but his wicket last evening, it was such a big blow for them. It was such a big blow. Cannot believe it. Big blow over the top, couple of bounces over the fence. The intent has been there this morning. This time it's Fahim Ashraf taking the leg spinner on and doing it very, very nicely. The approach again, the both are looking to hit it straight, and that is the right way of playing it to Abrar. Have a look at that, pitched up over the mid-on fielder. Wonderful batting by Fahim Ashraf. He is there with a purpose. That's a good start. That's a great start for them. They got to carry on. Oh, that's the end of the over. 21 gone, 81 for 5. Have a look at that wicket. Abid Ali was bowled by Sohail Khan.
It was such a big wicket. A lot was expected of him. We all were hoping that Abid Ali will stay and play a big inning. You cannot expect him to do it every time for Central Punjab. He had a great battle with Sohail Khan in the first innings, and he really frustrated Sohail Khan in that first innings. Sohail Khan tried for long periods, but Abid Ali won that battle. But in the second innings, the big man had the last laugh. Rizwan Hussain still there on 38. As we see the tension in Sindh camp, it's too early for that. It's too early for such sorts of discussions and change of plans. We're just 25 minutes into the day, and we already see Fawad Alam changing fields, changing the plans. Central Punjab needing 226 runs to win this game. I still believe that wicket of Abid Ali was the biggest part, because he's such a wonderful performer. He scored so many runs at this level. A lot was expected. I think that wicket must have given a lot of hope to Sindh. He's such a wonderful human. Abid Ali always in with the game. He's got a good head on his shoulders too. He knows how to bat. He's a central figure for Central Punjab. Always a smile on his face. A good character to have in the changing room as well. We saw a little while ago his role with the bat has ended, and he was helping around the team youngsters with some throwdowns. That's a good attitude to have as well. Do whatever you can for your team in the field and off the field as well. Skipper Fawad Alam is persisting with Mir Hamza. He went for quite a few boundaries, but he's given him another over. The temptation must have been there to bring back either Sohail or Tabish. Wonderfully clipped. One more run for Rizwan Hussain. Faisal, if we just take out the equation of wickets, if we take out that portion and just consider the bowling, I think Mir Hamza has been best. All the fast bowlers that we have seen over here, it's fine that Sohail Khan has taken wickets, but he's bowled better. He's been unlucky, but that line and length, I think he's utilized these conditions better than the most we have seen over here. And it is normally the case when you bowl in such a good bowling unit. You create pressure, and your other partner gets the rewards. That's clipped. Clipped for 4 runs. Fahim Ashraf doing it wonderfully with his wrists. Excellent batting, excellent partnership by these two. They need to carry on for the longer period of time. We've been saying that since morning, and they've provided Central Punjab with a very solid start here. Yeah, Fahim Ashraf is really capitalizing. Mir Hamza bowling on either side of the wicket. This one was a leg stump half volley, and although he's got 2 sweepers, but Fahim played it finer. This is a good start, and that's one way of doing it. Capitalize on every bad ball, punish the bowlers for making mistakes. That's where you can put the pressure right back on them. Very solid. Playing like a pro. That is what you expect from the seasoned all-round cricketer Fahim Ashraf. He's been there with Pakistan national side for a long time now. And what a time that team needs it the most. This is the time. That was the boundary. Leg stump half volley. Clipped it away from the 2 sweepers. He's looking in good order. Nice. And nice fielding too by Sohail Khan. Fahim Ashraf looks in a wonderful touch. This man can do no wrong in this match. With the bat, with the ball, and now in the field. He's a big, tall man. Got down to it very quickly. Probably should be thinking about bowling now. Did he hurt himself? Not for Sindh's sake. He's a big man. It's never easy for a big man to come down.
Oh, that's over the head of the fielder. Wonderfully clipped. Will earn him 2 runs. That's one way of doing it. Fahim Ashraf and Rizwan Hassan have taken that road of attack. 22 overs gone, 88 for 5 Central. He wasn't in control on that one. Look at that. Losing his balance and hitting it in the air just away from Fawad Alam. Could that be part of a plan to attack on his pads? Sindh have given away plenty of runs doing that. Almost got the wicket of Fahim Ashraf. A false stroke in it eventually. 33 runs in the first 25 minutes or so. Central Punjab are rollicking. Rizwan Hussain again changing his grip, is not happy with that. In the first inning, we saw Abid Ali was not happy with his bat condition when he broke his first bat. And he was not happy with the changed bat. And over here, Rizwan Hussain again doing a bit of work with his grip. These little things, they might lose your concentration. They do, like we saw with Abid Ali. And eventually we found out that the bat that he broke was the one that he scored all his test runs. Basit Ali is a worried man. Too early for that. But yeah, with batters, the bats, the grips, the balance, they're very, very picky with that. And they have to be very precise. He's always worried, Basit Ali. They've handled him well so far, both Rizwan and Fahim. But I have a feeling he hasn't bowled many googlies yet. Is he setting him up for one? It's mostly leg spinners from wide of the crease. Keep an eye out for that googly. Good flighted one. It's so hard to pick the googlies with those fingers. If you're a conventional leg spinner, it's easier because it's coming from the back of the hand, you can check it. But with those finger spinners, it's not an easy job. Got to be 100% with your concentration and focus to the hand of the bowler. Yeah, these mystery spinners have really come to the fore, changing the art of spin bowling. Sweeps it in the gap. Wonderful batting by Rizwan Hussain, earning him another boundary. That was a poor delivery by Abrar. Way down to the leg stump. Easy pickings for Rizwan. He's moved to 43 of just 56 deliveries. Good counter-attack by these two batters. Central Punjab's good start continues. This was a freebie. Field is set, but that sweep shot was finer. The ball was way down the leg side. Rizwan picked it quickly, got down on one knee. He had to clear that man on 45, which he did, and sweeper was nowhere to be seen. Just a poor line. That's wonderfully done. Only for 1 run though, but the authority that Rizwan Hussain is playing Abrar with, it's great to see. Great to see a fight coming from Central Punjab. That was lacking in the last session, but this morning I think they come with a purpose, with some good positive intent. That is the beauty of first class cricket. This is what happens when the best plays against the best. You're never out of the game. Oh, wonderful. This is better by Abrar. Beaten. Changed the angle. Came over the wicket for the final delivery with the angle. And then a little bit of turn. Fahim was searching for that ball. Lucky he didn't get an edge. First and half an hour definitely belonged to Central Punjab. 93 for 5. तिरानवे 5 विकेटों के नुकसान पर सेंट्रल पंजाब 251 रन की बढ़तरी थी। आज जब खेल का आगाज हुआ तो बड़े अच्छे मोमेंटम के साथ आज सेंट्रल पंजाब ने
खेल का आगाज किया। महज 214 रन की अब बरतरी रह गई है। अंदर आती हुई गेंद दिफाई अंदाज से खेले रिजवान हुसैन। बड़ी भारी जिम्मेदारी रिजवान और फहीम के कांधों पर। इसके बाद विकेट कीपर और बॉलर्स की आमद का सिलसिला शुरू होगा। अहमर सईद ने हमें ज्वाइन किया। वेलकम अहमर। बहुत शुक्रिया अली सलमान, और तमाम देखने वालों को सुबह बखैर। अब तक का सेशन, अब तक का खेल सेंट्रल पंजाब के नाम रहा। एक अपील जरूर हुई अबरार की गेंद पर फहीम अशरफ के सामने, लेकिन विकेट हासिल नहीं कर सकी सेंट्रल पंजाब। इंतज़ार करना होगा सिंध के बॉलर्स को सब्र से। फहीम अशरफ दूसरी तरफ अपना कुदरती खेल स्ट्रोक्स खेलने के लिए जाने भी जाते हैं, और यही मेरे ख्याल से जहन में भी सेंट्रल पंजाब की होगा कि बहुत ज़्यादा डिफेंसिव, अगर पॉजिटिव मोड से अगर वो हटेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा डिफेंड करना पूरे दिन इस बॉलिंग लाइन को। दिफाई अंदाज से खेलते हुए रिजवान हुसैन। जो गेम प्लान दिया होगा रिजवान को कोच अब्दुल रज़ाक ने, यकीनी तौर पे उसे प्लान पे काम करते हुए दिफा और जारियत का नमूना है इनकी बैटिंग। एक स्ट्रोक खेलते हैं तो बड़े फ्लुएंट स्ट्रोक खेलते हैं, और जब दिफाई अप्रोच पर आते हैं तो बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। बड़े अच्छे कॉम्पैक्ट बैट्समैन है रिजवान हुसैन, और पाकिस्तान का फ्यूचर है ना नौजवानों के हाथों में। वहाँ से अच्छी इब्तिदा दोनों खिलाड़ियों ने अब तक की है। कट किया हसन अली। पहली अटेम्प्ट में गेंद को नहीं फील्ड कर सके, लेकिन दूसरे रन का इम्कान नहीं था क्योंकि एक रन पर ज़हनी तौर पे ले चुके थे। अब तक की बॉलिंग अमर आपने किस तरह एनालाइज की? आपको लगता है कि इब्तिदाई सेशन में जो बॉलिंग की है सिंध के बॉलर्स ने पिच का और फ्रेश डे का फ़ायदा उठाया? अभी तक तो कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा। अबरार जैसे हमने जिक्र किया था, बड़ा ट्रम्प कार्ड है इनके पास, उन्होंने कुछ ज़रूर परेशान किया है बैट्समैनों को। अच्छा तेज़ बाउंसर था मीर हमजा की जानिब से, उसको लेफ्ट किया और जाने दिया फहीम अशरफ ने। ताबिश खान और सुहेल को आज सुबह बॉलिंग अभी करनी है। देखना होगा कि कल जो उन्होंने कारनामे अंजाम दिए आखिरी घंटे में, क्या उसको जारी रख सकेंगे आज या नहीं। और इस मरतबा 4 रन हासिल कर जाएंगे। बड़ी लकी है, 4 रन हैं, प्रॉपर पुल नहीं कर सके थे, लेकिन बहरहाल गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई। 4 रन का सिग्नल। वेवर्ड है मीर हमजा आज कुछ, ये देखिए बहुत ही बाहर लेग स्टंप से शॉर्ट बॉल भी उन्होंने की, बस बल्ला लगाने की देर थी और ऐसा ही किया फहीम अशरफ ने। 4 रन हासिल किए। अप्रोच बड़ी ज़बरदस्त है सेंट्रल पंजाब की। ये आप देख सकते हैं चौथी इनिंग में जो 300 प्लस का टारगेट है वो कितनी मरतबा चेस हुआ। तो अब तक महज सदरन पंजाब सिंध के खिलाफ 5 विकेटों से टारगेट चेस कर चुकी है, और इसके अलावा सुई सदरन गैस ने वापडा के खिलाफ इस ग्राउंड पे इस टारगेट को चेस किया है। तो 2 मरतबा अब तक ऐसा हुआ कि 300 प्लस का टारगेट जो है वो इस ग्राउंड पर चेस हुआ। क्या कोई नई हिस्ट्री रकम होने जा रही है? यकीनन आने वाला वक्त इसका फैसला करेगा। दिफाई अंदाज से खेलते हुए रिजवान, क्लोजिंग पोजीशन पे फील्डर मौजूद, फॉरवर्ड शॉट लेग पर। हमारा आपको लगता है कि जिस तरह से गेंद कर रहे हैं अबरार, एक फील्डर मजीद दबाव बढ़ाने के लिए सिले मिड ऑफ पोजीशन पे भी होना चाहिए? आज
सिंध की अप्रोच थोड़ी डिफेंसिव लग रही है मुझे इब्तिदा से ही। फील्डर्स ऐसी पोजीशंस पे हैं, ये मान के चल रहे हैं वो कि फ़हीम अशरफ जो है वो शॉट्स खेलेंगे। मेरा ख्याल से इब्तिदाई लम्हात में पहले घंटे में कम से कम जो है वो भरपूर तरीके से अटैक करना चाहिए था दोनों खिलाड़ियों पे। काउंटर करने के लिए वो स्ट्रोक ज़रूर खेलेंगे, लेकिन उस पर चांसेस ज़्यादा बनने के इम्कानात होते हैं। इस मरतबा पॉइंट पे मौजूद हैं सुहेल खान। अगर हम ऑन साइड की फील्ड का जायजा लें तो बड़े अनकन्वेंशनल फील्डिंग पोजीशन पे खड़े हुए हैं। फॉरवर्ड शॉट लेग के बिल्कुल पीछे फील्डर किसी भी स्वीप शॉट को फील्ड करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं ताबिश खान और इसके अलावा भी ऑफ साइड की फील्ड कवर में पूरा कॉरिडोर खाली है। क्लोजिंग पोजीशन पे फील्डर अंदर मौजूद हैं सर्कल के अंदर, लेकिन ऑन साइड पे अगर हम देखें अच्छी गेंद अपील एलबीडब्ल्यू की, लेकिन नासिर हुसैन को मुतासर नहीं कर सकी ये गेंद और ये अपील। अच्छे एरियाज है जहाँ पे अबरार बॉल गिरा रहे हैं। दोनों लेफ्ट हैंडर्स को परेशान किया है उन्होंने। ये देखिए फ्लाइटेड थी थोड़ी सी बॉल, स्पिनों के अंदर आई बैक फुट पे, लेकिन इम्पैक्ट मेरे ख्याल से विकेटों के बाहर। और स्पिन भी जब इतनी हो रही होती है तो अंपायर्स अमूमन आउट उसको एलबीडब्ल्यू नहीं देते। 25 ओवर का इख्तिताम, 98 रन, 5 खिलाड़ी आउट। ये देखिए ये रीप्ले उस अपील का, बहुत स्पिन हुई है बॉल, पिछली टांग पे लगी हालांकि, लेकिन गैप की तलाश में ही है अबरार। वो ये देख के खुश होंगे जिस तरह से रिजवान ने ये बॉल खेली है, उनके लिए काफी इंकरेजिंग होगा ये। सुहेल खान को इंट्रोड्यूस किया मीर हमजा की जगह फवाद आलम ने। सुहेल खान के लिए इस मैच में बहुत कुछ बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी सुहेल खान ने, बैटिंग के शोबे में और साथ साथ बॉलिंग के शोबे में भी, जो उनका स्पेशल डिपार्टमेंट है। इस मैच में अगर इस वक्त 209 रन की बढ़तरी है सिंध की टीम की, तो उसमें सुहेल खान का बहुत वाइटल कंट्रीब्यूशन है। सिंध अगर अब तक इस गेम के में है और ऐसी पोजीशन पे, उसमें सबसे बड़ा किरदार ही सोहेल का है अब तक, जो उन्होंने बैटिंग की है। पहली इनिंग में अगर वो इनिंग ना खेलते तो मेरे ख्याल से सिंध बहुत पीछे रह जाती इस मैच में। और उसके बाद कल आखिरी घंटे में जो उन्होंने बॉलिंग की है, वापस ले आए, बड़ा मुश्किल कर दिया सेंट्रल पंजाब के लिए अब मैच को जीतना उन्होंने। जी हाँ, पहले इनिंग में भी 65 रन की इनिंग खेली, दूसरी इनिंग में भी इन्हें सेंचुरी बनाई, एक ज़बरदस्त इनिंग खेली 70, और उसके बाद फिर जिस तरह आबिद अली की प्राइज विकेट हासिल की, तो इस मैच में सुहेल खान ने बहुत कंट्रीब्यूट किया सिंध के लिए। अच्छी पेस के साथ गेंद करते हुए सुहेल खान। लेंथ का मैं बार बार जिक्र करता हूँ, वो बड़ा अहम यूँ है कि सुहेल खान को देखिए, जब इन्होंने अपने स्पेल स्टार्ट किया है तो जिस लेंथ पे वो बॉल कर रहे हैं, आगे लेके आ रहे हैं बैट्समैन, अभी तक किसी बॉल पे जो है वो बैकफुट पे नहीं गए। और ये वो जगह है जहाँ पे बॉल करनी है। थोड़ा सा ऑफ लेंथ है आज मीर हमजा इब्तिदा में, जो गलती सेंट्रल पंजाब के बॉलर्स ने की थी वही वो करते हुए नजर आ रहे थे। एक तरफ रन्स भी रोकने, दूसरी तरफ विकेट भी हासिल करनी है, और अब तक सुहेल खान की स्ट्रेटेजी दोनों हवालों से काफ़ी बेहतर रही है। आज़ादाना ना उन्होंने रन्स दिए हैं और न खुल के खेलने का मौका दिया है फ़हीम अशरफ को। इब्तिदाई जो उन्होंने 3 गेंदें डिलीवर की हैं, जो एतमाद उनको बैटिंग में मिला, उसका कॉन्फिडेंस उनकी बॉलिंग में झलकता हुआ। थोड़ी सी देर गेंद हवा में रही, इस मतलब लेंथ को थोड़ा तब्दील किया। मायूसी आप देख सकते हैं फवाद आलम के चेहरे पे।
क्योंकि फवाद इस वक्त मिड ऑन पे फील्डिंग कर रहे हैं और गेंद थोड़ी सी खुर्रम मंजूर के दाएं जानिब से होती हवा में होती हुई गई, रोल होती हुई फवाद की जानिब। फ़हीम अशरफ इस तरह खेलते हैं और इसी अंदाज में खेलेंगे भी, वो हावी नहीं होने देंगे बॉलर को अपने ऊपर। कोशिश उनकी यही रहेगी कि वो डोमिनेट करें। आज फ़हीम अशरफ को प्रूव करना होगा क्यों कर उनको पाकिस्तान का ऑलराउंडर कहा जाता है, क्यों कर उनको जो है वो पाकिस्तान में बहुत हाईली रेट किया जाता है। आमिर यामीन, फ़हीम अशरफ, ये दो रेस में एक साथ साथ थे, लेकिन अनवर अली तीसरे, लेकिन लॉन्गर वर्जन में फ़हीम अशरफ को ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। इस मरतबा एज लगा, गेंद गई है ताबिश की जानिब, एक रन मिल जाएगा। जल्दी हम ताबिश को भी एक्शन में देख सकेंगे। कल ताबिश ने भी अच्छा साथ निभाया था सुहेल खान का। ओवर मुकम्मल हुआ 99 5 विकेटों के नुकसान पर। खास तौर पर उन्होंने बहुत बड़ा छक्का लगाया था। उससे पहले भी एक ऐसी अटेम्प्ट की थी, लेकिन उसके बाद जो उनके बल्ले पे गेंद आई तो वो दूसरे ग्राउंड में चली गई। ये काफ़ी बड़ा है स्टेट बैंक का ग्राउंड। ये जो उन्होंने छक्का लगाया वो तो दूसरे ग्राउंड में गया, लेकिन अगर जो पहली कोशिश उन्होंने की थी वो लगते हैं वो कहीं पता नहीं कहाँ जाती है वो बॉल। बहुत ही पावरफुल अंदाज में बैट को घुमाया था ताबिश ने। उस वक्त मैं और अहमद सईद कमेंट्री बॉक्स से शेयर कर रहे थे, और यकीन वो गेंद अगर बल्ले पर आती तो बहुत दूर जाती। इमरार गेंद करने के लिए तैयार हैं। एक और अच्छी गेंद अबरार की जानिब से, बहुत डिपेंड कर रही है अबरार पर। अबरार शॉर्टर वर्जन में लेंस लगा के खेलते हैं, और जो लॉन्गर वर्जन होता है उसमें ये ग्लासेस लगाते हैं। इब्तिदा में बतौर इमर्जिंग प्लेयर कराची किंग्स के लिए भी खेले है, और गुज़िश्ता सीज़न में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी अबरार की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और सेकंड 11 से प्रमोट हुए थे। मिक्सअप करते हैं अपनी डिलीवरीज को। एज हुआ इस मरतबा, पॉइंट पे मौजूद हैं सुहेल। ज़्यादा एतमाद के साथ नहीं खेल पा रहे हैं अबरार को, लेकिन 12 लैप तक सर्वाइव किया। अच्छा बॉल था ये, फ्लाइट किया, थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा रीच करना पड़ा फ़हीम को इसके लिए, और स्पिन हुआ बॉल बाहर की तरफ। सर को झुका के हेड डाउन करते हुए फ़हीम अशरफ। मुश्किल फेज है, लेकिन अब तक कामयाब रहे दोनों सेंट्रल पंजाब के बैट्समैन। 55 से स्कोर को 99 तक लेकर आ गए आज तक के खेल में। और इस मरतबा अशोक फ्लड का शिकार हुए। ताबिश गेंद के नीचे है, मुश्किल होगा ताबिश के लिए, क्योंकि काफी आगे खड़े थे ताबिश। गेंद उनके पीछे जा गिरी, और सूरज की रोशनी भी यकीनन ताबिश की राह में हाइल हुई। काफी देर से दबाव डाला हुआ था अबरार ने, उस दबाव को, जमूद को तोड़ने की कोशिश की फ़हीम अशरफ ने। जब तक फ़हीम अशरफ विकेट पे रहेंगे, इस तरह के मौके जो है वो सिंध टीम को मिलते रहेंगे। देखना ये है कि कब तक फ़हीम की किस्मत उनका साथ देती है। बिल्कुल सिमिलर फैशन का शॉट था इस तरह से फवाद आलम ने पहली इनिंग में खेला। इस मरतबा ज्यादा बेहतर दिफा के साथ। ओवर मुकम्मल, इन 2 रन के साथ 100 रन भी मुकम्मल हुए थे सेंट्रल पंजाब के 101 5 विकेटों के नुकसान पर। ये देखिए ये वो शॉट, बिल्कुल आपने सही कहा, वो एक जो प्रेशर इन्होंने डाला हुआ था उसको तोड़ने की कोशिश की उन्होंने। खुशकिस्मत रहे कि ताबिश खान के ऊपर से चली गई बॉल, वरना टॉप एज भी हो सकता था। बड़ा क्लोज था, बल्ले के बीच में नहीं लगी ये बॉल, लेकिन इतना बैट उस पर लग गया था कि वो इस ताबिश खान जहाँ खड़े हैं उसके ऊपर से गुजर जाए। आजकल बैट्स की जो क्वालिटी है वो हाफ हार्टेड स्ट्रोक को भी काफ़ी दूर ले जाती है। बड़ी अच्छी क्वालिटी के बैट्स आजकल
अवेलेबल हैं। ताबिश खान का आपने जिक्र किया कि अभी उनको भी आना है बॉल करने के लिए। साथ उन्होंने बहुत अच्छा दिया था कल सुहेल का, और जैसा कि हम आज सुबह भी यही बात कर रहे थे कि पेयर्स में बॉलिंग करते हैं फास्ट बॉलर्स। कभी ताबिश खान हावी होते हैं, सुहेल खान उनका साथ देते हैं, कभी सुहेल खान हावी होते हैं तो ताबिश खान साथ देते हैं। वरना मीर हमजा ने एक आध स्पेल ऐसे किए जिसमें दूसरी तरफ से प्रेशर बनाया और वो विकेट्स लेते हैं। दुरुस्त कहा हमारा आपने, और इसकी बड़ी वाजे मिसाल है, बड़ी क्लियर क्रिस्टल क्लियर जो एक एग्जाम्पल है वो ये कि जब सईद अजमल का डिपार्चर हुआ अफसोसनाक अंदाज में, उनकी करियर खत्म हुई, तो उसके बाद आप देखें अब्दुल रहमान की भी वो परफॉर्मेंस नहीं रही। वरना जब तक दोनों साथ खेलते थे, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे। प्रेशर कभी सईद अजमल डालते थे, अब्दुल रहमान आउट करते थे, कभी अब्दुल रहमान प्रेशर डालते थे और सईद अजमल आउट करते थे। तो एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है कि जिस तरह एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं बॉलर्स, और बड़ी अच्छी एक जोड़ी रहती है। वसीम वक़ार की जोड़ी, इमरान सरफराज की जोड़ी, कपिल देव एक ज़माने में करसन घावरी के साथ उनका पेयर था। तो जो पेयर्स में जो होते हैं बॉलर्स, वो अमूमन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं और विकेटें भी हासिल करते हैं। या कई बार ये नाइंसाफ़ी भी होते देखी है अली सलमान के, जो बॉलर ज़्यादा प्रेशर बना रहा है विकेटें दूसरे बॉलर को मिल जाती हैं, लेकिन यही जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, पेयर्स में बॉलिंग करते तो कभी जो प्रेशर बॉलर क्रिएट करता है विकेटें दूसरों को मिल जाती हैं। लेकिन बहरहाल इसी तरह क्रिकेट आगे बढ़ती है और पेयर्स में फास्ट बॉलर्स और बॉलर्स बॉलिंग क्या करते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे अब्दुल रज़्ज़ाक अक्सर पाए जाते हैं, क्योंकि वो सामने से देखते हैं, सामने वाले एंड से, कि किस तरह बॉल सीम हो रहा है, स्विंग हो रहा है, बैट्समैन का फुटवर्क है। तो अमूमन अब्दुल रज़्ज़ाक हमें यहाँ नज़र आते हैं, और इस वक्त अब्दुल रज़्ज़ाक मौजूद है, एक मचान पे मौजूद है। इस तरह मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह शिकारी शेर का शिकार करता है, इस तरह अब्दुल रज़्ज़ाक की जो काबी निगाहें वो अपने बैट्समैन की सलाहियतों को यहाँ से जांच रही हैं। बड़ी अच्छी, जितना ऊपर बैठे इतने ही ऊंचे ऊंचे छक्के भी मारते थे ये। हाँ बड़ी अच्छी मिसाल। मास्क पहनना बहुत लाजमी है आजकल। प्रिकॉशनरी जो मेजर्स हैं वो बीमार पड़ने से बेहतर है कि ले लिए जाएं। SOPs को फॉलो रखा हुआ है अब्दुल रज़्ज़ाक ने। एक ऐसा नाम कि जिस पे पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा फ़ख्र करेगी। जब जब पाकिस्तान में बेस्ट ऑलराउंडर्स की बात होगी तो अब्दुल रज़्ज़ाक उसमें सर फहरिस्त होंगे। ये अब्दुल रज़्ज़ाक सेंट्रल पंजाब के कोच। दिफाई अंदाज से खेले। वैसे अमर जिस जगह अब्दुल रज़्ज़ाक बैठे हैं, यहाँ बैठ के कॉफ़ी पीने का एक अपना मज़ा है, इतनी ऊंचाई पर। रज़्ज़ाक की एक बड़ी ख़ास बात थी कि एक जब उनके करियर की पीक थी तो बड़े कंसिस्टेंटली पावर हिटिंग का जो एक आजकल नया वो है, वो उस ज़माने में तो पावर हिटिंग की टर्म इस्तेमाल नहीं होती थी, लेकिन आजकल ये लाइसेंस प्लेयर्स समझते हैं कि जब वो पावर हिटिंग कर रहे हो या छक्के मारने की उनको कहा जाए तो वो समझते हैं कि विकेट फेंकना जाए उनका हक है और बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल नहीं होते। लेकिन रज़्ज़ाक में एक ख़ास बात थी कि एक लंबे तवील अरसे तक उन्होंने न सिर्फ बैटिंग को संभाला, मैच जितवाए, पावर हिटिंग की और बगैर अपनी विकेट गवाए, बगैर अपनी विकेट को फेंके। तो बहुत ही अहम किरदार जैसे आपने कहा, और ऑलराउंडर्स के लिए तो बिल्कुल टॉप नॉच। दुनिया में जो अच्छे ऑलराउंडर्स का नाम लिया जाएगा तो इनका ज़रूर आएगा, पाकिस्तान में तो खैर आएगा ही। 28 ओवर्स मुकम्मल, 101 है स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर। और बिल्कुल, और जब इनको ब्लॉकर का रोल दिया गया 99 के वर्ल्ड कप में, तो उस रोल को बड़े ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने निभाया। और ये बिल्कुल वो अब्दुल रज़्ज़ाक नज़र नहीं आए जो इनकी वजह शोहरत थी। और ये एक प्रोफेशनल क्रिकेटर का खासा होता है कि वो हर रोल में अपने आप को फिट इन करते हैं। अब्दुल रज़्ज़ाक काफ़ी मेहनत करते नज़र आते हैं, कूल काम है, लेकिन सेंट्रल पंजाब को बड़े अच्छे तरीके से लड़ाते हुए।
दूसरी जानी फ़हीम अशरफ और रिजवान हुसैन स्ट्रगल करते हुए। अब अबरार अहमद की पुरफरेब गेंदों के सामने। अब अगर आप एक नज़र देखें, अबरार को ऐसा लगता है कोई स्कूल का बच्चा है जो अपनी ट्यूशन से बंक करके आ गया मैच खेलने। हैरी पॉटर से मिलाया जाता है जी इनको, इनके चश्मों की वजह से। माशाल्लाह हाफिज कुरान है अबरार, बहुत ही जबरदस्त करेक्टर है अबरार भी। डैनियल विटोरी, दिलीप दोषी, ये वो स्पिनर थे जो चश्मा लगा के बॉलिंग करते थे, और अब अबरार है इस रवायत को आगे बढ़ाते हुए। ऑफ साइड की फील्ड आपने देखी, एक स्लिप के साथ गेंद कर रहे हैं। पॉइंट पे फील्डर मौजूद हैं, शॉर्ट कवर्स में फॉरवर्ड शॉट लेग पे फील्डर मौजूद हैं। पहले अंपायर के बाएं जा रही है अच्छी गेंद, लेकिन यहाँ मौजूद हैं खुर्रम मंजूर जिन्होंने इस गेंद को फील्ड किया। आखिरी दिन जब रन चेस का मामला हो तो खेल, विकेट, बैटिंग, बॉलिंग से ज़्यादा बढ़ के जो है वो नर्व्स का हो जाता है। कौन कितनी देर अपने असाब पे काबू रख पाता है, फैसला आखिरी जो है वो इन्हीं बुनियादों पे होता है। जी हाँ, खुर्रम मंजूर ने अब से थोड़ी देर पहले गेंद को फील्ड किया, और ये वो नाम है कि इस नाम को लेने के बाद आदमी जिंदगी में फंसता जरूर है। खुर्रम मंजूर, आप शॉर्ट बॉल थी और इस मरतबा इस गेंद को लॉफ्ट करने में कामयाब हुए। 4 रन का सिग्नल अंपायर नासिर हुसैन की जानिब से। बड़े कम देखने में आती हैं कि अबरार खराब बॉल करें, अमूमन बैट्समैन को परेशान करते रहते हैं, जगह पे बॉल करते हैं। पीछे की इस बार और पूरा फायदा उठाया रिजवान ने। इस मरतबा बेहतर लाइन और लाइन के साथ 201 रन की बढ़तरी हासिल हो चुकी है यहाँ पर सिंध की टीम को। आज जब खेल का आगाज हुआ तो 251 रन की बढ़तरी थी, 55 पे 5 आउट थे सेंट्रल पंजाब के। उठता हुआ स्ट्रोक इस मौके पे, और इसे बाउंड्री के साथ ही रिजवान अपने निफ्स रेंज मुकम्मल करने में कामयाब हुए, और गेंद सीधी वीडियो एनालिस्ट के लैपटॉप पे जाके लगी है। तो अब देखना होगा कि क्या लैपटॉप डैमेज हुआ या नहीं हुआ। लेकिन आबिद अली फौरन गए हैं, इंजीनियर आबिद अली फौरन जाके उन्होंने लैपटॉप को मायना किया, और आबिद अली ने जो इशारा किया है वो इशारा ये है कि फारिग हो गया है लैपटॉप। ये देखें, इंजीनियर आबिद अली मौजूद हैं लैपटॉप के पास, और ये लैपटॉप जिसमें हाथ रखा हुआ है वीडियो एनालिस्ट ने, ऐसा लगता है कि ये लैपटॉप अब इस चौके के साथ, इस बाउंड्री के साथ ही इनफैक्ट अपनी उम्र की आखिरी बहार देख चुका है। खूबसूरत शॉट, ये एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उन्होंने टाइम किया इसको, और एक्स्ट्रा कवर पे 6 रन हासिल किए। और ये देखिए खूबसूरत टाइमिंग, सेंट्रल पंजाब के लिए तो बड़ा फायदेमंद है, लेकिन उनके एनालिस्ट के लिए नुकसानदेह हो गया ये छक्का। जी हाँ, और ये जो एनालिस्ट है, बिल्कुल फरहान ने सही याद दहानी कराई, है एनालिस्ट जो हैं ये इससे पहले सिंध के साथ एसोसिएट थे और अब सेंट्रल पंजाब के साथ एसोसिएट हैं। अब ये जो अगर हम दिखा सकें तो ज़रूर हम दिखाएंगे कि कितना डैमेज हुआ है। ये देखें, अभी तक जो है जिस तरह जख्मों पे हाथ रख के आदमी काफ़ी देर तक रोता है, अभी तक लैपटॉप पे उन्होंने हाथ रखा हुआ है। ये देखें, ऐसा लगता है लैपटॉप का हारमोनियम ज़्यादा है, ये जिस अंदाज से पकड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से शान उल्ला जो है वो हिम्मत हार चुके हैं, उन्होंने लैपटॉप बंद कर दिया और इस को तस्लीम कर लिया है कि अब नया खरीदना पड़ेगा उनको लैपटॉप। जी हाँ, अब इसमें कुछ बचा भी नहीं कि इसको खोल करके। अब देखें, बार बार जिस तरह आदमी के जब कहीं दर्द होता है हाथ रखता है, जख्म होता है हाथ रखता है, उस लैपटॉप पे मुसलसल हाथ फेर के देख रहे हैं वो, और कह रहे हैं कि जा बवफा तूने भी साथ नहीं दिया। लेकिन बहरहाल रिजवान हुसैन अपनी निफ्स सेंचुरी मुकम्मल करने में कामयाब रहे इस बाउंड्री के साथ।
काफ़ी जो बाउंड्री के बाहर जो हमारा स्टाफ है उनके लिए काफ़ी मुश्किल रहे हैं यहाँ के मैचेस। आपको याद होगा कि हमारे कैमरामैन के पाँव पे गेंद लगी थी और अब वीडियो एनालिस्ट का लैपटॉप डैमेज हुआ। तो गैजेट्स के लिए जो है और स्टाफ के लिए जो है वो थोड़ी सी जो है यहाँ पर मुश्किलात। ये देख सकते हैं आप, स्कोरर भी मौजूद हैं, कैमरामैन भी मौजूद हैं, साथ साथ टीम्स ऑफिशियल भी। और इस मर्तबा कैच की अपील हुई है लेकिन ज़्यादा कॉन्फिडेंट शाउट नहीं था ये। अच्छा कैच हसन का नेक्स्ट स्टंप के नीचे, मुश्किल कैच होता है, एक अच्छी कलेक्शन, लेकिन ये देखिए बाउंसर किया था फहीम अशरफ ने, पुल करने की कोशिश की, बहुत दूर बल्ले से। इंथुजियास्टिक ज्यादा थी ये अपील। और यहाँ पे वलीद याकूब भी शोजब रजा टाइप के अंपायर हैं, काफी देख दाग के डिसीजन देते हैं, तो ये अपील जो उनको मुतासिर नहीं कर सकी ये अंपायर वलीद याकूब। शॉर्ट बॉल, इस पर उठता हुआ स्ट्रोक आउट है, खतरा, और वो कामयाबी हासिल की सोहेल खान ने जिसकी उम्मीद थी और अबरार कैच लेने में कामयाब। बड़ी जबरदस्त फील्ड प्लेसमेंट और सोहेल खान ने जिस तरह आबिद अली को आउट करके इस मैच में वापस लेकर आए थे सिंध को, तो इसी तरह से अब बड़ी कामयाबी हासिल की है। और फहीम अशरफ का डिपार्चर पुल किया यहाँ पे और अबरार तैयार थे। उम्दा कप्तानी फवाद आलम की और उतना ही उम्दा कैच था यहाँ अबरार अहमद का। जी हाँ, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे कि देखना ये होगा कि फहीम अशरफ की किस्मत कब तक उनका साथ देती है। काफ़ी शॉट्स आज सुबह से हम देख रहे थे। ये शॉर्ट बॉल पुल किया, अब ऊपर गई बॉल, टॉप एज लगा और अच्छा कैच अबरार का। स्क्वायर लेग पे कुछ पैर में चोट भी मेरे ख्याल से अबरार को लगी है, लेकिन एक बार फिर सोहेल खान वो विकेट हासिल करने में कामयाब हो गए सिंध के लिए, और बहुत ही अहम विकेट फहीम अशरफ की। तो बहुत ही वाइटल विकेट हासिल किया इस मौके पे जब फहीम अशरफ सेट हो चुके थे। ये स्ट्रोक मुश्किलात का बाइस बन सकता है सेंट्रल पंजाब के लिए, लेकिन यहाँ पे जितनी दाद दें अहमर, आप खुद भी कैप्टन है, कैप्टनसी को देखिए प्रॉपर उस जगह पे डॉट फिल्डर खड़ा किया था कि अबरार को हिलने का भी मौका नहीं मिला, और एक ही फिल्डर इस लेग साइड पे था और गेंद सीधी उस फिल्डर के हाथों में महफूज हुई। वो के स्पाइक जरूर फंसा उनका कैच करते हुए ग्रास में, मसाज करते हुए डॉक्टर इम्तियाज सिंध के फिजियो। अमूमन इसका सहरा जो है जी कप्तान को नहीं बल्कि बैट्समैन को दिया जाता है कि उन्होंने हिलने का मौका नहीं दिया फील्डर को। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन बड़ी जबरदस्त कप्तानी की, और जो थोड़ी बहुत बचत हुई अबरार की वो इसलिए हुई है कि उन्होंने डबल सॉक्स पहने हुए थे, वरना जिस अंदाज से इनका पाँव फंसा था। ये देख सकते हैं आप, अब बहुत ही जबरदस्त कैच था और यहाँ पाँव मुड़ रहा है आप अबरार का, जिसकी वजह से अब तक फिजियो के साथ वो मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल 112 6 विकेटों के नुकसान पे 195 रन की बढ़तरी। अली शान ने ज्वाइन किया रिजवान हुसैन को, पानी का वक्फा, और यहाँ पे अब आपको ज्वाइन करेंगे शाह फैसल और अली यूनुस।
capable with the bat. 804 runs, the best of 96 rather, 250s, average of 23. You need to keep company to Rizwan Hussain, who's batting beautifully. With me in the comm box is Ali Yunus. Good morning, Ali. Good morning, Shah Faisal. What a time to get a wicket. And it's that man again, Sohail Khan. You just cannot keep him out of the game. 4 wickets for 14 runs. Wonderful performance. What a performer he has been over the years for Sindh and Pakistan cricket too. Such a hard-working cricketer. Such an aggressive cricketer too. Always in the game. Always wanting to do well. The captain is lucky to have a character like him in his side. He's working on that ball. 30 overs old now. Almost 30 overs. Very skillful. And the best thing is, he has great knowledge of his craft, accumulated over a number of years. Goes past the outside edge immediately. Superb areas once again. Ali Shan very tentative to begin with. That's the dismissal. That got a little bit big on him. Couldn't control. And the catch was good. Slight injury scare. But is that man? Pretty ordinary by Fahim Ashraf. The plan was set up. He's done the hard work. They had put Sindh on the back foot. He could have easily maneuvered it for 1 run and kept on playing. But he decided that he had to go after him. Wanted to go big. Didn't realize how damaging it could be for the team, because they surely had Sindh on the back foot for that first hour. This is not what you expect from a seasoned campaigner like Fahim Ashraf, an international cricketer. That is why I always say skill is one thing, but that mental toughness is what separates you from the good to the great. If you want to be a great cricketer, it's the situations like these you need to perform. You need to be there for the team. This is where the importance of first-class cricket and the way the first-class cricket is played. I'll ask Farhan in a minute, but a lot of these players... This one's down the leg side. There's a big shout. It did get something along the way. Was it the bat? Rizwan doesn't think so. And Nasir Hussain agrees. This is what pressure can do to you. Have a look at that. Big spin off the pad. Good decision by umpire Nasir Hussain. Very good decision. Spot on. Brush the thigh pad on the way. Good take from Hassan though. He is moving very swiftly. But Abrar has got an opening now. Two is the call. Rizwan is not interested. We're talking about that mental toughness. A lot of these players, they're not used to getting to play in the 3rd and 4th innings of the first class season when the pressure is on and the game is on the balance. For the entire first half of the Quaid Azam Trophy, we never got into a 3rd innings of the match with something lying on it. And it was dead rubber most of the times. Lots of oohs and ahs now. This is what 1 wicket can do to your morale. Sindh were down and out 10 minutes before. And have a look at the body language now. The ball is pitching in the right areas. All of a sudden, things have started to happen for Sindh. Catches around the bat, slip in a gully. This one sliding down. Line wasn't good, but the deception was there. Clearly Ali Shan is not picking him. Pitched on leg side. High too. It's not going to be an easy task for Ali. But he's got 250s to his name at this level. His team, his management would like to get same sort of performance from him. 31 overs gone, 113 for 6. Central Punjab under pressure on the back foot straight away. And that was a 6. The damage was done to this laptop. It's all blank now. Is he going to charge Rizwan Hussain for that? Well, I think he was still admiring the shot.
He didn't take the evasive action and he was caught off guard. Lucky he had the laptop in front of him because it was heading in his direction. That left laptop protected him. Rizwan Hussain, I don't think he's going to pay for that. This match belongs to one man, Sohail Khan. Runs with the bat, wickets with the ball. Nicely timed this time. Rizwan will look for two. Not quite. Fawad Alam got to the ball quickly enough. Yeah, you're talking about Sohail Khan. He's really been outstanding in this game. 4 for 15. That spell last night I thought was just brilliant. He didn't give a sniff to the Central Punjab batters, who was at him at all times. And under the pressure, these batters buckled. He just knows how to get wickets. Just the skill he has developed over the years, playing first-class cricket for such a long time. That is the beauty of playing first-class cricket. You learn how to set up a batter. Just as he did to Fahim Ashraf. He had 3 fielders on the boundary line, forced him to play that shot. Wonderful cricketer, wonderful thinking cricketer. And he's a versatile as a bowler. He knows how to use the new ball, an art which is very difficult to master. Then in the middle of the innings, like he said, he can plan batters out. And if nothing's happening, he's a very good exponent of the reverse swing as well. Just a complete fast bowler. A complete cricketer. 2 50s in this game. Not to forget that. And if Sindh are in this position in this game, in a commanding position, it is because of his inning in the first inning. Those 50 runs came very handy. They got the lead of 32 runs. And in the second inning, it was Asad Shafiq. And then again, him doing bulk of the runs. Talking about his wickets, look at those wickets, the length. And in Dakar, caught Imran Dokar plumb in front. Abid Ali, that battle he won against him, more in the mind. And then the third one, Ali Zaryab, that length. And this morning, Ali Shan found the middle of the bat. That will give him some confidence. But yeah, the skill and craft of Sohail Khan, very evident on all these 4 wickets. That setup, beautiful setup. He was persisting with those short deliveries, wanting Fahim Ashraf to go for that big one, and he did so. Not so cool by Fahim Ashraf. 34 runs he scored of 57 deliveries, did all the hard work, stayed on the crease for first hour, just gave it away. Normally Fahim Ashraf is a very good player of short pitch bowling. In the test matches even we've seen that before. To lure him into that hook shot, the height of that bouncer was just about perfect. It's just about head height. Very difficult to control and bring it down. That's where the top edge came in, and Abrar has done the rest. But like you said, the knowledge, the setup, second to none from Sohail Khan. That was a hard length, banged in hard, hurried on to Fahim Ashraf. Big wicket in this contest. We all thought that we might see a game out of this. Just lost the wicket of Fahim Ashraf. It's up to this man, Ali, to stay with Rizwan Hussain. It's in the air but away from the fielders. He just give it an almighty go. It was full in the arc and Ali Shan just threw the hands at that. He will take the boundary. Was pitched up. Easy pickings for Ali Shan. That length through the line, wonderful. This is one way of doing it, because you cannot keep on blocking those deliveries. You got to be searching for those runs. You got to keep on putting pressure back on Sindh by taking those boundaries. And we've seen Rizwan Hussain play a wonderful inning till now. He just needs partners to stay there with him. 189 more runs to win. Daunting task still. You got to believe that you can do it. Got to believe in your own abilities. And just talking about how Central Punjab crumbled in the fourth innings last evening.
Farhan Nisar has given me this stat. In the entire season, they got into the fourth innings only once. And on that occasion, Saad and Saib Badr scored half centuries, but they still lost 5 early wickets. So throughout the whole season, they didn't get a chance to bat in the fourth innings. And the pressure was really on yesterday after a long day in the field. They just didn't know what to do. There was a small session, only 15 overs. But even the experience of Abid Ali and the rest just couldn't cope. Nice save from Fawad Alam. Yeah, that 212 run came against Balochistan. But this is a different opponent. This is a different bowling attack. So much variety in this Sindh bowling attack. And also the pressure of qualifying for the final. Because if you know that back of your mind, if you lose this game, you're almost out of the tournament. So that pressure also on Central Punjab batters. Too close to cut. Once again that bounce defeating him. It went over the top of the bat. Great deception from the leg spinner. Skated on. That area again. Brar bowling at the right channel. And the pressure definitely is on Rizwan Hussain now. He was much more comfortable with Fahim Ashraf on the other end. Change his angle. It looked like he bowled the off spinner. 118 for 6. Abid Ali on your left was bowled by Sohail Khan. A wonderful delivery. Still, I believe that he should have stayed. He should have shown patience because he has the abilities, he has the temperament behind him. He was the one we all were looking forward for Central to get the team closer to that 189 now. But hurried. He was in a hurry. As you said, just for 14 or 15 overs last session, they lost 5 wickets and the damage was done. For most part, it looked like a wicket could fall off any deliveries. That was the pressure and that was the nerves from Central Punjab. They couldn't execute their skills and they had left themselves a huge task on this final day. Little bit of movement from Sohail Khan. Chance there. Tabish Khan, wayward throw. Probably sitting on his heels, and Ali Shan saw that. We're yet to see Tabish Khan in action. He will definitely come into play sooner or later. We will see him, but have a look at this. This is very good cricket by Ali Shan. He realized that it has gone to the veteran Ali Tabish. There was a single available. Good judge of a run. Rizwan Hussain has played beautifully. Some of his strokes have really reminded us of his innings earlier in the season. Very strong square of the wicket. Possesses that gift of timing. Like any other left-hander, looks very elegant, hitting through that offside. He should continue to bat the way he is. Looks comfortable, more comfortable than any other batter has looked in this second innings. The same sort of field set for him as it was for Fahim Ashraf. Deep square leg, deep fine leg. Because we all know that he likes playing shots. Anything that is in his zone, he is going to go after him. But this situation demands a different Rizwan Hussain, as it was the demand from Fahim Ashraf. He couldn't fulfill it, but Rizwan Hussain must go down fighting. It's in the air away from the fielder once again, chancing his arms. That fuller length. Rizwan put the foot down and hit it aerially. Another boundary. Central Punjab living dangerously. Stand and deliver through the line. That is what Rizwan Hussain is so good at. It was there to be hit.
Oh, look at that. Through the line. A little uppish, as you said. But lucky for him, it went away from that Tabish Khan who was standing on mid-off. Placement was fine. He's moved to 61, a very crucial inning, a very important inning as far as his own career is concerned. No, you want to say this has been a very entertaining morning session. Runs have come at a very good pace. Sindh is always in the game because one wicket from here will expose the tail. And they still have plenty of runs to play with. But to Central Punjab's credit, today they've shown some fight. And they've gone for their strokes, trying their best to put the pressure back on the Sindh bowlers. Tacking on those stumps. He's very consistent with his line and length, Sohail Khan. As a batter, you cannot afford to make a mistake. It's all about commitment for Central Punjab from here on. They just need to keep on believing that they can make a match out of it. We've seen players do it. Rizwan Hussain, a top order batter, alongside Ali Shan, the wicketkeeper batter. The belief must be there. 2 gullies, 2 slips for Ali Shan. Change of plan for him. He's known as Dhoni in his camp. I wish he could show some resistance like Mahendra Singh Dhoni, a wonderful cricketer. Great cricketer. And if he can be half as good as he is, that will be great for Central Punjab. And change of plan once again from Sohail Khan. Square leg fielder has gone back, but he's still persisting with those 2 slips and gully, making the batsman think at all times. Off the leading edge, but it through the gap. Abrar will get to the ball, just a single. 125 for 6. Central Punjab needing 182 runs to win. And how badly do they miss their ex-captain Azhar Ali? I'm sure if he was here, the situation would have been different. With his experience, with his skill, with his talent, it would have been different for Central Punjab. At the moment, it's all up to Rizwan Hussain and Ali Shan to get them closer to that score. That's the points table. Look at how tight it is. And add another 16 to Sindh's tally. If they are able to win this game, 121. More blows like this will challenge that intentions, as Ali Shan has lifted Abrar. Good intentions. He picked the right ball and the execution was perfect. That's one way of doing it. That's one way of defending it. Just attack. It's good cricket. It was pitched up to him. There was an opportunity to hit it over the fielder, and he did it beautifully. There was no fielder there at deep on mid-wicket. It looks good. Looks very solid. Playing like Dhoni. He has to continue to pick the right balls to attack. Like Ali said, it's very important to keep that scoreboard moving, because that will put pressure on Sindh. But you got to be very selective, and you cannot make an error in doing that. It's a very good pitch to bat on, Shah Faisal. That is why Central Punjab must feel very unlucky. They lost 5 wickets in the session last evening. That will haunt them. The wicket of Abid Ali and Saif Badr, in my opinion, were the crucial ones. Because had they stayed on, because they're the sort of players who keep searching for the runs. It was very crucial, those 2 wickets, in my opinion. 2 wickets too few last evening. It would have posed a different challenge for Sindh as well, defending this total.
With 5 down, they know that there are plenty of runs and very close to opening the door. And despite that good partnership in the first hour, they have broken through. So always the mind will go back to that little session last evening. That could still prove the turning point of this game. Seen some hard-fought cricket over the 3.5 days here, and not finished yet. 129 for 6. That's the points table. Northern sitting at top, 126 points. Khyber Pakhtunkhwa number 2 with 124. Just difference of 2 points between those two teams. 105 for Sindh, 103 for Central Punjab. It's that tough to qualify for the finals. Central Punjab is due to play Khyber Pakhtunkhwa next. Southern is going to play Sindh, and Balochistan will take on Northern for the last game. And that will be very interesting battle for the last round game. If you add 16 to Sindh, assuming they're going to complete that victory, 121. So that means 5 points will be separating 3 teams. Central Punjab still in it because they will be playing one more game, and if they win that, it still could be a 4-way tie for that final. As Rizwan Hussain, beautiful. This is magnificent. Standing tall, getting on top of the bounce and hitting through the line. This is shot of the day. Top class. Wonderful batting by Rizwan Hussain, the lone warrior for Central Punjab, doing it for them. Have a look at that. Pitched up. Wonderful placement. As you said, just on top of it. Through the line. No chance for Tabish Khan. What a stroke. Rizwan Hussain is really showing his class here. If you look at the replay again, there wasn't a big flourish. Just that punch. Once again, this time the on drive. But if you look at that boundary, I mean, it wasn't a half volley by any means. He just got the foot down to cover the line of the ball. The hands came through the ball. High front elbow. Magnificent timing. This boy has some talent. And as long as he stays on the pitch, there will be hopes for Central Punjab, because we all know what he's capable of. We've seen it before. The 250 he scored on the same ground. Good pull shot. Sohail Khan will struggle to get the ball as high as he did for Fahim Ashraf because Rizwan is very tall. He got on top of it very comfortably. Roll of the wrist all along the ground. That's authoritative shot by Rizwan. Was on top of it. The sound that bat made. Wonderful. This is exciting stuff. If Central Punjab can score 73 more runs without losing a wicket, chasing runs, double figures with the same pair on crease, it will make things very interesting, because then the pressure will be back on Sindh. Ali Shan going for it. That fuller length from Sohail Khan is quite tempting. He didn't quite intend where it went, but still the result is very good for Central Punjab. Second boundary of the over. They're not shy of hitting boundaries. That is one way of doing it. Just attack. Have a look at that. Not exactly timing it right. Not very intended, but it's the runs that matters. Went in the gap. No chance for Tabish to stop that. Good result. In the scenario you painted, now with 69 runs to get the target into the 2 figures, that would really put pressure on Sindh, I think, because it will become a game of nerves for them even. And we've seen this before. Sindh team has plenty of leaders. Skipper Fawad Alam, but there is Khurram Manzoor, there is Tabish, Sohail Khan, Hamza, Asad Shafiq. You know, we've seen that with so much experience, things doesn't normally go. They're not often on an agreement on same things. But that pressure has not been put yet. Let's get there first and we'll see.
And there's one leader sitting outside, Sarfraz Ahmed. He's there early morning practicing with the team. He's been here since 2 days. In the air, not hit cleanly, but will still go away for a boundary. Ali Shan has come out all guns blazing. He's really putting Sohail Khan to sword here. Wonderful cricket. Wonderful game awareness. Just putting the pressure back on Sindh whenever given the opportunity. It was pitched up. There was an opportunity. 2 fielders up in the circle. Played it over Fawad Alam. Excellent execution of this shot. Wonderful batting. What must this camp be thinking? Is there a hope? There should be, because 165 runs. Never know. Definitely there is hope. You don't want to give up the fight. It's never finished till it's finished. But it's very refreshing to see the way Central Punjab has come out this morning. First Fahim Ashraf and Rizwan. And now Ali Shan. Very impressive. Sohail Khan, he's taking him on. His short boundary, you have to say, he chose the right options. Well, that can happen to teams when they're down and out, not thinking to win, and then that brings the best out of your players. And that is what we are seeing from Rizwan Hussain and Ali Shan, as we see Tabish Khan coming into the action for the first time in this today. They need 165 more runs to win. It's going to be a very interesting battle. ताबिश खान के हाथ में गेंद आ चुकी है, जिन्होंने 4 ओवर्स में 15 रन देकर 1 विकेट हासिल की थी, लेकिन इस वक्त सेंट्रल पंजाब की टीम शिकस्त मानने को तैयार नहीं है। रिजवान हुसैन मर्दे बहरान बने हुए 67 रन के साथ, और इससे पहले यहाँ पर 253 रन की इनिंग्स खेल चुके हैं। और जैसे रिजवान हुसैन का साथ देने के लिए आए हैं अली शान, इसी तरह कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक अंडर-19 कप्तान अहमद सईद। शुक्रिया फरहान। तमाम देखने वालों को सुबह बखैर। इस मरतबा आगे गिरा हुआ गेंद था, इसको ड्राइव किया। और अगर हम पहले 1 से 1.5 घंटे में देखें तो अहमद रन्स जो है बड़ी आसानी से और बड़ी रवानी से आ रहे हैं, और जो चौथे दिन का जो इम्पैक्ट आमतौर पर देखा जाता है, स्पिनर्स का उतना अच्छा बॉल नहीं हुआ। और सुहेल खान जिन्होंने कल बहुत ही उम्दा बॉलिंग की थी, आज यूं लगा कि शायद कल कोई और सुहेल खान बॉलिंग कर रहा था, नया गेंद था, शाम का वक्त था, तो आज बहुत बेहतर है, कदरे आसान है बैटिंग करना। मुस्बत रवैया, मुस्बत अप्रोच सेंट्रल पंजाब की जो है वो एक बहुत ही दिलचस्प मरहले में खेल को ले आई है। और मुस्बत रवैये से मेरा मतलब कि सिवाय फ़हीम अशरफ के उस पुल शॉट के अगर आप देखें तो ज़्यादातर अब तक बड़ी अच्छी चूज़ की हैं उन्होंने बॉलें, गलत शॉटें नहीं मारी और शॉट बेकार में रोकी भी नहीं। दुरुस्त कहा, इस गेंद को जाने दिया रिजवान ने, और स्ट्रोक प्लेयर हैं रिजवान, इनको रोकना जो है वो आसान नहीं होता। पहली इनिंग्स में ज़्यादा रन्स नहीं कर पाए। और जब हम चेस की बात कर रहे हैं तो अहमद 5 मरतबा टीम 300 से ज़ायद रन्स को चेस करने गई हैं, 2 मरतबा कामयाबी मिली है, 2 मरतबा शिकस्त मिली है। और सबसे अहम बात यह है कि सिंध की इसी टीम के खिलाफ पिछले सीज़न में सदरन पंजाब ने 370 रन्स का मजमुआ भी चेस कर लिया था, तो ये स्टैट्स ज़रूर उम्मीद देंगे सेंट्रल पंजाब को। विकेट में मुझे लग रहा है अभी भी कुछ बाकी है। अचानक जब विकेट गिरती है तो फिर बैटिंग के लिए मुश्किल हो जाता है।
पूरा समा अचानक। लेकिन आज फ़हीम अशरफ ने फिर आप देखिए गलती की, गलत शॉट मारा, आउट हुए। लेकिन उसके बाद से रिजवान और अली शान ने बड़ी अच्छी अब तक हिकमत अमली से बैटिंग की है। विकेट में अगर कुछ मौजूद है तो ताबिश खान से बेहतर कोई नहीं हो सकता जो उसको निकाले, सामने लाए। इस असना में इनिंग्स का 37वां ओवर मुकम्मल हुआ। 6 विकेटें ज़रूर गंवाई हैं, लेकिन 142 रन के साथ ताकुब में है सेंट्रल पंजाब की टीम, जिसे मजीद 165 रन चाहिए फतह के लिए। एक बड़ी अहम चीज़ जो उन्होंने सुबह से आज की है सेंट्रल पंजाब के बैट्समैनों ने, वो अबरार को जिस माइंडसेट के साथ उन्होंने खेला है, अबरार को सेटल नहीं होने दिया अब तक। और ये बड़ा अहम है, चौथे दिन की विकेट पे अगर अबरार से अगर आप दब गए या उसको हावी होने दिया आपने अपने ऊपर, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वो इसमें एक बार लाइन और लेंथ अपनी ठीक कर लें तो मुश्किल होता है उनको झेलना भी। लेकिन अब तक जो है उनको सेटल नहीं होने दिया, जो मौका मिलता है उनको अटैक करते हैं। और पहली इनिंग्स में जो सेंट्रल के बैटर्स हैं वो पहले ही दबाव में थे अबरार को देखते हुए। उन्हें शायद पिछला मैच याद था जब 11 विकेटें हासिल की थी अबरार अहमद ने, और गलत शॉट्स खेलते हुए 2 विकेटें गंवाई सेंट्रल पंजाब ने अबरार के सामने। और ये देखिए कितनी आसानी से इसको स्वीप किया है अली शान ने। अगेन बाउंड्री लाइन की जानिब बढ़ता हुआ और रेस को जीत गया साद खान से। तो बहुत ही आसानी के साथ आज सामना किया है सेंट्रल पंजाब के बल्लेबाजों ने अबरार अहमद का, और जो मिस्ट्री फैक्टर है वो उनकी बॉलिंग से गायब दिखाई दे रहा है। ये देखिए बहुत ज़्यादा वक्त था अली शान के पास कि इस गेंद को जहां उन्होंने चाहा वहां पर खेलकर बाउंड्री हासिल की। जी हाँ, कोई बहुत ज़्यादा, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये मुस्बत अप्रोच जो है ना वो बॉलर के दिमाग पे ज़ाहिर है असर करती है। उसकी लाइन, उसकी लेंथ, प्रेशर में आता है, वो भी ज़ाहिर है। लेकिन यहाँ मुझे जिक्र ज़रूर करना होगा कि जो फील्ड पोजीशंस हैं वो सिंध की तरफ से आज ऑन द मार्क जिसको कहते हैं वो नहीं है। शॉर्ट लेग खड़ी है, मिड विकेट भी खड़ी है, बैड बॉल्स के लिए फील्डिंग खड़ी की हुई है। और अबरार अहमद नौजवान बॉलर हैं, अभी इतना ज़्यादा उनके पास तजर्बा नहीं है, तो यहाँ पर कप्तान की तरफ से भी सपोर्ट मिलना चाहिए। और आमतौर पर जो इस तरह के बॉलर्स होते हैं वो अपनी फील्ड खुद सेट किया करते हैं, ना कि कप्तान उन्हें फील्ड सेट करके दे। यहाँ यूँ लगा आज के शायद कप्तान ने उन्हें फील्ड दिया कि इस फील्ड के अकॉर्डिंग आपको बॉलिंग करनी है, तो शायद विकेट टेकिंग से वो रन्स रोकने की जानिब जो है वो आगे हैं अबरार अहमद। और ये गेंद शायद इनके बैट से टकराती हुई गई है, अंपायर का सिग्नल देखना होगा। ये अच्छा गेंद था और 4 रन्स का इशारा किया, तो ये जेन्युइन एज था जो रिजवान के बल्ले को लगा, लेकिन विकेट कीपर हसन तैयार नहीं थे इसके लिए। स्लिप के फील्डर के पास भी मौका नहीं था। असद शफीक हैरान परेशान खड़े हैं कि एक बड़ी विकेट का मौका गवा दिया है सिंध की टीम ने। रिप्ले देखिए, ये साथ बहुत वाइड खड़े हुए हैं, फाइन लगाइए और तैयार नहीं थे। बहुत ही खुशकिस्मत रहे कि स्लिप और कीपर के बीच में से ये 4 रन हासिल किए। ये अहम मौके हैं, ये इससे फ़ायदा उठाना होगा सिंध को, वरना जिस अंदाज से दोनों बैटिंग करते हैं कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और खेल उनके हाथ से निकल जाए। इस बाउंड्री के साथ 150 रन भी मुकम्मल हुए, लेकिन अभी भी लगभग इतने ही रन मजीद चाहिए सिंध की टीम को। और ये पिछला गेंद हैमर ये कदरे तेज था, शार्प स्पिन हुआ जिसकी वजह से मुश्किल में आई। और यही हम बात कर रहे थे इस गेंद से पहले कि ब्रार की जो स्पीड है वो कदरे कम है, इसलिए बड़ी आसानी से उनको मैनेज करना आसान हो रहा है। लेकिन पिछला गेंद थोड़ा सा तेज़ था जिस पर रिजवान मुश्किल में आए और एक एच दे बैठे, लेकिन किस्मत उनके साथ थी। बहुत ही गलत पोजीशन में स्लिप खड़ी हुई है, बहुत वाइड है, और मेरा ख्याल से कीपर का
कीपर का फर्ज है कि वो उसकी पोजीशन को सही करे, क्योंकि जब भी अबरार लेफ्ट हैंडर को बॉल बाहर निकालेंगे तो फाइन ही एज लगेगी। ये देखिए बहुत वाइड खड़े में और ये बहुत फाइन एज, अगर एक कदम भी अंदर होते तो ऐन मुमकिन है कि इनके हाथ में बॉल जाती, लेकिन अमर कीपर भी तैयार नहीं थे। अगर आप उनका रिएक्शन देखते हैं तो थोड़ा सा लेट रिएक्ट किया, वो भी गालिबन तो नहीं कर रहे थे कि इतना तेज ये गेंद स्पिन होगा और एज निकलेगा। इस गेंद को जाने दिया। और जो दिफाई फील्डिंग की भी आप बात कर रहे हैं तो रिजवान के लिए भी एक फील्डर ऑन साइड पर बाउंड्री लाइन पर रखा हुआ है किसी भी बड़े शॉट से। और ये देखिए स्लिप बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि बहुत ज़्यादा वाइड थे, लेकिन ये गेंद लगने के बाद बड़ी तेज़ी से गया। अभी हसन वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, नहीं तो मुमकिन है कि ये कैच विकेट कीपर भी थाम सकते थे। जी हाँ, विकेट कीपर, लेकिन जब इस तरह का एज लगता है तो मुश्किल हो जाता है कीपर के लिए उसको रिएक्ट करना, बड़ा कम टाइम होता है। स्लिप के पास ज़्यादा चांस होता है कि अगर उसकी पोजीशनिंग सही हो तो, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें अमूमन देखी गई हैं क्रिकेट में, बड़ी बारीक एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं विकेट हासिल करने के लिए। और स्पिनर्स के लिए स्लिप के फील्डर्स भी स्पेशलिस्ट फील्डर होते हैं, जो फील्डर्स फास्ट बॉलिंग पर खड़े होते हैं स्लिप पोजीशन में। फास्ट बॉलर्स पर अच्छे कैचेस पकड़े हैं साद खान ने, लेकिन ये बहुत ही स्पेशलिस्ट पोजीशन है। इस मरतबा खेला ड्राइव किया, लेकिन असद शफीक मौजूद थे कवर्स में, कोई रन नहीं हासिल होगा। एंटिसिपेट भी बड़ा देर से किया उन्होंने। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ज़रूरी नहीं है कि जो फास्ट बॉलिंग पे स्लिप में फील्डिंग करता हो वही स्पिनर पे भी करे, बड़ा मुख्तलिफ जजमेंट होती है, एंटिसिपेशन, रिएक्शन टाइम कम होता है और स्पेशलिस्ट पोजीशन है। 100% सही आपने ये कहा। और आमतौर पर गेंद भी कदरे लो रहता है अगर हम फास्ट बॉलर्स के मुकाबले में स्पिनर की बात करें जब गेंद स्लिप में जाता है। और स्टेट बैंक पर खेले के मैचेस में हमने अक्सर औकात देखा है कि स्लिप की फील्डिंग की जो पोजीशन है वो टीमें बदलती रही हैं और उसका उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा है। एक मैच में याद है कि तैयब ताहिर जो आमतौर पर स्लिप में फील्डिंग नहीं करते, उन्होंने कैच गिरा दिया था अहम मौके पर। तो स्पेशलिस्ट की जो अहमियत है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ये एक बेहतर ओवर था ताबिश खान का। 152 रन पर पहुंच चुकी है सेंट्रल पंजाब की टीम। 155 रन मजीद चाहिए और रिजवान हुसैन 71 रन के साथ जीत का आलम उठाए हुए आगे बढ़ रहे हैं। कल हमने किसी वक्त ये बात की थी फरहान के क्रिकेट जो है बड़ा आसान खेल है अगर आप उसको आसान रहने दें। अगर आप उसको मुश्किल बनाएंगे तो जाहिर है ये फील्ड के बारे में मुझे ज़रा कुछ परेशानी है। रेगुलर चीज़ें जो है वो पहले ज़रूर उनकी कोशिश करनी चाहिए, रेगुलेशन जिसको हम कहते हैं। अगर उससे काम ना बने तो फिर एक्सपेरिमेंट्स और मुख्तलिफ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो आप कहते हैं वो करना होती है। अब आप ये देखिए शॉर्ट लेग, अगर आप शॉर्ट लेग खड़ी है, अगर आप दूसरा फील्डर भी क्लोज इन लें, मिड ऑफ मिड ऑन को पीछे कर लें, बहुत अमूमन ये देखा गया है कि बैट्समैन जो है उस पूरे हिसार से निकलने के लिए एक गलत हिट मारने की कोशिश करता है। उसकी अभी तक कोशिश नहीं की जा रही। जो उनकी लाइन है बॉलिंग की, मिडल एंड ऑफ, इसमें इंतजार किया जा रहा है कि वो कोई गलत शॉट मारे और आउट हो जाए, लेकिन उतना दबाव डाला नहीं जा रहा कि गलत शॉट मारने पे आमादा किया जाए बैट्समैन को। जी इस गेंद में कदरे उछाल मिला, बीट हुए अलीशान। और इस मरतबा भी गेंद ने बाहरी किनारा लिया, लेकिन ये स्लिप से बहुत दूर था बाउंड्री की जानिब गेंद। रवां दवां असद शफीक की
अच्छी फील्डिंग एफर्ट यहाँ पर। अब आप ये देखिए कि ये मुस्तकिल एजेस लग रही हैं, तो मतलब है बॉल थोड़ा स्पिन भी हो रहा है, लेकिन मिड विकेट पे फील्डर, अब आप ये देखिए बॉल स्पिन हुआ, रेट उन्होंने जरूर खेला, अच्छा भी खेला, नीचे रही बॉल, लेकिन मिड विकेट का जो फील्डर है वो ज़ाया हो रहा है इस वक्त। ये कवर्स में 2 फील्डर्स खड़े हुए हैं, ज़ाया हो रहा है। ये सारे गैप्स दिखाने पड़ते हैं बैट्समैन को, ताकि वो हिट जब मारने जाए तो कैचिंग पोजीशन में आपके पास फील्डर मौजूद हो। गली सिली मिड ऑफ, ये पोजीशन ऐसी हैं जो कैचिंग पोजीशंस, ये अब गली जो है कैचिंग में ली है उन्होंने। और ऐसी फील्ड पोजीशन से बॉलर को भी हौसला मिलता है कि कप्तान मुझ पर एतमाद कर रहा है, और अभी भी 150 से ज़ायद रन्स करने हैं, तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकती है सिंध की टीम। लेकिन मैच के आज दिन के आगाज़ से ही बड़ा दिफाई फील्ड हमें दिखाई दी, और इस मरतबा भी शॉर्ट लेग के फील्डर हरकत में आए। यूँ 40 ओवर मुकम्मल हुए, 154 रन्स बना चुकी है सेंट्रल पंजाब की टीम, और 153 रन्स मज़ीद दरकार हैं। सिर्फ 4 विकेटें बाकी हैं सेंट्रल पंजाब की। सिंध के कप्तान को ये बात जहन में रखनी होगी, फवाद को, कि ये रन तो नहीं बच सकते, वक्त इतना मौजूद है कि अगर ये दिफाई माइंडसेट में चले गए तो बहुत ही मुश्किल है कि वो ये रन रोक सकें। मुश्किल ही नहीं है बल्कि नामुमकिन है कि पूरे दिन में ये मजीद 153 रन रोके जा सकें। और एक बार टीमें जब इस तरह के माइंडसेट में चली जाती हैं, जैसे कि कल हमने सेंट्रल पंजाब को देखा जब सिंध बैटिंग कर रही थी, कोई एक माइंडसेट में चले गए थे कि जी अब बैट्समैन कोई गलती करेगा तो ही आउट होगा, कोई चीज़ क्रिएट नहीं कर रहे थे, कोई दबाव इस तरह का नहीं डालने की उन्होंने कोशिश की कि जिससे आमादा हो बैट्समैन गलती करने पे। तो सिंध जो है वो मुझे इस वक्त उसी माइंडसेट की तरफ जाती हुई लग रही है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक होगा और इवेंचुअली उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। तीसरी और चौथी इनिंग्स में कदरे दिफाई कप्तानी और हमें फील्ड सेटिंग देखने को मिली है फील्डिंग टीम्स की जानिब से। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये जो 153 रन है, अभी भी दिन में लगभग 60 ओवर्स का खेल बाकी है, तो 60 ओवर्स में 153 रन का दिफा तो नहीं किया जा सकता। तो सिंध अभी भी अच्छी पोजीशन पर है, अपर हैंड है उनका, तो चाहिए कि यहाँ से विकेटें हासिल की जाएं। रिजवान अगर एक एंड पर मौजूद है तो दूसरे एंड से विकेटें लेकर इस मैच में कामयाबी हासिल की जाए। रिजवान हुसैन इस कायदे आज़म ट्रॉफी में बहुत ही मैच्योर बैट्समैन के रूप में सामने आए हैं, अपनी फिटनेस पर बहुत ज़्यादा काम किया है, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से इन्होंने अपने ऊपर काम किया, और जिसका नतीजा ये है कि मुसलसल रन्स बनाते चले जा रहे हैं। स्टेट बैंक पर भी सबसे बड़ी इनिंग्स खेली इस वेन्यू की 253 रन की सूरत में, और आज भी 71 रन की बहुत ही उम्दा इनिंग्स खेलते हुए अपनी टीम को जीत की जानिब लेकर जाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। ताबिश खान कुछ थोड़ी सी एक कहते कामनेस लाते हुए, रेगुलेशन, अगर आप देखें तो रेगुलेशन क्रिकेट इस वक्त, और ये बहुत ज़्यादा चीज़ें मुख्तलिफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी काफ़ी वक्त पड़ा हुआ है, काफ़ी रन है उनके पास। लेकिन लाइन और लेंथ तब्दील नहीं करनी चाहिए। पहले 4 गेंद ऑफ स्टंप और उसके बाहर वो किए और लेफ्ट करते रहे रिजवान, और यहाँ पर एक आसान सिंगल दे दी। तो 4 गेंदों पर जो थोड़ा सा दबाव बढ़ाया था ताबिश खान ने, वो 5वीं गेंद पर
रिलीज कर दिया और अब अलीशान सामना करेंगे इस ओवर की आखिरी गेंद का। इस बात की तवक्को थी, जो काम फास्ट बॉलर्स ने कल शाम को आखिरी घंटे में कर दिया, ये इसकी आज सुबह तवक्को थी कि बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी उनको, और स्पिनर का किरदार जो है वो बड़ा अहम होगा। उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि स्पिनर को जो है उसका दिल बड़ा किया जाए, उसको कैचिंग पोजीशंस पे फील्डर दिए जाए, उसको ये एहसास दिलाया जाए कि आज का दिन उसका है, आज का काम ज़्यादातर जो है वो उसका है। आमतौर पे ये कहा ही जाता है कि लेग स्पिनर जो है, अगर उसको कप्तान अच्छा ना मिले तो चाहे वो कितना भी अच्छा लेग स्पिनर हो, आउट करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और इसकी बेतहाशा मिसालें माजी में मौजूद हैं। 155 रन्स पर है सेंट्रल पंजाब की टीम, और ब्रार अभी नए हैं, अभी बहुत कुछ सीखना है, सलाहियत ज़रूर है, तो यहाँ पर कप्तान की जानिब से सपोर्ट बहुत ज़्यादा दरकार है। ये गेंद पीछे गिरा हुआ था, इसको कट किया ज़ोरदार अंदाज में, पलक झपकते ही ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और बाउंड्री यहाँ पर हासिल हुई रिजवान हुसैन को। बहुत पीछे गिरा हुआ बॉल था, शॉर्ट बॉल, पूरा फायदा उठाया रिजवान ने। 71 रन पे बैटिंग कर रहे हैं, तो अब इस तरह की बॉलें तो जाहिर है की तलाश में वो ढूंढ रहे हैं ऐसी बॉलें। और इस गेंद के बाद कोई सीनियर खिलाड़ी पास नहीं गया, जो हम हौसला अफजाई की बात कर रहे थे कि हौसला बढ़ाते हैं अबरार का ताकि अगली वो गेंदें अच्छी करें, विकेट की तलाश में रहें। लेग स्पिनर या मिस्ट्री स्पिनर का भी दौर है, तो उसे एक अच्छा कप्तान हमेशा से दरकार होता है। अब्दुल कादिर मरूम की मिसाल है, जिन्हें इमरान खान ने वनडे क्रिकेट में रूशनास करवाया, और इस मरतबा दूसरी तरफ से बॉलिंग के लिए आए हैं अराउंड द विकेट, और काफ़ी वाइड ऑफ द क्रीज ये गेंद किया था। तो अब्दुल कादिर पहले लेग स्पिनर थे जो बाकायदा तौर पर वनडे इंटरनेशनल्स में खेले, और वहाँ उन्होंने पाकिस्तान को कई कामयाबियां दिलवाई। इस मरतबा ऊंचा शॉट खेला जोरदार अंदाज से, फील्डर्स देखते रह गए, और ये गेंद शायद ग्राउंड से भी बाहर चला गया है। तो रिजवान हुसैन पल पड़े हैं अबरार पर, नौजवान अबरार पर, और भरपूर अंदाज से इनके ऊपर स्कोर करते हुए 82 पर पहुंच गए हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज रिजवान। बहुत ही बढ़िया शॉट, थोड़ी सी फ्लाइट किया था, थोड़ा सा टाइम दिया था अबरार ने, ये देखिए, और पूरा फायदा उसका उठाया, बड़ा अच्छी तरह ग्राउंड से बाहर हो गई है, और अब अंपायर जो है वो और बॉल की तलाश में जो उससे मिलती जुलती हो। फराज सब्स्टिट्यूट फील्डर, बॉल पुरानी लेके गए हैं अंपायर्स के पास, इसमें से उनको एक बॉल का चुनाव करना होगा। रिजवान ने तो दिन में तारे दिखा दिए हैं अबरार अहमद को, और ये सिंध के लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि जितना कॉन्फिडेंस गिरेगा अबरार का, एक जो विकेट टेकिंग ऑप्शन है वो गवा देगी सिंध की टीम। और अब हमें सेंट्रल पंजाब के डग आउट से भी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, तो इस गेंद का इंतखाब हुआ, इसकी शेप को चेक किया, सब कुछ ठीक है, और अब ये दूसरा गेंद है। और अक्सर औकात फ़र्क ज़रूर होता है बॉल में, बिल्कुल एक जैसा बॉल नहीं मिलता, और ये अहमद कदरे नया गेंद लग रहा है, अगर हम देखें काफ़ी इसमें शाइन है। 40 ओवर पुराना तो नहीं लगता, आपका तजर्बा क्या कहता है? बहुत दूर है हम इस बॉल से। अगर
बॉल जरा सा भी सख्ती होती है बॉल की, वो खेल खेल के जो है वो उसमें नरमी आ जाती है थोड़ी, तो जो सख्त बॉल है वो हमेशा स्पिनर को थोड़ा सा हेल्प यूँ करती है कि बॉल जो है वो उसको विकेट से भी ज़्यादा परचेस मिलता है और पड़ के भी वो ज़रा तेज़ जाती है। और ये गेंद पड़ने के बाद तेजी से अंदर आया और शायद इसलिए फवाद आलम ने कोई एतराज़ नहीं किया, इस गेंद पर फौरी तौर पर कबूल किया और उस गेंद का जो रंग है हमने इस पहली ही गेंद पर देखा है। मतलब लाइन थोड़ी खराब थी, दोनों बैट्समैन एक ही एंड पर इकट्ठे हो गए, लेकिन जहां बैट्समैनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई वहां फील्डर्स भी तयन नहीं कर सके कि किस एंड पर थ्रो करनी है, तो यहां पर एक और जिंदगी मिली सेंट्रल पंजाब के इन बल्लेबाजों को। बहुत मौके जाया कर रही है सिंध। बड़ा महंगा साबित हो सकता है वो कैच जो स्लिप और कीपर के बीच से निकल गया ऐसे क्रंच सिचुएशन में। दबाव को बरकरार रखने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो मौका आपके हाथ आए वो उससे फ़ायदा उठाया जाए। और ये देखिए रन आउट का चांस, रिजवान हालांकि डेंजर एंड पर अली शान जा रहे थे, लेकिन रिजवान ने पहले भी इस मरतबा पिछली मरतबा भी कुछ ऐसी गलत फहमी हुई जब सैफ बदर रन आउट हुए, तो यहाँ भी विकेट गवाते गवाते बचे हैं अली शान और रिजवान। जहाँ उस रन आउट में सैफ बदर की गलती ज़्यादा थी क्योंकि वो गेंद की तरफ देख रहे थे और रिजवान भी वही गलती दोहरा रहे थे, शॉट मार के बजाय इसके कि कॉल सुने अपने साथी की, बॉल की तरफ देखना शुरू कर दिया उन्होंने। और यहाँ भी उन्होंने बिल्कुल यही किया, हालांकि ये कॉल अली शान की थी और वो तकरीबन पहुंच चुके थे अपने एंड पर, लेकिन रिजवान ने उनको बिल्कुल भी नहीं देखा, जिसकी वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और ये गेंद लेग साइड से काफ़ी दूर। और अमर बेसिक्स क्या हैं जब आप रन लेते हैं, एक तो कोऑर्डिनेशन और उसके अलावा किस एंड पर देखना चाहिए, बैट किस हाथ में हो, ये अगर आप इस पर रोशनी डालें। ये कंफ्यूजन खुशकिस्मत रहा है। क्या बहुत ही और मंजूर ने डायरेक्ट हिट अपील की, उन्होंने शायद अली शान का बैट क्रीज से बाहर हो, लेकिन अली शान तैयार है उसके लिए। जी आपने बैट और रनिंग की बात की, बड़ा बेसिक बहुत ही निचली सतह पर ये चीज़ें सिखाई जाती हैं और बताई जाती हैं। बदकिस्मती से हमने देखा है कि उस लेवल पे अंडर 14s अंडर 16s के लेवल पे ये चीज़ें, इन पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता। रनिंग करते हुए जैसे आपने कहा कि बहुत ही एक आम गलती लोग ये करते हैं कि बल्ला जो है वो उनके उस हाथ में होता है कि जब उनकी कमर जो है वो उस तरफ हो जाती है, जब जहाँ पे बॉल गई है, तब अगर कमर उस तरफ हो जाएगी तो उनको कैसे ये अंदाज़ा होगा कि बॉल फील्डर के हाथ में कब आई है और वो थ्रो क्या कर रहा है, टाइमिंग क्या रह गई है उनके पास, कितना वक्त बचा है रन भागने का। बड़ी बेसिक चीज़ें हैं और मुझे खासी हैरत होती है ये देख के कि इस लेवल पर भी, फर्स्ट क्लास लेवल पर भी आप ये बुनियादी गलतियां करते हुए प्लेयर्स को देखते हैं। और हत्ता कि टेस्ट क्रिकेट में भी ऐसी गलतियां हमने देखी। और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये इब्तदाई जो लेवल है, जब क्रिकेट शुरू कर रहे होते हैं बच्चे अंडर 13 अंडर 14 में, तो ये वहाँ पर ये बेसिक्स जो हैं सिखा देनी चाहिए और फिर ये याद रखना चाहिए। जी अगर उस वक्त सिखा दें अंडर 14 अंडर
16 की सतह पर तो याद रहती हैं। अगर यहाँ पे आप उन चीज़ों पे काम करना शुरू करेंगे तो वो इतनी पुख्ता हो गई होती हैं आदतें कि फिर उसको बहुत मुश्किल हो जाता है तब्दील करना। फिर वो सारी कंसंट्रेशन जो है वो इस लेवल पे अगर आप उन गलतियों को सही करें तो कंसंट्रेशन किसी और तरफ चली जाती है बैट्समैन की। तो ये वो जगह नहीं है, ये वो मरहला नहीं है जहाँ पे इन सब चीज़ों पे काम किया जाए। और ये गेंद नीचे रहा है ताबिश खान का। कल भी हमने देखा एक से ज़ायद मरतबा गेंदें नीचे रही हैं, लेकिन विकेटों से काफ़ी दूर था, इसलिए जाने दिया। विकेट कीपर के पास अली शान ने 43वां ओवर मुकम्मल हुआ। स्कोर है 167 रन 6 विकेट पर, और अंपायर नासिर हुसैन ने बेल्स उठा ली हैं, जो इस बात का इशारा है कि अब दोनों टीमें मैदान से बाहर आएंगी लंच के लिए। और लंच के बाद एक और भरपूर सेशन हमारा और हमारे व्यूअर्स का मुंतज़िर है। रिजवान हुसैन ने बहुत ही उम्दा इनिंग्स खेली है, 84 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त है, और अली शान उनका भरपूर साथ दे रहे हैं। सेशन में वाहिद जो विकेट गिरी वो फ़हीम अशरफ की थी, लेकिन मजमूई तौर पर 28 ओवर्स में 111 रन स्कोर किए हैं सेंट्रल पंजाब ने, 4 रन फी ओवर के हिसाब से। और याद रहे कि ये चौथा दिन है और सेंट्रल पंजाब की टीम 300 से ज़ायद रन के हदफ के ताक़ुब में है, और मैच अभी भी अहमद सईद बराबर है। बिल्कुल, बड़ा अच्छा ये सेशन मैं कहूँगा कि सेंट्रल पंजाब ने जीता है, हावी रहे हैं वो, और बड़ी अच्छी अप्रोच के साथ। अगर फ़हीम अशरफ ने वो गलती ना की होती तो बहुत ही इस वक्त मुस्तहकम पोजीशन में होते। ये सेंट्रल पंजाब का बैटिंग कार्ड आप देखें तो रिजवान हुसैन 84 रन बनाकर अभी भी विकेट पे मौजूद हैं और बड़ी मुस्बत अप्रोच के साथ इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं। 34 रन फ़हीम अशरफ ने किए, वाहिद आज आउट होने वाले खिलाड़ी, और अली शान 26 रन पर रिजवान हुसैन का बेहतरीन अंदाज से साथ निभाते हुए। ये 5 बैट्समैन डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे, और ये आज के दिन गिरने वाली वाहिद विकेट। पीछे गिरा हुआ गेंद था, इसको पुल करना चाहते थे फ़हीम अशरफ, टॉप एज हुआ और ब्रार अहमद ने एक बहुत ही उम्दा कैच पकड़ के अपनी टीम को कामयाबी दिलवाई, और अब तक की ये वाहिद कामयाबी है। सुहेल खान जिन्होंने कल 3 विकेटें हासिल की थी, 4 विकेटों के साथ इस वक्त सिंध के नुमाया बॉलर हैं, लेकिन जो तशवीश का सबब है वो अब्रार अहमद की बॉलिंग फिगर्स हैं, जिन्हें 14 ओवर्स में 57 रन देने पड़े, 4 से ज़ायद रन का उनका इकॉनमी रेट रहा। और मीर हमजा जिन्होंने पिछले मैच में चौथे दिन 6 विकेटें लेकर सिंध को फतह दिलवाई थी,
Hello and very warm welcome back to the State Bank Sports Complex here. Another very important session coming your way. And this is the summary of this match so far. 159 for 9, plays 187 for 9, 338, and now 167 for 6. Central Punjab still need another 140 runs. Rizwan Hussain holds the key, 84 not out. Sohail Khan once again a star with the ball for Sindh in the 4th innings. This was an intense session of play in the morning. Central Punjab really refused to give up the fight, and Sindh, with some indifferent tactics, could only get 1 wicket, and they conceded 112 runs to a side that was looking down and out at the end of day 3. This is Rizwan Hussain and Ali Shan resuming, and with me in the comm box is Pakistan's former under-19 skipper Amar Saeed. Good afternoon, Amar. Thank you very much, Shah Faisal, and a very good afternoon to all the viewers. Rizwan Hussain not out on 84, and most probably the wall between Sindh and victory. Ali Shan has given him good company. The partnership of 55 runs so far starts with Abrar Hussain. Abrar, who is looking very threatening in the first innings, has a figures of 58 runs of his 14.1 overs. Slightly disappointed, but like I just said, some indifferent tactics from Sindh. Amar, where did it go wrong for Sindh this morning? Well, everything went wrong. As far as I am concerned, the approach, the biggest mistake a team can make is think that it is easy now. Before the last ball or before the last wicket falls, if you get into that mode or mindset that everything's done now, the work has finished, you're in trouble. Already we are seeing something that we didn't see all morning. 2 fielders in front of the bat on either side of the wicket. Short leg and silly mid-off. This is exactly what you were mentioning just when we were walking around the field after lunch off air. It's exactly what you thought, and this seems better already. Another sweep, big shot. Did he get something on it? He did. No signal from the umpire. Yeah, Amar, you were of the opinion that this is how they should go with Abrar. Absolutely. With a bowler who confuses the batsman, and the batsman is never sure which side the ball is going to turn, and we have seen that he has got the balls to jump. He's got that extra bounce. You've got to give him 2 fielders, close-in fielders. I still disagree with Fawad Alam at mid-wicket for the right-hander. He should be in the gully position. Give your bowler a chance that whenever he bowls a good ball and there's a chance created, make sure there's a fielder there. At around the wicket angle to the left-hander. Ends the first over. And if you look at that field as well, you also said that the 2 fielders catching, he can easily drop down the 2 straight fielders, allowing your bowler to err on the on a fuller side instead of erring on a shorter side. Exactly. That mid-wicket fielder for a right-hander, when Abrar is bowling, is like giving him a field for a bad ball. And I don't understand that tactics when a regular bowler is bowling. I can understand if it's an irregular bowler, part-timer, he might make a few mistakes, but you've got to have confidence in your regular bowler, and you have to give him confidence. I've never seen anyone have fields for bad balls, for regular bowlers, for regular spinners.
Mir Hamza now. He bowled from the other end in the morning. Change of hands for him. Again, if you look at the history of successful leg spinners, they always had a very good relation with their skippers. The skipper make them feel that confidence, as Ali Shan once again throwing the bat at a wide delivery. He's really come out positively. He's been busy since he arrived. Yeah, but with leg spinners, they always need that extra cushion and confidence from the skippers. And you have to show it to them by telling them, and show it to them with the fields you set for them. Absolutely right. A bit disappointed this morning with the attitude with which Sindh came in to try and finish the job. This is in the air. It may just land in safe area for Wad Alam. Couldn't get to the ball. Chancing his arm. Ali Shan gets away with it. On the contrary, look at that one. Shan, as we were talking, after every break, there's this small period when the batsman has to get set once again, start again, and that is the time when you need to capitalize at the bowling side. As I was saying, on the contrary, the approach of Central Punjab when they came in this morning, it was positive and they had a purpose. They knew where the scoring opportunities are, where the scoring shots are, and it was most unfortunate that they lost Fahim Ashraf in that session, again to a very bad shot. A bad selection. Otherwise, Central Punjab would have been in the driving seat right now. Another firm push finds the gap and knock from that fielder at extra cover. Khurram Manzoor. You're absolutely right. Central Punjab, who were down and out. Everyone turned up this morning thinking it's going to be short work. But Central Punjab had other ideas. Thanks to that partnership initially between Fahim and Rizwan Hussain, and now between Rizwan and Ali Shan. It'll be very interesting if they can bat long enough to get their target down to 2 figures. That will really put Sindh under pressure too. Rizwan has been exceptional today. Got the edge and gone. The finger has gone up. The short pitch delivery. The commentator's curse as Rizwan, who was batting beautifully, succumbed to that lazy looking pull shot. Surprise from Mir Hamza, but that's the telling blow that Sindh needed. Yes, well, the Central Punjab camp would like me to keep my mouth shut, I think. But again, very, very soft dismissal, that one. Rizwan, what a brilliant innings that was, but a sad ending to a very, very good innings. Gone for 85, 172 for 7. Well, cricket is such a funny game. Amar Saeed full of praise for Rizwan Hussain. And that soft dismissal. It was a good short pitch delivery from Mir Hamza. But someone who's quite set should easily have avoided that. And he's thinking about it, reflecting on what it could have been.
Not happy with that shot, but too late. Look at that. Easily could have left it alone. Took that glove on the way to the gloves of Hassan. Well. Another twist. Sindh may just get out of jail with this dismissal. Ahmed Safi Abdullah is the new man in. Well, expect some more action from him as well. I don't think he's going to hold back. Two sweepers on the onside. There's a fine leg. There's a deep square leg. Also, what happens with a follow wicket is that Ali Shan on the other end is playing so well. Play and a miss. Good start from Mir Hamza. 172 for 7. Look at that. Ahmed Safi Abdullah just poking at one. Very loose. A rare fumble from Hassan. Yes, as I was saying that what a fall of wicket does to the other player who's well set, Ali Shan, who's been playing well so far, all of a sudden his approach will also change. Playing with the tail is not everyone's cup of tea. You need a certain sort of mindset for that. You need authority. You need to believe that you're in charge, and you've got to, take charge of the whole situation. Abrar is back. Skipper Fawad Alam has accepted one part of your field placings for Ali Shan as he went for an expensive sweep. Got lucky again. He's living dangerously. But he will have to be at the non-striker end. Immediately, look at that. Ali Shan hasn't played a bad shot since morning, really, or a false shot. All of a sudden, with the fall of that wicket, goes for that sweep. Something to do with those two fielders, because now he cannot confidently lunge forward, not knowing which way that ball is spinning from Abrar. He's looking for his release shot. Ahmed Safi Abdullah off the mark. 2 full from Abrar. Easily lets the new man get off strike. But like I was saying, these two fielders are in place, but still the mid-on and mid-off are up for Ali Shan. Would you still like them to go back? Yeah, I wouldn't mind. I wouldn't let him get out of jail so easily. If those fielders are up in the circle, again, it just might, it would be easier to just go over those fielders for, misunderstanding. But Ali Shan recovers well. Well, that last ball illustrates what you were just saying. When you got a new partner, there isn't that same level of understanding as well when it comes to running between the wickets. The whole rhythm of his innings looks like has changed with that dismissal. But I have to say, in situations like these, you've got to switch on as a team. Even if the captain does miss something, someone, a senior player or someone, needs to go to him and just have a word with the captain as well at times. New batter batting with these fielders, close-in fielders, and you put a deep point just to give him an easy single when the left-hander was batting. I mean, these are the things that you need to cover. Good one from Abrar. 174 for 7. Yeah, it felt very obvious that the obvious plan would be to keep Ahmed Safi Abdullah on strike for the entire over. But he got away with just one delivery
and that single couldn't be prevented. Now he's back on strike against Hamza. Different strategies, but like you said, as a team, someone just needs to realize and just have a word with the skipper, because there's a lot happening and he can miss a thing or two in the heat of the battle, even if as obvious as it may be. Mir Hamza was quite impressive in his interview this morning, Shah Faisal, and he was absolutely spot on when he said that you need to hunt in pairs, and when a particular bowler is having a bad day, the other one puts his hand up, covers for him. Homing in on those stumps, fine deflection from Ahmed Safi Abdullah. Yeah, I thought he spoke very nicely, and he seems to be comes across as a very intelligent operator. And like you said, when he mentioned that as a unit they really complement each other quite well, and they realize that there are moments when one bowler is slightly out of rhythm and the others can come in and put their hand up and help the skipper, or at the same time against a certain batsman they work together on a plan where one exerts the pressure and the other goes for the jugular. It was Ali Hamza and Sohail Khan in the previous match, and in first innings, if you can just say that Ali Hamza was having a difficult time, Tabish Khan came in to help. Bowled well with Sohail Khan. That's how good units work. And when the team needed, even though you can say the shot was not very much on from Rizwan Hussain, but Hamza, who bowled a lackluster spell this morning, came back with the goods. As a captain, you got to be very lucky to have bowlers like them who raise to the situation, to the occasion, and produce the goods for the team. On the heels, this is poor. Sohail Khan was found wanting there, and Ali Shan capitalized, making him pay. Got the extra run. Caught napping, as they say, Sohail Khan at the point boundary. Yeah, he is also disappointed with that effort. Happens. Need to cover it up now. Big lunch, maybe. Another short pitch delivery. That shot wasn't on because the angle was always taking the ball away from him. He's trying to drag it because he's showing him that mid-wicket gap. No footwork. Well directed bouncer, I would say. Around that off stump, and the height was perfect. You need to get that ball above that eye line of the batter, that he is not in control of that pull shot. Now that gap at mid-wicket has been plugged. Khurram Manzoor came out of the slips. This is a slog. This is very indiscriminate from Ali Shan. He's batted beautifully up to now, but that dismissal of Rizwan Hussain has really shaken him up. Somebody needs to talk to Ali Shan. Put up a good fight so far. Why not? Why not give it their all and take this match to the wire? Why throw things away? I'm thinking he'll be best advised to just bat the way he was normally, regardless of who is with him on the other end. Could worry less
about what's happening at the other end at this stage. Good defensive block to finish off the over. 177 for 7. Especially if you think Ahmed Safi Abdullah, he's a decent bat. Yes, he's got a best of 83. Has a first class 50. Definitely would expect a bit more respect from his teammate. The way he started batting ever since he's come in. Don't want to speak too soon, but if Ahmed Safi Abdullah gets 83 today, Central Punjab will win. It's quite a long shot at this stage though. Abrar also hasn't been able to turn that ball as prodigiously as he did on that second day. For some reason, either he's bowling too full. I'll pick Amar's brains on that. What could be the reason? I guess maybe trying a bit too hard. Trying too many things. Went for that expensive sweep shot. Field is well set though. Could it be one of the reasons that he's expected to do too much too soon? Yeah, that is most probably the case. But I think through the course of the day, this is the first time he's got that sort of a feel that put pressure on the batter. Down the wicket, mid on and mid off are up, and it covers the fence easily. Ali Shan is continuing with his aggressive approach, taking Abrar on. Well, nothing that should worry. Look at that shot, full of risk. Not even got to the pitch of that ball. Could have gone anywhere. And this exactly brings me to the point where you said you wouldn't mind having long on and long off back. That will block off that shot as well, because if he decides to charge Abrar, he has to be very, very certain that it has to be a clean hit, because then he won't have any opportunity to make a mistake. None for 68 for Abrar in 17, 184 for 7. Going back to that interview from Mir Hamza, he's mentioning about the fast bowlers, but I think it applies to all the bowlers. He said, when you are relaxed, you enjoy your bowling more, and then the rewards also come. But you patient and be relaxed. That's when we're talking about Abrar not having an effect. Probably he wasn't patient enough, he wasn't relaxed enough for the fields he was given, and he didn't produce his best today. There's no doubt about it. Another quick run. Too easy for Safi once again. Given that single very early on in the over. Not good cricket by Sindh. Yeah, that's sloppy to give away single to Ahmed Safi Abdullah, because you cannot underestimate him. That best of 83. Now viewers must also remember that he put a big contribution for Islamabad United in one of the PSL games with Mohammad Musa against Lahore Qalandars, and they came out of nowhere to win that contest too. This is bad bowling from Mir Hamza, offline.
taken full advantage. This contest is not over yet. Yes, and it will go to the wire if Sindh do not change their approach very quickly. You have to keep in mind that if you look at the whole session, there's hardly anything they've done right. It has been mistakes made by the Central Punjab batters, the 2 wickets that have fallen, that have just, kept them in the game. Slow delivery in the air. Will it clear the infield? Yes, it does. Fawad Alam will make the save. Ali Shan got deceived on that slow delivery, but made enough contact to take it over the head of Fawad. It's hectic stuff. Hustle and bustle. Shah Faisal, do you think it would be right to say, if you talk about Sindh, that too many cooks spoil the broth? Well, I think so. I did mention this point in the first innings as well. Sometimes it's so frustrating to watch Sindh in the field, because if you look on paper, they cover all bases. They've got skillful fast bowlers, they've got a mystery spinner, they've got wealth of experience on the field. What is your take on the approach that when a senior player comes back from national duty, he should be handed over the captainship? I know that Fawad Alam has been captaining Sindh and Karachi for quite a while now, but he's just come back into the team. Was it Azaz Shafiq doing a good job? He had won his previous game. Why change? Yeah, he's been working with the unit throughout the season, Asad Shafiq. Fawad Alam is with national duty. He was initially present and then he had to go. Then he come back. And if you mix the equation, Sarfaraz is coming in the next game, so he would take the captaincy. I think that would have been right, because Sarfaraz is around the unit in this game. So Asad Shafiq could have carried for one more game and then hand over the reins to Sarfaraz, who's a natural leader. Well, perfectly put. Exactly what I was thinking. He's a natural captain. That is the word I was looking for. If you replace a captain, it should only be for someone who you can put in that category of a natural captain, who thinks that way, who has been doing it since, I don't know, hundreds of years. He's done it all his life, put it that way. An under-19 skipper, the world champion, his department, his regional teams, Pakistan national team, the Champions Trophy winner. He's been a winner all his life. PSL, captain through and through, Sarfaraz Ahmed. If you make a change to get him in, that makes sense. Just to make a change for the sake of it, Sindh have seen this throughout this game. They've lacked that kind of leadership, inspirational leadership, on almost all the 4 days. Sindh had that magnificent session last night that would probably still be enough to get them over the line in this game. That once again shot, plenty of time for Ahmed Safi Abdullah to rock back onto that back foot. Good effort from Saad Khan, will prevent the boundary, but valuable runs. Once again that gap for the new batter to exploit and get off strike. Yeah, a bit of width provided. Very nicely guided it to that vacant area.
had to take a very good effort in the end to prevent that boundary. Mid on, mid off, still up. Despite that hit on the last delivery. This was a slider from Abrar. Hasn't got that zip off the wicket today. But in different line and length, in different field placings, it's really bamboozled Abrar himself instead of him bamboozling the batters. Those figures of none for 71 in almost 18 overs. He's expected to do better. He's not looking himself. He's not that bubbly, sparkly character that he is. Even after this delivery, he's just thinking about what happened. 50 gone, 194 for 7. मीर हमजा बॉलिंग जारी रखेंगे, बड़ी विकेट हासिल की। शॉर्ट पिच डिलीवरीज का प्लान लग रहा है लंच के बाद से। पहले ओवर में हमने देखा बहुत अच्छे तरीके से सेटअप करके रिजवान हुसैन की बड़ी विकेट हासिल की। मेरे साथ फरहान निसार मौजूद हैं। फरहान, 113 रन दूर, यहां से क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है सेंट्रल की? सर्वाइवल मोड या अटैक मोड? देखिए, बचाव का तो रास्ता कोई भी नहीं है। अच्छा ये बाउंसर था, मीर हमजा ने लंच के बाद अच्छी बॉलिंग की है और ये मैच हर लम्हा हर सेशन में अपना रुख बदलता रहा है। दूसरे दिन जब खेल ख़त्म हुआ तो सेंट्रल आगे था, कल सिंध की टीम का टॉप हैंड था, लेकिन आज बड़ी अच्छी बैटिंग की है सेंट्रल पंजाब ने। अच्छे तरीके से सिंगल हासिल किया यहाँ पे अहमद सफ़ी अब्दुल्ला ने। और यहाँ पे शायद अब सेंट्रल पंजाब ये सोच रहा होगा कि काश वो 5 विकेट्स ना गवाई होती कल 14 ओवर्स के खेल में, तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी। क्योंकि ये पिच अच्छी है बैटिंग करने के लिए, बॉल अच्छे तरीके से बल्ले पे आ रहा है, ज़्यादा कुछ सी मूवमेंट भी नहीं मिल रही है बॉलर्स को, तो यहाँ पे थोड़ा मिस आउट कर गए सेंट्रल। बिल्कुल दुरुस्त का आपने, जो हिकमत अमली थी सिंध की वो इतनी बेहतर, इतनी एग्रेसिव दिखाई नहीं दी। और दूसरी तरफ जो है, जो 5 विकेटें कल गवाई हैं सेंट्रल पंजाब ने, उसने बिल्कुल बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। वरना अगर आबिद अली कुछ रन्स करते, टॉप ऑर्डर रन्स करता, तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। एक बार एज जरूर हुआ लेकिन कैरी नहीं करेगा, सॉफ्ट हैंड से खेल रहे हैं। एक अच्छी इनिंग है ये अली की जानिब से। अली शान विकेट कीपर बैटर हैं, 41 रन पर मौजूद हैं, 67 बॉलों का उन्होंने सामना किया है। अच्छी कमिटेड इनिंग लग रही है, एक मकसद के तहत बैटिंग कर रहे हैं। और जैसे जैसे ये पार्टनरशिप बढ़ती चली जाएगी, 112 रन्स जब नज़र में आना शुरू हो जाएगा, जब तो मैच अच्छा हो जाएगा। और अभी सिंध का पलड़ा भारी है क्योंकि 1 विकेट दूर है, उसके बाद 2 फास्ट बॉलर्स हैं। एक बार फिर शॉर्ट डिलीवरी। ये अच्छा तेज स्पेल किया है मीर हमजा ने लंच के बाद से अभी तक, और कुछ ऐसा ही स्पेल कल किया था मोहम्मद अली ने भी। वाइड का इशारा यहाँ अंपायर की जानिब से। और ये टेक्निक बेहतर नहीं थी अली शान की, गेंद को छोड़ने की इस बार से काफ़ी ऊपर था। पहली इनिंग्स में हमने देखा था कि मोहम्मद साद भी इसी अंदाज से बैट को हवा में मोलक करते हुए गेंद को छोड़ा था और वो गेंद उनके बल्ले को टकराता हुआ विकेट कीपर के पास गया। लेकिन बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली है। इनका जो दायां बाजू है उसमें भी इन्हें तकलीफ़ है, लेकिन उसके बावजूद अपनी टीम के लिए, टीम को जीत की राह पर डालने की कोशिश कर रहे हैं अली शान जी। यहाँ से 2 ही रिजल्ट्स पॉसिबल हो सकते हैं, या तो सिंध जीतेगा या सेंट्रल जीतेगा, क्योंकि ड्रॉ के लिए बहुत ज़्यादा वक्त है इस मैच में। लंच
उसके बाद अभी घंटा भी पूरा नहीं हुआ, एक सेशन इसके बाद पूरा है। 111 रन सेंट्रल को करने हैं, 3 विकेट्स हासिल करनी है सिंध को। लेकिन एटलीस्ट अच्छी फाइट शो की है। कल हमें ऐसा लगा था शायद आज जल्दी रैप अप हो जाएंगी चीज़ें, बाय लंच शायद मैच ख़त्म भी हो जाएगा, लेकिन अच्छी फाइट शो की है रिजवान हुसैन ने। फ़हीम अशरफ ने भी अच्छी फाइट शो की थी, लेकिन ख़राब शॉट मार के आउट हो गए। उसके बाद अली शान और अब अहमद शफी अब्दुल्ला, तीनों ही बड़े कमिटेड तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। ओह, ये कहां से मिस हो गया, ये सवाल है। क्या ये विकेट के अंदर से गया है, क्या ये बहुत करीब से गया है? ये एक्शन रिप्ले बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यही शायद मीर हमजा कह रहे हैं कि बहुत ही करीबी मामला ये। मुझे तो ऐसा लगा जैसे विकेट्स के दरमियान से गुजर गया बॉल। बस ये बाल बराबर फर्क रह गया था अली, इसलिए सर पीट लिया विकेट कीपर हमजा ने। और मीर हमजा भी, आप देखें हसन और मीर हमजा दोनों सरप्राइज हुए कि ये विकेट क्यों नहीं मिली। तो किस्मत अली शान के साथ है। जी हाँ, इससे करीबी मामला हो नहीं सकता था। स्लोअर वन था, मिड विकेट की जानिब खेलना चाहते थे अली शान। एक रन लेना चाहते हैं लेकिन मना किया। अच्छी कॉल यहाँ पे अहमद शफी अब्दुल्ला की जानिब से, क्योंकि रन आउट नहीं चाहिए इस मौके पे। नाराजगी नहीं बनती है क्योंकि रन नहीं मौजूद था। 51 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो गया। 196 पे 7 सेंट्रल पंजाब। एक मरतबा फिर देखिए, बहुत ही जोरदार अंदाज से बैट को घुमाया, इन स्विंग हुआ, बॉल स्लो गेंद था और बिल्कुल करीब से होता हुआ ये गुजर गया विकेटों के पास से। अच्छी बॉलिंग की है मीर हमजा ने इस दूसरे सेशन में। 111 रन अभी भी बहुत ज़्यादा रन हैं अगर हम सूरत हाल को देखें। 3 विकेटें बाकी हैं और अली शान रास्ते में रुकावट बने हुए हैं सिंध के। और रिजवान की जो विकेट है उसने एक मरतबा फिर सिंध के जो हौसले हैं वो बुलंद कर दिए हैं, क्योंकि पूरी मुकम्मल हुक्मरानी के साथ बैटिंग की है रिजवान ने इस इनिंग्स में। सबसे अच्छी क्वालिटी रही है कि रन्स की तलाश में रहे। पहले सेशन में भी हमने देखा रिजवान हुसैन और फ़हीम अशरफ जब बैटिंग कर रहे थे रन्स की तलाश में रहे। और ये एक अच्छा तरीका होता है कि जब आपने डिफेंस करना हो तो आप अटैक कर दीजिए, इससे आपके ओपोनेंट्स ही बैकफुट पे चले जाते हैं। और हमने देखा था कि पहले लंच से पहले सेशन में जब फ़हीम अशरफ और रिजवान हुसैन खेल रहे थे तो फील्डिंग खुल गई थी, सिंगल्स अवेलेबल थे, जब तक कि फ़हीम अशरफ ने ख़राब शॉट नहीं मारा और अपनी विकेट गिफ्ट नहीं की। 12 ओवर्स में 39 रन देकर 4 विकेट्स हासिल किए हैं सोहेल खान ने। एक शानदार परफॉर्मर, एक शानदार क्रिकेटर। ज़्यादा कुछ मुश्किलात पैदा हो नहीं रही हैं बैटर्स के लिए। अच्छी इवन हाइट पे बॉल आ रहा है, ना सीम हो रहा है ना स्विंग हो रहा है। रिवर्स स्विंग भी अभी हमें देखने को नहीं मिला है, इसीलिए शायद ज़्यादा दुख हो रहा होगा सेंट्रल के टॉप 5 बैटर्स को जिन्होंने कल अपनी विकेट्स गंवाई। इमरान डोगर अनलकी रहे कि बॉल लो रह गया। आबिद अली ने ख़राब शॉट खेला। अली ज़रियाब भी अनलकी रहे, बॉल थोड़ा नीचे रह गया। मोहम्मद साद को भी बॉल अच्छा हो गया। सैफ बदर का रन आउट बहुत ऑकवर्ड था। ऐसे मौके पे जब आपको वक्त गुजारना है, दिन गुजारना है, ऐसे मौके पे रन आउट हो जाना ये एक बहुत ख़राब क्रिकेट है। और अगर शायद थोड़ा सेंसिबली खेले होते तो ये मैच आसानी से जीत भी सकते थे सेंट्रल। चौथे दिन यहाँ रन्स होते हैं, पिछले मैच में हमने देखा। और इस वक्त जो गेंद की साख्त है उसमें कुछ तब्दीली हुई है। वलीद याकूब इसका मुआयना कर रहे हैं। अगर हम करीब से देख सकें जो सीम है वो एक जगह से उखड़ गई है। और आपने दुरुस्त का पिछले मैच में जब खैबर पख्तूनख्वा ने विकेटें नहीं गंवाई तीसरे दिन और चौथे दिन बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि चौथे दिन ये बहुत ही बैटिंग के लिए साजगार हो जाती है ये विकेट स्टेट बैंक की। और अभी भी सेंट्रल पंजाब की टीम ताकुब में है। जब आप बैटिंग कार्ड देखते हैं, बैटिंग की जो स्ट्रेंथ देखते हैं सेंट्रल पंजाब की, आबिद अली, इमरान डोगर, रिजवान हुसैन, अली ज़रियाब, मोहम्मद साद, सैफ बदर, फ़हीम अशरफ, इवन अली शान, ये बहुत ही स्ट्रेंथ वाली बैटिंग साइड है। बहुत स्किल और बहुत टैलेंट मौजूद है और उनसे ऐसी तवक्कुआत की नहीं जा सकती थी कि 14 ओवर्स में आपके 5 खिलाड़ी आउट हो जाएंगे। जब आपके पास होप है रन्स करने की, आप चेस करने जा रहे हैं और आपको पता भी है चौथे दिन बैटिंग के लिए चीज़ें सिचुएशन थोड़ा आसान हो जाती है, तो ख़राब क्रिकेट।
अली फ़र्क सिर्फ अप्रोच का है। कल हमने जो अप्रोच देखी थी सेंट्रल पंजाब की, आज उससे बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ वो दिखाई दिए और पॉजिटिव क्रिकेट खेली रिजवान और फ़हीम अशरफ ने। और कल बिल्कुल बॉलिंग में भी बहुत ही ज़्यादा दिफाई हिकमत अमली दिखाई दी सेंट्रल पंजाब की। और फिर जब बैटिंग में आए तो शायद ड्रेसिंग रूम से ही सोच कर आए थे कि उन्हें बगैर कुछ स्कोर किए वापस जाना है। जी ऐसा लगा जैसे आखिरी सेशन में थका दिया, ड्रेन आउट कर दिया सिंध के बैटर्स ने, क्योंकि बहुत लंबी बैटिंग की, एंड तक खेलते रहे। इवन ताबिश खान भी बड़े हिट्स मारते रहे, ब्लॉक करते रहे, बैटिंग करते रहे जितना जिनका दिल किया। तो उससे एक ये हुआ कि मेंटली तौर पे बहुत थक गए सेंट्रल के बैटर्स, और मेंटली तौर पे शायद मैच हार गए थे कल ही। लेकिन इस लेवल की क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, बिलीव रखना चाहिए। बड़ा शॉट मारे हैं सीधा, लेकिन टाइमिंग मौजूद नहीं थी। यहाँ पे शॉट सिलेक्शन जो है फरहान, वो बहुत ज़रूरी है। आपको पिक करना होगा कौन सा शॉट मारना है, कौन सा ब्लॉक करना है, क्योंकि टैलेंट दोनों पे मौजूद है, मार सकते हैं, बट सिलेक्शन सही होनी चाहिए। इस बॉल में शॉट में बिल्कुल भी टाइमिंग नहीं थी और खुशकिस्मत रहे कि सुहेल खान के सर के ऊपर से गया। और शॉट सिलेक्शन के साथ साथ जो रोल आपको दिया गया उससे बाहर नहीं आना। ये वो वक्त है कि जो किरदार आपको दिया गया, जो काम आपके ज़िम्मा लगाया गया, वही आपने करना, इससे अलहदा कुछ नहीं करना। इसे अच्छे तरीके से गाइड कर दिया थर्ड की जानिब, एक रन हासिल किया। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे रोल्स कैसे होंगे? क्या अली शान का रोल होगा रन्स करना, और अहमद का होगा कि विकेट को ऑक्यूपाई करना? अहमद सफ़ी का रोल यही है जो पिछली गेंद पर इन्होंने निभाया है कि जहाँ पर उन्हें रन्स का मौका मिले एक रन लें, एहतियात करें, विकेट ना गंवाएं। क्योंकि अगर अब अहमद सफ़ी 83 रन की इनिंग खेल चुके हैं अपने फर्स्ट क्लास कैरियर में, लेकिन इसके बाद अगर हम वकास को देखते हैं या मोहम्मद अली को देखते हैं तो शायद इतनी ज़्यादा उम्मीदें ना हो सेंट्रल को। तो ये पेयर बहुत अहम है सेंट्रल पंजाब के लिए, और अहमद सफ़ी को अपनी अहमियत को समझना होगा यहाँ पर। जैसा आपने कहा, अपने रोल को समझना होगा कि रोल उनका ये है कि आपने खड़े रहना है और स्ट्राइक मैक्सिमम अली शान को देना है, ये रोल होना चाहिए। वो करते हुए अगर आप आउट हो जाएं तो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन अगर आप विकेट गंवाएंगे बड़ी हिट के मारने के चक्कर में, तो कोच और मैनेजमेंट खुश नहीं होगी आपसे। क्योंकि अभी अली शान बहुत शानदार इनिंग खेल रहे हैं, बहुत कमिटेड इनिंग है, टेक्निकली करेक्ट बैटिंग कर रहे हैं, टेम्परामेंट दिखा रहे हैं, पेशेंस दिखा रहे हैं, और एक मकसद के तहत बैटिंग कर रहे हैं। और जब ये फरहान स्कोर 110 से कम होकर डबल फिगर्स में आ जाएगा तो वापसी की गिनती शुरू होगी, तब बहुत इंटरेस्टिंग होगा गेम। और थ्योरी जो है अली वही पुरानी है और सादा है कि विकेट पर रहेंगे तो रन्स मिलेंगे, और इस वक्त इतना कम वक्त नहीं बचा कि खुद से स्ट्रोक खेलें, रन्स पर जाएं। अगर विकेट पर मौजूद रहेंगे तो शाम को यकीनन सेंट्रल पंजाब की टीम फातेह बनकर मैदान से बाहर आएगी। यहाँ से ड्रॉ तो हो नहीं सकता है, किसी एक तरफ तो जाएगा ये मैच। देखता है मेंटल टफनेस कौन दिखाती है, कौन सी टीम अपने नर्व्स पे काबू रखेगी। क्योंकि अब यहाँ से जब डबल फिगर्स में दाखिल हो जाता है स्कोर, तब कुछ भी हो सकता है। ऑल्दो 100 रन भी काफ़ी होते हैं, लेकिन प्रेशर जो है वो थोड़ा रिलीज़ हो जाएगा बैटर से, फिर वो सोचना शुरू हो जाएंगे कि हम ये मैच जीत सकते हैं। क्योंकि अभी भी सिंध की टीम जो है बहुत आगे है इस मैच में, उन्हें सिर्फ 3 अच्छी गेंदों का इंतज़ार है और सेंट्रल को 100 से ज़ायद रन चाहिए। लेकिन सिंध की टीम को अपने असाब पर काबू रखना होगा, अपनी फील्ड सेटिंग ऐसी रखनी होगी कि ज़्यादा जल्दी विकेट हासिल करें। यूँ 52 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं, 197 पर सेंट्रल पंजाब 110 रन की तलाश में। एक 110 रन और मजीद चाहिए सेंट्रल पंजाब को ये मैच जीतने के लिए। एक हिस्टोरिक चीज हो जाएगा अगर ये 110 रन कर पाते हैं। ये शानदार शॉट रहा,
कलाइयों की मदद से, लेकिन अनलकी रहे, प्लेसमेंट सही ढूंढ नहीं पाए। फील्डर वहाँ मौजूद थे। स्किल तो मौजूद है, दोनों तरफ स्किल मौजूद है, दोनों बैटर्स में। टेम्परामेंट भी देखना होगा कि कैसे इन 109 रन तक पहुंचते हैं। ये लेग स्टंप पर गिरा हुआ गेंद था और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सलाहियत मौजूद है। और अभी पिछले ओवर में हमने बात की कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 83 रन की इनिंग्स भी खेल चुके हैं अहमद सफ़ी। और इस मैदान पर अली 2 मरतबा टीम ने 300 से ज़ायद रन चेज़ किए हैं और 370 रन सिंध की इसी टीम के खिलाफ चेज़ हुए थे पिछले सीज़न में। लगभग यही बॉलिंग लाइन थी सिंध की। इस स्ट्रेटजी को समझना होगा मीर हमजा की, क्योंकि लंच के बाद से जब से आए हैं सिर्फ शॉर्ट पिच डिलीवरीज पे ही उन्होंने प्लान किया हुआ है। शायद अपनी लेंथ को थोड़ा आगे करना होगा, चांस देना होगा अपने आप को आउट करने का, क्योंकि पिछला बॉल तो आसानी से संभाला जा रहा है बैटर्स के लिए। ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा है पिछला बॉल, ज़्यादा पेस मौजूद नहीं है। तो क्या सोच हो सकती है इस शॉर्ट पिच स्पेल के पीछे? क्योंकि दोनों विकेटें जो पीछे बॉलिंग करके हासिल की हैं सिंध की टीम ने आज के दिन, और ऑन साइड पर फील्डर्स भी मौजूद हैं उसी पुल शॉट के लिए, और धोनी वो शॉट खेल भी रहे हैं। अली शान, जिन्हें उनके साथी धोनी कहते हैं प्यार से। जी आपके फ्लो में भी धोनी ही चल रहा है, आपके जहन में भी धोनी ही है। अभी तो ऐसी ही इनिंग खेल रहे हैं, लेकिन असल धोनी ये तब बनेंगे जब ये मैच जिताएंगे यहाँ से। उनकी ये क्वालिटी थी। अच्छा, तीसरे नंबर पर अगर आप देखें स्टेट बैंक कॉम्प्लेक्स में 370 रन सर्दर्न पंजाब ने चेस किए थे 5 विकेट्स पे, और यहाँ पे भी अगर ये मैच यहाँ से जीते तो 5 आखिरी विकेट्स पे जीतेंगे। तो वो एक शानदार कारकर्दगी हो जाएगी अगर यहाँ से सेंट्रल पंजाब ये रन चेस कर पाते हैं। 2 बार 303 रन भी चेज हुए हैं यहाँ पे। हवा में खेले, फील्डर मौजूद हो। एक ठप्पा पड़ने के बाद फवाद आलम के हाथ में बॉल गया। यहां से अपने रोल से चूक रहे हैं अहमद सफ़ी अब्दुल्ला। ये रोल नहीं है इनका। रन्स अली शान को बनाने हैं, आपको सिर्फ साथ देना है, खड़े रहना है। यही समझा रहे हैं शायद अली शान के ब्लॉक खेल जाइए, बहुत टाइम है इस मैच में। और आज इनके बल्ले से गेंद ठीक से टाइम नहीं हो रहा, और यहाँ अच्छा हुआ कि ठीक से टाइम नहीं हुआ, वरना ये सीधा फवाद आलम के हाथों में ये गेंद जाता। एक और अच्छा गेंद मीर हमजा का, दबाव बढ़ा रहे हैं अहमद सफ़ी पर। अच्छा, क्योंकि आगे वाली लेंथ से शायद कुछ हो नहीं पा रहा है, तो इस लेंथ पे ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं, गलती करने पे मजबूर कर रहे हैं बैटर को कि बड़ी हिट मारें। 2 फील्डर्स मौजूद हैं, डीप स्क्वायर लेग पे भी, डीप फाइन लेग पे भी। हमने देखा रिजवान हुसैन की विकेट भी ऐसे ही हासिल की। फ़हीम अशरफ की विकेट ऑल दो थोड़ा लेंथ थोड़ा नीचे था, उसे हाफ हार्टेड शॉट खेले थे फ़हीम अशरफ, अपनी विकेट गवा बैठे। आगे से कुछ नहीं हुआ है। ये बेहतर क्रिकेट है। इस क्रिकेट को ज़्यादा खेलना होगा, इस तरह की क्रिकेट को। अहमद सफ़ी अब्दुल्ला को 53 ओवर्स का खेल इख्तिताम पजीर हुआ। 199 पे 7 सेंट्रल पंजाब। दस रन पर मौजूद है अहमद सफ़ी अब्दुल्ला। 42 रन बनाए हैं अली शान ने। बहुत शानदार इनिंग रही है ये। और जैसे अभी आप भी जिक्र कर रहे थे, हम भी उनको यहाँ से जब आवाज़ें सुनते हुए लगाते हुए टीममेट्स को सुनते हैं तो वो धोनी धोनी का जिक्र करते हैं बहुत। तो धोनी की तो क्वालिटी थी कि वो अपनी टीम को मैच जितवाते थे, वो मैच फिनिशर थे वो। तो क्या अली शान धोनी की तरह मैच फिनिशर हो सकते हैं सेंट्रल पंजाब के लिए? अगर तो हो गए तो आज के बाद मैं भी इनको धोनी ही कहूँगा। हर जगह पे जहाँ पे भी जिक्र होगा मैं इनको धोनी ही कहूँगा, अगर यहाँ से सेंट्रल पंजाब को वो मैच जिता पाएँ। बैटिंग उसी अंदाज से करते हैं और क्रिकेट के हलकों में इसी नाम से जाने जाते हैं। ख़ास तौर पर फैसलाबाद की जो क्लब क्रिकेट है उसमें बहुत ज़्यादा रन्स करते हैं और बैटिंग की सलाहियत इनमें मौजूद है, जिसकी झलक यहाँ दिखाई है स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर। अली शान ने शानदार इनिंग्स खेलना होगी यहाँ पर।
अभी आधा काम हुआ, इनका आधा काम बाकी है। या शायद आधे से भी ज़्यादा। फरहान 107 रन दूर हैं, सिर्फ 3 विकेट्स हैं, टेल के साथ खेल रहे हैं। 200 रन मुकम्मल हो गए सेंट्रल पंजाब के। और यही कैरेक्टर शो करती है, जब आप टेल्स के साथ खेल के रन्स करते हैं तो निखार आता है आपकी बैटिंग में। एक बार फिर यहाँ पे सोहेल खान का बाउंसर। शायद यही पार्ट ऑफ प्लान है सिंध की जानिब से कि शॉर्ट पिच पे आउट किया जाए, डरा के आउट किया जाए। कमिटेड हैं दोनों बैटर्स। बहुत ज़ोर से गेंद को पटका था, लेकिन ये बेज़रर बाउंसर था जिसे जाने दिया अहमद सफ़ी ने। और 55 पर 5 विकेटें गंवाने के बाद 200 रन तक पहुंच जाना, ये भी एक बड़ी कामयाबी है। और ये इस बात का सबूत है कि जो सिंध के मुख्तलिफ प्लान्स थे उनमें नाकामी का सामना करना पड़ा, जिसमें एक प्लान अबरार अहमद का था जो बिल्कुल ही बेज़रर दिखाई दिए हैं इस विकेट पर। जहाँ दाद देनी होगी यहाँ पे सेंट्रल के बैटर्स को। रिजवान हुसैन, अली शान, अहमद सफ़ी अब्दुल्ला बहुत कमिटेड तरीके से बैटिंग की है और मकसद के तहत बैटिंग की है। और यही फर्स्ट क्लास क्रिकेट का हुस्न है, क्योंकि बड़ी साइड है सेंट्रल पंजाब और फाइट के बगैर मैच हार जाना ये शायद कबूल ना होता उनको। कल हमने देखा 14 ओवर्स में ही 5 विकेट्स गंवा दी, लेकिन उसके बाद से जो कमबैक रहा है आज सुबह से वो शानदार रहा है। दाद देनी होगी पूरी सेंट्रल की साइड को। और जिस तरीके से एक दूसरे को बैक करते हैं सेंट्रल पंजाब, एक बहुत अच्छा ग्रुप है, बहुत कूल एंड काम कोचेस हैं। आबिद अली मौजूद हैं, एक सीनियर प्लेयर मौजूद हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, टीम को इकट्ठा रखते हैं। ये क्वालिटी है आबिद अली में। और आज के दिन आबिद अली के टेस्ट करियर का आगाज़ हुआ था और आज के दिन इन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू पर सेंचुरी स्कोर की श्रीलंका के ख़िलाफ़ रावलपिंडी के मैदान में। वो मैच कवर करने का भी इत्तेफाक हुआ और अपनी आंखों से आबिद अली को जब सेंचुरी स्कोर करते देखा तो खुशी इसलिए भी ज़्यादा हुई कि 105 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने के बाद उन्हें पाकिस्तान की टेस्ट कैप मिली थी और उस मौके को दोनों हाथों से थामा आबिद अली ने और अभी तक पाकिस्तान की बैटिंग लाइन का अहम सतून है। जी हाँ फरहान, जब आप सब्र दिखाते हैं, सब्र का दामन थामे रखते हैं तो सिला तो आपको मिलता है। और इसकी एग्जांपल हमने देखी, आबिद अली एक नाम है, ताबिश खान एक नाम है। क्योंकि आसान नहीं होता है फरहान इतने अरसा क्रिकेट खेलना, परफॉर्म करना और बगैर रिवॉर्ड के अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत मुश्किल होता है। और इसलिए मैं दाद देता हूँ ताबिश खान को भी, मीर हमजा को, सोहेल खान को। ये वैसे ऐसे प्लेयर्स हैं जो बड़ा नाम है, जिन्होंने बहुत सारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है और गिव अप नहीं किया है। और यही कैरेक्टर शो करता है इंसान का। सेवन ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ, 200 पे 7 सेंट्रल पंजाब। इमरान डोगर, अली ज़रियाब, मोहम्मद साद, सैफ बदर यंगस्टर्स खेल रहे थे इस मैच में। ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए एक ऐसे वक्त पे जहाँ पे सेंट्रल को ज़रूरत थी इन यंगस्टर्स को स्टेप अप करने की। क्योंकि ऐसी इनिंग्स चाहिए होती हैं प्लेयर्स को कैरेक्टर शो करने के लिए। आपको अगर नाम बनाना है, रिस्पेक्ट बनानी है, तो इन कंडीशंस में, इन सिचुएशंस में रन्स करने होते हैं। अभी आपने आबिद अली का जिक्र किया और उसके फ़ौरन बाद नौजवान खिलाड़ियों का नाम लिया, तो ये क्रिकेट सीखने से आती है, खेलने से आती है। जैसा कि आबिद अली की हमने बात की, ताबिश खान की बात की, फ़वाद आलम इस मैच में मौजूद हैं, खुर्रम मंजूर हैं, असद शफीक हैं। और इस मैच में जिस खिलाड़ी ने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है वो 35 बरस से ज़ायद के फास्ट बॉलर हैं सोहेल खान, जिन्होंने दोनों इनिंग्स में निफ्ट सेंचुरी भी स्कोर की। तो नौजवान खिलाड़ियों को इनसे सीखना होगा। ताबिश खान स्क्रीन पर 600 से ज़ायद विकेट्स हासिल कर चुके हैं। तो ये खेल तो खेल कर ही आएगा और वक्त के साथ आएगा। सब्र करना होगा, टेम्परामेंट दिखाना होगा और अपनी सलाहियतों को बेहतर करना होगा। ओ एक बार फिर बड़ा हेड शॉट मारना चाहते थे, लकी रहे इस बार फिर के बॉल विकेट्स को नहीं लगी। इनफैक्ट 2 रन्स मिल जाएंगे बाय के। कोई मौका नहीं हसन के लिए भी इस बॉल को रोकना। ऑकवर्ड बाउंस हो गया उनके सामने। थोड़ी इच्छीनेस नजर आ रही है, थोड़ी बेसब्री जिसे कहते हैं वो नजर आ रही है हमें अली शान में। जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि अहमद सफ़ी अब्दुल्ला बेहतर बैटिंग कर रहे हैं। इतना बुरा डिफेंस नहीं है इनका कि आपको इस तरह की शॉट्स मारने की एकदम से जरूरत पड़ जाए।
वक्त गुजारिए, मजे लीजिए, बैटिंग कीजिए, बॉलर्स को आउट करने दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि अभी वक्त इतना ज़्यादा है कि ये रन्स बड़ी आसानी से हो सकते हैं अगर ये दोनों बैट्समैन क्रीज पर रहेंगे, और इस एंड से गेंद लो रहता है, ये बात भी अली शान को अपने ज़हन में रखना होगी। ये अच्छी क्रिकेट है, गाइड कर दिया पॉइंट की जानिब, एक ही रन बन पाएगा। तो अब मजीद 104 रन की जरूरत है सेंट्रल पंजाब को ये मैच जीतने के लिए। सुहेल खान का जिक्र आप कर रहे थे, बहुत ही शानदार कमिटेड क्रिकेटर हैं, नेवर गिव अप की अगर हम बात करें तो अभी बहुत सारे नाम आपने लिए, इन सब की अगर लिस्ट बनाई जाए तो नेवर गिव अप टीम बन जाती है एक। ताबिश खान उसके कप्तान होंगे, फवाद आलम, आबिद अली, मीर हमजा, सुहेल खान, ये सब वैसे प्लेयर हैं जिन्होंने बहुत इंतजार किया है अपनी बारी का। दुरुस्त फरमाया आपने, और हर गेंद पर हिदायत आ रही हैं सेंट्रल पंजाब के इन बल्लेबाजों के लिए। और इस मरतबा ऊंचा शॉट खेला, कोई खतरा नहीं, यहाँ पर फील्डर्स देखते रह गए और ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन का सिग्नल अंपायर नासिर हुसैन की जानिब से। जहां जब आप ऐसे शॉट खेल सकते हैं तो फिर आपको घबराने की क्या जरूरत है। ये हम 9वें नंबर का प्लेयर इस तरह की बैटिंग कर रहा है, अहमद सफ़ी अब्दुल्ला, आगे पिच हुआ बॉल जिसे शानदार तरीके से लॉफ्ट कर दिया मिड ऑफ के ऊपर से। और इस शॉट ने काफी तसल्ली दी होगी अली शान को भी, जो कि हमें नजर आ रहा था कि थोड़ा सा घबराए हुए लग रहे हैं, लेकिन इस शॉट के बाद उनको कॉन्फिडेंस दिखाना होगा अहमद सफ़ी अब्दुल्ला की एबिलिटीज पे। यहाँ याद रखना चाहिए 83 रन की कैरियर बेस्ट इनिंग्स खेली हुई है अहमद सफ़ी ने। ये बाउंसर किए, इसको खेलने चले गए, ये ख़राब क्रिकेट है, ये नहीं करना। पिछली गेंद पर 4 रन हासिल किए हैं और उसके बाद अब ठंडे दिमाग से स्कोर बोर्ड पर निगाह रखनी चाहिए। अब 100 रन दरकार हैं और ये अली नामुमकिन नहीं है। जी हाँ, जैसा शॉट उन्होंने इस बॉल से पहले मारा था उसके बाद तो मुझे लग रहा है कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सिर्फ ऐसी बॉल्स को छोड़ना है। क्योंकि ज़्यादा जो अगर हम प्लान देखें सिंध की बॉलिंग का, आज वो शॉर्ट पिच रहा है आफ्टर लंच स्पेशली, और दोनों विकेट्स जो हासिल किए हैं वो शॉर्ट पिच डिलीवरीज पे ही हासिल किए हैं। ये बेहतरीन शॉट है, बैकफुट पे पंच किया है, ताबिश खान बॉल के पीछे हैं, देखना होगा बॉल रेस जीत जाएगा। 4 रन हासिल किए इस शानदार शॉट से, प्लेसमेंट शानदार रही। और फिर मैं वही जिक्र करूंगा कि अगर आप ऐसे शॉट्स मार सकते हैं तो घबराने की क्या जरूरत है। विकेट में बिल्कुल भी जान नहीं है और मीर हमजा की रफ्तार, पीछे गिरा हुआ गेंद, भरपूर टाइम मिल गया, जहां दिल चाहा वहां इस गेंद को खेला और ताबिश खान से तो गेंद ने रेस जीतना ही थी। अब डबल फिगर्स में जो चेज करने वाले रन हैं वो आ गए हैं 96। ये बहुत कमाल की क्रिकेट है, 4 रन हासिल किए और बहुत सेंसिबल तरीके से गाइड कर दिया, थर्ड की जानिब एक और रन हासिल किया। और यही तवक्कुआत होंगी यहाँ से सेंट्रल की मैनेजमेंट की कि इसी तरीके से बैटिंग की जाए। बॉलर्स आउट आपको करें तो करें, आपको विकेट थ्रो नहीं करनी है, जैसे पहले टॉप 5 बैटर्स ने किया, विकेट थ्रो की दी, इजी विकेट, चीप विकेट्स दे दी। अपनी वैल्यू रखनी है अपनी विकेट की, मेहनत करने दीजिए, प्लान करने दीजिए, कुछ अलग करने दीजिए सिंध के बॉलर्स को। आपका काम यह है कि आपने फोकस्ड रहना है और क्रीज पे जमे रहना है और रन्स मिलते हैं। और इस पूरे मैच का अगर हम तज्जिया करते हैं अली, फवाद आलम के चेहरे की परेशानी नुमाया है। तो जो खिलाड़ी बॉलर्स की अच्छी गेंदों का निशाना बने हैं उनको उंगलियों पर गिना जा सकता है, वरना ज़्यादातर जो बल्लेबाज हैं उन्होंने ख़राब शॉट खेलकर अपनी विकेटें गंवाई हैं। सुहेल खान का भी गेंद शॉट ऑफ लेंथ था जिस पर मौका मिल गया अहमद सफ़ी को दिफाई अंदाज से पंच करने का। उन्नीस रन पर मौजूद हैं अहमद सफ़ी अब्दुल्ला, 44 रन बनाए अली शान ने। एक अच्छी पार्टनरशिप काफी उम्मीदें दे सकती है सेंट्रल पंजाब को। ओह,
एक बार फिर बड़ा शॉट मारना चाहते थे। अहमद सफ़ी अब्दुल्ला को एक रन देखना होगा। अली शान बड़े हिट मारे कि वो सीनियर बैम्बर है, लेकिन लेंथ बॉल था, आइडिया ठीक था, मिड ऑन मिड ऑफ दोनों सर्कल के अंदर है। शॉट तो ऑन है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा तो रिस्क बहुत बड़ा है, अपनी विकेट नहीं गवा सकते हैं। तो रिस्क को देखना होगा कितना बड़ा है और रिवॉर्ड कितना बड़ा है, इस चीज़ को दोनों को डिटर्मिन करना होगा। इस लेंथ से कई मरतबा बीट हो चुके हैं अहमद सफ़ी, और इसलिए शॉट खेलने के बाद अपने सर पर 2-3 मरतबा हाथ मारा, खुद से ही अपने आप को ही डांटा और दोबारा से अब फोकस होकर तैयार हैं सुहेल खान का सामना करने के लिए। ये बेहतरीन शॉट है, ये शॉट 4 रन के लिए चला जाएगा। कमाल का शॉट, ताबिश खान के लिए कोई मौका नहीं। बहुत अच्छे तरीके से टाइम किया हुआ शॉट, फोर्स्ड किया इसे, और प्लेसमेंट भी शानदार है। ये बेहतरीन बैटिंग है। एक बार फिर मैं यही कहूंगा कि जब आप ऐसे शॉट्स खेल सकते हैं तो घबराने की क्या जरूरत है फरहान। और अली मैं आपको कह चुका हूं कि इस विकेट में जान नहीं है। मीर हमजा ने भी ऐसा ही गेंद किया जिसको बाउंड्री की राह दिखाई, और इस मरतबा फिर ये पीछे गिरा हुआ गेंद था। इतना वक्त मिल गया अहमद सफ़ी को कि उन्होंने अपनी मर्जी से जहां चाहते थे वहां पर शॉट खेला, और ताबिश खान ने गिरते पड़ते भी कोशिश की लेकिन वो इस गेंद को नहीं रोक सके। और अब 91 रन दरकार हैं सेंट्रल पंजाब को जीत के लिए। ये बॉल टॉप एज, फील्डर वहां मौजूद है, देखते हैं पहुंच पाएंगे। जी नहीं, काफी दूर आ मीर हमजा से बॉल, और ये डबल एफर्ट हो गई। अच्छी फील्डिंग मीर हमजा की जानिब से, अच्छी कमिटमेंट दिखाई उन्होंने, बहुत दूर से भाग के आना हुआ उनको फाइन ले की जानिब। इस असना में 2 रन मुकम्मल कर लिए अहमद सफ़ी अब्दुल्ला और अली शान ने। ये गेंद भी उसी तरह का था जिस पर पहले बीट हुए थे, लेकिन इस मरतबा टॉप एज लगा और मीर हमजा की बहुत ही उम्दा एफर्ट। पहली कोशिश में नहीं गेंद को रोक पाए, दूसरी मरतबा फिर कोशिश की और बहुत ही उम्दा एफर्ट हम कहेंगे यहाँ पर मीर हमजा की। और अगर अब आप पिछले ओवर से बॉडी लैंग्वेज देखें सिंध के फील्डर्स की तो वो बिल्कुल गिरी हुई है, और अगर हम अपने कमेंट्री बॉक्स के साथ डगआउट देख सकें सेंट्रल पंजाब का तो वो बिल्कुल चेहरे खिल गए हैं उनके। ये शानदार शॉट है, 4 रन मिल जाएंगे। बहुत ही कमाल की बैटिंग यहां से जारी है अब अहमद सफ़ी अब्दुल्ला की जानिब से। अपनी विल पे शॉट्स मार रहे हैं क्योंकि बॉलिंग ज्यादा अच्छी हो नहीं रही है। हाफ वे बॉलिंग, हाफ लेंथ बॉलिंग, इसको जैसे चाहे जहां चाहे मार सकते हैं। गैप ढूंढा कमाल के तरीके से। इस विकेट में जो कुछ भी था वो कल मिल चुका है सिंध की टीम को। आज जो 2 विकेटें गिरी वो भी बल्लेबाजों की गलती थी, और अगर 9वें नंबर का बैट्समैन इस अंदाज से पुल और कट शॉट खेल रहा है तो इससे जान लीजिए कि इस विकेट में अब बॉलर्स के लिए शायद ही कुछ बाकी रह गया हो। जी हाँ, बिलीव आ गया है सेंट्रल पंजाब के डगआउट में, एक डिफरेंट एनर्जी आ गई है इन बाउंड्रीज के बाद। आप देख सकते हैं कि चहलकदमी हो रही है, बातें हो रही हैं। अब्दुल रज़ाक भी थोड़ा टेंशन में है क्योंकि अभी टेंशन जायज़ है, 85 रन दूर हैं। यहाँ से आसान नहीं होना है, इजी नहीं होना है, ढीले नहीं पड़ना है, लड़ते रहना है, यही यहाँ से रोल होना चाहिए दोनों बैटर्स के लिए। ये बेहतरीन क्रिकेट है, 2 बाउंड्रीज हासिल की, अगला बॉल को रिस्पेक्ट दी और डिफेंड किया। 56 ओवर्स का खेल इख्तिताम पजीर हुआ 222 पे 7। और इसके साथ ही यहाँ पे प्लेयर्स के लिए पानी का वक्फा है।
Wow, what an entertaining day's cricket so far. Who would have thought when we turned up to the ground this morning that it's going to get that close. Sindh under pressure for once. The partnership, 50 runs for this 8th wicket. Ahmed Safi Abdullah and Ali Shan. That is after a 60-run partnership for the 7th wicket between Rizwan Hussain and Ali Shan. In different tactics from Sindh. Just turn up at the ground and think that you'll walk over the opposition. Gone are the days. This new domestic structure, the strength and depth of teams is such that they're never going to give up. There are no pushovers here. And if you think like that, then you're going to have to pay the ultimate price. It's not too late just yet for Sindh, but definitely they must be feeling some pressure. Any pressure on Amr Said, who's joined me in the comm box? Welcome along, Amr. Thank you very much, Shah Faisal. Well, from a cricket point of view, it's a bit disappointing. Not only as a Sindh fan, but overall cricket played by the fielding side has been poor. The attitude with which they came. Abrar is back into the attack. Ali Shan has played a wonderful knock. He's on 45. Attitude with which they came on the field this morning showed that they were too relaxed. They thought it would be easy. They would just walk over the rest of the 5 batsmen and go home, most probably at the stroke of lunch or just maybe after lunch. Strong blow, Ahmed Safi putting his body on the line was Khurram Manzoor. Excellent fielding. Took one for the team, the big man. Nice flighted delivery, but Ahmed Safi Abdullah prepared to take the challenge. Big shout, still appealing, and the finger has gone up. Nasir Hussain took his time, but it was on the cards, and it's that man Abrar who has given Sindh the breakthrough that they desperately needed. Well, Abrar is the man, and very, very poor cricket from Ahmed Safi. No need. They were on top, cruising in fact. Look at that. Played a sweep, pitched on middle stump and plumb in front. That ball would have hit middle stump. But, that is what a break can do to you. Your concentration. You've got to get yourself together again. Ahmed Safi Abdullah out for 29. 223 for 8. Sindh. Waqas Maqsood is the new man in. This game can change very, very quickly. Central Punjab had worked very, very hard this morning to get themselves into that position where Sindh was sweating. But then poor cricket from Ahmed Safi Abdullah, chancing his arm once too many times and perishes. I was about to say that Sindh are now lacking belief that they can get the rest of the batsmen out. And as soon as I thought of saying that, Ahmed Safi Abdullah got himself out. And all of a sudden, Abrar will weave his magic. Look at that. That wasn't on. Not necessary. Just second delivery from Abrar. Good line, good length. And just an indiscriminate slog from Ahmed Safi Abdullah. You're right, Amr. Sindh were looking flat. Going into that drinks break, you could clearly tell that the shoulders were slumping. There was very little noise from behind the stumps. But now it has all changed within a blink of an eye.
Two slips, a short leg. Waqas Maqsood. Does he have any pedigree with the bat? Can he hang in there with Ali Shan? Waqas Maqsood chancing his arm, and he got a solid connection straight down the ground. Central Punjab wouldn't go down without a fight. Successful over though from Abrar. Waqas Maqsood is letting Abrar know that he's still in the contest. Be interesting to see what Ali Shan's approach will be. Well, they have been taking a lot of unnecessary chances now, Central Punjab, ever since they started after lunch. They were in command, they were in a good position, and the wicket was doing nothing, the ball was doing nothing. Even then, a few very bad shots from Ali Shan. He just tried to throw away his wicket at times, but as we were talking, that when a set batsman gets out, the approach of the other batsman does change. He's losing partners on the from the other side, and that does play on your mind. Tabish, who's bowled 8 overs, 2 maidens, 18 for 1 so far, has been brought back. Sparingly used today, only 4 overs for Tabish. Wicket to wicket. The little bit of invariable bounce. This kiddie sort of bowler. Doesn't seem a bad choice at this stage, especially with Ali Shan also chancing his arms. Slip in a gully. You're disappointed with some of Sindh's tactics, but I think as neutral, they would have really enjoyed this game, because you cannot tell which way this is going. Well, yes, they fought well. I would say Central Punjab has fought well after they lost those 5 wickets last evening. Guided along, will look for 2. Waqas Maqsood was game, but the fielding was good. Excellent work there from Umar bin Yusuf. And now 4 deliveries at number 10 for Tabish. Central Punjab started this day with the right attitude. They were positive, and before Rizwan Hussain got out, they were also choosing the right balls. They were not throwing the bat at everything. They had it seems they had a plan, and especially while Rizwan was batting, he was severe on the trump card. Abrar did not let him settle, but after he got out, and that too on a very innocuous delivery, a soft dismissal. Things of course have again tilted in favor of Sindh, but I would say Sindh have themselves to blame to be in this position. Tabish checking Waqas's mettle by bowling short at him. That one didn't rise at all. On the second bounce to Hassan. Yeah, you're right. This, like I said earlier, one didn't think that this game will drag along for that long after the kind of performance Sindh put up last night.
but it was a two-edged sword. Sindh were lackluster and Central Punjab were very positive and attacking. And combine those two, that's the reason we're still in this game. We're still 2 wickets to go. 79 runs needed by Central Punjab. And on reflection, Central Punjab can easily call that the last hour yesterday proved to be the turning point in this game. 5 top batters losing their wickets inside 15 overs. In a case of what might have been if that didn't happen, 1 or 2 of the top order batters had survived overnight, they would have really pushed this inside. 228 for 8. Well, I can tell you one thing for sure, Faisal, that had one of the youngsters played such a shot as Ahmed Safi did in that position, I tell you, he would have been reluctant to get back to the dressing room with the seniors ready to welcome him at the door. And I don't mean to say that the seniors put extra pressure on us, but if you made a mistake, they made sure that you realize, maybe you could disagree with their method, but they made sure you realized that this is not on. And also, if you look positively, the message it sends is that you're better than this. You're way better than this. You're expected to do better things. In the air, away from that fielder at short leg. So you can take it either way. But yeah, I can visualize such situations happening in the past. Some very, very strong characters in the game. They wouldn't tolerate mistakes like these. Where does Ali Shan go from here? Abrar can really wrap it up quickly. But like I said earlier, when the wicket of Rizwan Hussain fell, Ali Shan just worry about the way how he's been playing. Continue to do that. I know he's missed a few slogs in between, but either side of those, he's really played a good knock with good choice of shots and defending when needed. He just needs to continue his part and see how long Waqas can hang in there with him. Yes, it does take a lot of experience to realize that once you've done the hard work or the difficult times have passed, one needs to change strategy, change styles, and not let the opposition off the hook. Yeah, and the reason I say this about Ali Shan, because there's plenty of runs, 79. He cannot score all of them on his own. He would need some support. For that, he would need to trust Waqas to some degree. Plays out a maiden, 228 for 8. Waqas does the right thing. Gets Ali Shan back on strike. And Sindh don't. Too many easy singles for the new batsman or the tail ender.
That's exactly what I was going to ask. Why would you let him so many gaps in the field? Do you think the only way to get him out is on a bouncer? Two fielders back on the hook shot? Even if that, why would you bowl straight at him on that onside onto his pads? Yeah, baffling at times. Looks like we think and watch a different game to what is played in there. That slog once again from Ali Shan. Very unlikely to come off against Tabish, who's a skiddy bowler, and it will keep low on that day 4 pitch. Went way under his bat. That is what we were talking about. The whole thinking process changes once a wicket falls and there's a tail ender batting with you. As you said, there are about 78 runs to go. He cannot score them all by himself. He's got to trust his partner. But with 8 wickets down, it's not easy. You know that if you give too much strike to the tail ender, which is Waqas in this case, he's more likely to make a mistake, and that is always what is going on in your mind. And thus you also are more immune to make mistakes. Yeah, the challenge is big for Ali Shan. There's no doubt about it. I mean, to do it yourself is hard enough. Then to make and plan what your partner is going to do and what you want him to do is different. Asghar, you saw on the screens, obsessed with his moustaches. Whenever he's on the screen, I see him playing with those moustaches. A tempter, a teaser outside the off stump. Tabish is very experienced. Lucky he didn't get a touch. Yeah, talking about these moustaches from Asghar. I think it's quite new. But there you go. Very obsessed. And when he knows the camera is on it, he's a bit of swag as well. Seems pretty proud of them. That short ball never arrived. Ali Shan gets a single and will keep the strike. 230 for 8. There you go. And he's telling to everyone proudly, like they say, "Much nahi to kuch nahi." There's another one. Munch ho to Asghar jaisi, warna na ho. Very proud man. We have talked a lot about the fields given to Abrar and how it has affected his bowling. But that zip that we saw on day 2 from him, we haven't seen that. That extravagant turning googlies, the leg breaks, we haven't seen them. Is it the wicket is tiring down, or what could be the reason for that? Now here, they need to put extra pressure on Waqas. Now that they've given a single to Ali Shan on the second ball of the over, the field needs to come in. You need to plug in those gaps. No easy single should be available to Waqas now.
Just a slip and a silly mid-off. Short leg fielder has disappeared again. Mid-wicket, a cover. Just a regulation field for number 10. That angle left, right arm around the wicket has also not worked for Abrar. Seems to be not completing his action from that angle. He's not getting that zip and bounce. Too short. Nicely helped around by Waqas Maqsood. He will earn a boundary. Just using the pace of Abrar. Look how disappointed he is. Waqas Maqsood still keeping the hopes alive for Central Punjab. It's pretty well played by Waqas in the end. Played it late. Angled that bat. Used the pace. Abrar, as you said, can't see that zip, which usually is a feature of his bowling. He's also bowling at a lesser pace. He usually is quick through the air. I don't know if he's fully fit yet. He's coming back from injury. He had a back niggle. This is in the air, not hit cleanly. Hurram Manzoor has spilled it. Mir Hamza rather. Sohail Khan was coming from the deep. He was calling for it. Mir Hamza was back paddling, but he still got there, got two hands to it. Wow, is this another twist in the tail? Tabish at that back of a length. Look at Mir Hamza. Comfortably got there. Easy as you like. That is not good. Can you believe that? Just tell me that's not true. Slumped in his seat was Amar Saeed. That one popped out of the hands of Mir Hamza. Could not believe it. Really, really deflating at times. Glad they're 8 wickets down, not 6. Because at that stage, this catch would really have knocked the wind out of their sails. Even now, look at the body language for Wad Alam and Mir Hamza. Well, it was altogether a really poor cricket coming together from everyone. That's not poor from Waqas Maqsood. He's rotating the strike nicely. That was a nothing ball, a nothing shot, and to top it all, what a brilliant effort that was. My God, can't believe it. Indeed. Very, very ordinary piece of cricket. Just all around. Ali Shan just one away from that 50. Lucky to be there. Very, very lucky. But in all that, the target has been reduced to 70 now. Central Punjab needs 70 to win. This game has had so many twists and turns, just beyond belief. For most part, the quality has been excellent. The last 20 minutes or so is not the case. Well, when the ball was in the air, I was about to say, I cannot believe that Shan would play such a shot. And then, Mir Hamza. Yeah, I never knew that worse was to come.
Yeah, indeed, it was an ordinary cricket, but the worst part was the catch. Or the drop catch, I should say. Look at that, head up in the air. He knew he's made a mistake, but what transpired, he didn't know. We've been all praises for Hamza. I'm afraid this was very ordinary. And he will just be hoping that this doesn't prove costly. If Central Punjab go on to win this match from here, Hamza will not be forgetting this moment for a long time, I think. सेंट्रल पंजाब अब 70 रन दूर है इस जीत के और सिंध को चाहिए सिर्फ 2 विकेट्स ये मैच जीतने के लिए। अली शान अभी तक क्रीज में मौजूद है, 49 रन बनाकर उनके साथ वकास मकसूद जिन्होंने 10 रन बनाए। अच्छी फाइट शो की है यहाँ पे सेंट्रल पंजाब की टेल एंडर्स ने। फ़हीम अशरफ 34, अली शान 49, अहमद सफ़ी अब्दुल्ला ने 29 रन बनाए और वकास मकसूद साथ मौजूद हैं 10 रन पर। यहाँ पे बड़ा शॉट खेले हवा में, फील्डर वहां मौजूद है, क्या पहुंच पाएंगे जी? ओ पहुंच के कैच छोड़ दिया खुर्रम मंजूर ने। एक अच्छी एफर्ट थी, बहुत दूर से भाग के आना हुआ था और इस असना में 2 रन मुकम्मल कर लिए वकास और अली शान ने। ये दूसरा चांस है 2 ओवर्स में जो क्रिएट हुआ है सिंध के लिए। देखिए बड़ा शॉट खेला था, क्या इस शॉट की जरूरत है अली शान की होते हुए, ये सवाल है। और मंजूर बहुत दूर से आए थे लेकिन एंड पे आके शायद अपना नजरें परे कर ली थी बॉल से। इससे पहले मीर हमजा ने कैच छोड़ा, वो तो बहुत ही आसान कैच था। इस बार खुर्रम मंजूर यहाँ तेजी से 1 रन मुकम्मल कर लिया। ये अच्छी क्रिकेट है, बहुत ही शानदार मैच, बहुत ही एक्साइटिंग मैच जारी है। मेरे साथ अली सलमान आ गए हैं। अली 67 रन दूर है, ऐसा सोचा था कि इतनी दूर मैच आ जाएगा? बहुत ही ज़बरदस्त मैच है, ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन ये ज़रूर था, हम कल से बात कर रहे हैं कि मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और जिस तरह से अली शान बैटिंग कर रहे हैं, मर्दे बहरान बने हुए सेंट्रल पंजाब के लिए। बहुत ही शानदार इनिंग खेली अली शान ने, एक विकेट कीपर बैटर की तौर पे टीम में मौजूद है। बहुत अच्छी फाइट शो की है सेंट्रल की टेल ने और अब वो चाहेंगे कि इसको जितना लंबा लेके जाया जाए, खुद से विकेट नहीं देनी है, ये रूल होना चाहिए। बिल्कुल, और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की अब तक अली शान ने और इस 223 के स्कोर पे विकेट गिरी थी। 17 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है, 1 रन के फासले पर अपनी निफ्ट सेंचुरी से दिफाई अंदाज से खेले अली शान। गुज़िश्ता हमने इनिंग में भी देखा था, काफ़ी इन्होंने मज़ाहमत दिखाई थी। बहुत ही ज़बरदस्त ये मैच है, सबसे इंटरेस्टिंग मैच होगा मैं समझता हूँ अब तक इस लेग का। ये आसान क्रिकेट है, बेहतरीन क्रिकेट है, सिंगल लेते रहना चाहिए। और इसके साथ ही अपने 50 रन मुकम्मल किए यहाँ पे अली शान ने। बहुत ही शानदार टाइमली इनिंग, बहुत ही फाइटिंग इनिंग रही है सेंट्रल पंजाब के लिए। इंतहाई शानदार अली शान। 66 रन मजीद दरकार है सेंट्रल पंजाब को इस मैच में कामयाबी के लिए। 1-1 रन के लिए दोनों टीमें स्ट्रगल करते हुए। सेंट्रल पंजाब की कोशिश है कि इन रन को हासिल किया जाए। दूसरे वकास मकसूद हैं और ये वही वकास मकसूद हैं जिनकी वजह से गुज़िश्ता कायद आज़म ट्रॉफी को शेयर करना पड़ा था। तो कब तक ये अपने नर्व्स को कंट्रोल करते हैं देखना होगा। 17 गेंदों तक तो सर्वाइव कर चुके हैं, 241 8 विकेटों के नुकसान पर। जहाँ फाइनल की आपने बात की, लास्ट ईयर ऐसी ही सिचुएशन थी, सेंट्रल ऑलमोस्ट मैच से बाहर था। कप्तान हसन अली ने इनिंग खेली उनके साथ, वकास मकसूद बहुत देर तक क्रीज पे मौजूद रहे और इन द एंड मैच को टाई कराने में कामयाब हुए अपनी टीम के लिए।
यहाँ पे भी ऐसा ही रोल निभाना होगा अली शान को और उनका साथ देना होगा वकास मकसूद को। सिंध डिसअपॉइंटेड होंगे इस एफर्ट से, क्योंकि ऐसा लगा था जैसे मैच जल्दी रैप अप कर लेंगे, लेकिन बहुत फ्लैट बॉलिंग, फील्डिंग, कप्तानी, तो तीनों ही डिसअपॉइंटेड रहे हैं तीनों एरियाज में। विकेट्स की तलाश है सिंध को, और ताबिश खान अब इस जिम्मेदारी को किस तरह पूरा करते हैं। एक ही रन पे हौसला अफजाई की जा रही है सेंट्रल पंजाब के ड्रेसिंग रूम से। बॉडी लैंग्वेज भी डिसअपॉइंटिंग रही है सिंध की जानिब से। हमने देखा कैचेस ड्रॉप हो गए, 2 कैचेस तो आखिरी 2 ओवर्स में ड्रॉप हुए, और ज्यादा एग्रेशन नजर नहीं आया। ऐसे लगा था जैसे सुबह आए थे, बहुत इजी लगे सिचुएशन को कि जल्दी आराम से 5-6 विकेट्स हासिल कर लेंगे, लेकिन उनको नहीं पता था कि इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी सेंट्रल पंजाब की जानिब से। बैक फुट पे गए, फील्डर मौजूद है मिड ऑफ पोजीशन पे, रन नहीं मिल सकेगा। फवाद आलम ने गेंद को फील्ड किया। तीसरी निफ्ट सेंचुरी अली शान की आजम ट्रॉफी में, 96 उनका कैरियर बेस्ट। फरहान निसार के स्टैट्स अपना असर दिखाते हुए। ये अच्छे तरीके से ड्राइव किया है, बहुत ही शानदार ड्राइव। 2 रन तो यकीनी मिलने चाहिए जी, आसानी से 2 रन मुकम्मल किए। ये बहुत ही शानदार इनिंग है, बहुत क्वालिटी की इनिंग है ये अली शान की जानिब से। अंडर द नर्व्स, अंडर प्रेशर, बड़ी जबरदस्त इनिंग। जफर गौर हौसला अफजाई करते हुए, साथी खिलाड़ी हौसला अफजाई मुसलसल कर रहे हैं, और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि मैच यहाँ तक आ जाएगा। बिलखुसूस जब आज सुबह खेल का आगाज हुआ, 251 रन की बढ़तरी हासिल थी सिंध को। फवाद आलम फील्ड को मजीद क्लोज करते हुए, और कोशिश ये होनी चाहिए अब सिंध की कि वकास पे अटैक करें। यहाँ वकास मकसूद ने रोका है इस मौके पर, तेज़ी के साथ ये 2 रन मुकम्मल किया। उसके बाद वकास तैयार नहीं थे। कभी कभी ऐसा होता है कि बैट्समैन जो चिंगम च्यू कर रहे होते हैं या बबल जो होते हैं, वो शायद उनके इस तेज़ी के साथ रनिंग करते हुए अटक भी जाती है, और सांस भी कभी कभी फूल जाती है। अब रनर का रूल है नहीं, तो बैट्समैन को पूरी तरह से फिट रखना पड़ता है अपने आप को। ये गेम नर्व्स का भी है, अपने नर्व्स को भी काबू रखना है। कभी कभी प्रेशर से भी आपकी ऐसी तबीयत हो जाती है, क्योंकि सिचुएशन बहुत प्रेशर वाली है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं टीम की, और जब 64 रन दूर हों तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, और एक्सपेक्ट करेंगे कि सेंट्रल पंजाब को करीब लेके जाया जाए, फाइट दिखाई जाए, जितनी मैक्सिमम फाइट हो सके यहाँ से, विकेट थ्रो नहीं करनी है। बैक फुट में गए, सॉफ्ट हैंड के साथ खेले कवर में। सुहेल खान को काफ़ी इंगेज रखा हुआ है अली शान ने, और अब बढ़तरी सिंध की महज 63 रन की। जी यहाँ पे बहुत ख़राब कप्तानी की है, कहना होगा फवाद आलम की जानिब से, क्योंकि बहुत सिंगल अवेलेबल है, फील्ड खोल दी है बहुत शुरू से ही, बैकफुट पे चले गए, खुद मौका दे दिया सेंट्रल पंजाब को इस मैच में वापस आने का, क्योंकि बहुत रन थे जब सुबह मैच शुरू हुआ था, 5 विकेट सिर्फ हासिल करनी थी, लेकिन जब पहले आधा पौना घंटा फ़हीम अशरफ ने और रिजवान हुसैन ने बैटिंग की, उसके बाद से फ्लैट हो गए, फील्डिंग खुल दी, सिंगल अवेलेबल हो गए, डीप स्क्वायर लेग, डीप कवर फील्डर चला गया, तो शायद थोड़ा अटैक ज़्यादा करना चाहिए था शुरू में। और अब ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे विकेट भी हासिल करनी है, रन्स भी बचाने हैं, लेकिन स्टिल मैं यही कहूँगा कि अटैक अभी कर सकते हैं। 63 रन बहुत ज़्यादा रन होते हैं। राउंड विकेट गेंद की वकास को ताबिश ने एक स्लिप एक गली के साथ गेंद करते हुए सरवाइव किया। इस आखिरी गेंद को ओवर मुकम्मल हुआ 244 60 विकेटों के नुकसान पर। ये आउट होने वाले प्लेयर थे अली शान। बहुत ही शानदार इनिंग रही है ये, 53 रन पर नॉट आउट हैं। जब भी मौका मिला है, जब भी लेंथ बॉल मिली है, इन्होंने रन्स किए हैं, कदमों का भी शानदार इस्तेमाल किया है। बहुत फाइटिंग इनिंग रही है, और यही आप देखते हैं अपनी टेल के अंदर, टेल से एक्सपेक्ट करते हैं जब आपकी इस तरह का फाइटिंग स्पिरिट आपके अंदर हो, नेवर गिव अप वाली अप्रोच हो, तभी आप एक बड़ी टीम बनते हैं।
63 रन मजीद दरकार हैं इस मैच में कामयाबी के लिए। और अली शान एक एंड को ऑक्यूपाई किए हुए, बड़ी उम्दा बैटिंग की अब तक अली शान ने। इस मैच में अली दोनों विकेट कीपर्स ने बड़ी उम्दा बैटिंग की मुश्किल सूरत हाल में। सिंध के लिए मोहम्मद हसन ने अच्छा साथ दिया और यहाँ पे अली शान कदमों का इस्तेमाल किया है बहुत ही शानदार तरीके से। 6 रन मिल जाएंगे। प्लेसमेंट कमाल की रही, सीधा मारने की कोशिश में कामयाब हुए और यही सही तरीका है इब्रार को खेलने का कि आपने अगर हिट मारना है तो सीधा मारिए। 6 कीमती रन हासिल किए अपने लिए और सेंट्रल पंजाब के लिए। बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की इस प्रेशर में और इब्रार जैसे बॉलर के सामने बड़े हिट्स गेंद जोन में मिल गई। अली शान को फ्लैटेड डिलीवरी दी, कदमों का इस्तेमाल किया और बड़ा छक्का अब्रार के सर के ऊपर से 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। या जैसे जैसे बॉल पुराना होता जाता है अब्रार इतने इफेक्टिव रहते नहीं है क्योंकि पेस ज्यादा मौजूद नहीं है। ये आर्ट बहुत मुश्किल है हैंडल करना। सेमी न्यू बॉल नए बॉल से ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, लेकिन अब जैसे 64 ओवर गुजर चुके हैं इस बॉल को, सॉफ्ट हो गया बॉल, तो बैटर ही गलती करे तो करे क्योंकि इतनी ज्यादा पेस भी नहीं जनरेट कर पा रहे हैं पिच से, ऑफ द पिच भी, तो मुश्किलात तो हैं यहाँ पे सिंध के लिए। अली शान का रोल अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अब्रार अपने से वाबस्ता तवक्कात को पूरा नहीं कर सके। अगर अब्रार के बॉलिंग फिगर्स देखें आप तो 92 रन अब तक दे चुके हैं और महज 1 विकेट हासिल किए। जी और वो जो विकेट हासिल की वो भी बहुत ही खराब शॉट था अहमद सफ़ी अब्दुल्ला की जानिब से, क्रॉस हिट मारने चले गए थे। इसलिए अगर बैटर गलती नहीं करे तो इस पिच पे आउट होने के चांसेस बहुत कम है। और अब सिर्फ 56 रन दूर है सेंट्रल पंजाब ये मैच जीतने को। किसने सोचा था कि इस पोजीशन में आ जाएंगे। 5 विकेट्स कल 14 ओवर्स में गंवाई थी। एक दफा फिर वकास हट गए, कुछ मूवमेंट थी जिसकी वजह से वकास हट गए। इससे पहले उन्होंने ताबिश खान को रोका था जब नॉन स्ट्राइकर एंड पे मौजूद थे और वकास के सामने शायद कुछ मूवमेंट थी। अली प्रेशर तो है दोनों टीमों पे क्योंकि बड़ा मैच है, ये डिसाइड करेगा, होप्स रखेगा फाइनल के लिए। और आसानी से कैच ले लिया। बहुत ही शानदार बॉलिंग इब्रार की, अच्छा सेटअप किया वकास को, अच्छी लाइन और लेंथ पे गिरा हुआ बॉल, मतलब डिफेंड करने गए थे लेकिन अपनी विकेट गवा बैठे वकास। और अच्छा कैच लिया साद ने और जैसे ही यहाँ पर आउट हुए, अगर हम रिप्ले में दिखा सकेंगे तो फ्रस्ट्रेशन आप देख सकेंगे। अली शान ने किस अंदाज से अपने बल्ले को झटका दिया। वकास ने अच्छा साथ निभाया था, 18 बॉलों तक उन्होंने सर्वाइव किया और ऐसा लग रहा आउट ऑफ फोकस हुए थोड़ा सा, गेंद को खेलने के लिए गए, गेंद आउटर एज लेके सीधी यहाँ पे स्लिप में साथ की जानिब और कोशिश पूरी की थी हसन ने इस कैच में हाथ डालें और अगर कैच में हाथ डालते तो बहुत मुश्किल था कि कैच है 7 तक पहुंचता। 13 रन बनाकर आउट हुए, 251 पे 9। मोहम्मद अली नए आने वाले बैट्समैन। 65 ओवर का खेल भी मुकम्मल हो गया, 251 पर 9 सेंट्रल पंजाब। सिंध को चाहिए सिर्फ 1 विकेट और सेंट्रल पंजाब को चाहिए 56 रन। और बहुत कम ऐसे मौके होते हैं। मोहम्मद अली, अली शान, अली यूनुस, अली सलमान 15वां मैच खेल रहे हैं। 66 रन अब तक स्कोर किए गए, 17 बेस्ट है, 6.60 की एवरेज के साथ। यहाँ से अब तो जो भी होना है सेंट्रल पंजाब के लिए वो अली शान को करना है। स्ट्राइक अपने पास रखना है मैक्सिमम, ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना है मोहम्मद अली को, स्पेशली इब्रार के सामने, क्योंकि स्पिनर्स को निगोशिएट करना, स्पेशली मिस्ट्री स्पिनर को टेल एंडर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अभी हमने देखा वकास मकसूद स्पिन खेलने चले गए, बॉल एंगल के साथ सीधा रहा, अपना एज दे बैठे, इसलिए अब ज़्यादा स्ट्राइक जो है वो अली शान को अपने पास रखना है। मोहम्मद अली, अली शान, अली यूनुस, अली सलमान, ऐसा लग रहा है कोई सज्जाद अली का कोई सॉन्ग सुन रहे हैं। लेकिन एनर्जी आपकी अभी इतनी ज़रा कम है। नहीं बिल्कुल, इस वक्त क्रिकेट बड़ी ज़बरदस्त है, कोई भी टीम जीते कोई भी टीम हारे, क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि चौथे दिन तक ये मैच गया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, और ये चीज़ खुद ब खुद एनर्जी ले आती है। जब आपकी प्रेडिक्शन हर बात सही हो तो एनर्जी तो आ ही जाती है। दाद देनी होगी आपकी प्रेडिक्शन की। ऐसे मौके पे आपने प्रेडिक्शन की थी जब कोई मौका नहीं मिल नज़र आ रहा था कि
कि चौथे दिन मैच जाएगा। ताबिश खान, और पहले ही गेंद पे एक रन हासिल किया अलीशान ने। क्या ये मिस्टेक जो है उस मैच को तो डिस्टर्ब नहीं कर देगी, रिजल्ट को तब्दील नहीं कर देगी। और आप देखें सिंगल से कितनी खुशी है सिंध के कैंप में। साद खान पंजों के बल उछल रहे हैं इस सिंगल से, शायद आउट करके इतना खुश ना हो जितना इस सिंगल से खुश हैं, क्योंकि उनको अब मोहम्मद अली पे अटैक करना है। और मैं समझता हूं अलीशान यहाँ पे बड़ी मिस्टेक कर गए। जहाँ कॉल 2 की जरूर की थी, लेकिन बहुत ही शानदार फील्डिंग सोहेल खान की जानिब से, बहुत तेजी से बॉल के ऊपर आए और एक अच्छी थ्रो की जिससे रोका गया अलीशान को कि वो दूसरे रन के लिए नहीं आ सके। यहाँ पे एक्सपोज कर दिया है 5 बॉलों के लिए मोहम्मद अली को। और अलीशान ने जब ये सिंगल लिया, उनको सोचना चाहिए था कि गेंद पे लपकने वाले फील्डर सोहेल खान है, जिन्होंने जो कारकर्दगी दिखाई है बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में, ऐसा लगता है ये मेला सजाया ही उनके लिए गया है। तो उनके पास से दूसरा रन लेना बहुत ही मुश्किल था। काफी बाउंसर की थी मोहम्मद अली ने ताबिश खान को, अगर आपको याद हो। जी हाँ, बहुत ही शानदार स्पेल किया था मोहम्मद अली ने, बहुत जोरदार, बहुत जानदार। लेकिन क्या ताबिश खान उसी पेस से, उसी एनर्जी से बॉल कर पाएंगे अली को, ये सवाल है। पहला सवाल तो मेरे जहन में ये आ रहा है, एज ए फास्ट बॉलर जब आपको इतनी बाउंसर फेस करें तो आप रिवेंज गेम पे जाते हैं, अब आउट करने जाएंगे ये पहले अपने रिवेंज को सोचेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जितनी बाउंसर्स की थी और हेलमेट पे भी गेंद लगी थी ताबिश खान के, लेकिन उसके बाद ताबिश खान ने एक बड़ा जबरदस्त छक्का भी हिट किया था। तो बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट है ताबिश का और मोहम्मद अली का। सबसे बेहतर रिवेंज तो ये हो सकता है कि विकेट हासिल की जाए, क्योंकि बाउंसर्स करने से फायदा तो होगा नहीं। और जितने एक्सपीरियंस हैं ताबिश खान, जितनी क्रिकेट उन्होंने खेली है, जितने अच्छे वो इंसान हैं, मुझे लगता नहीं है कि वो रिवेंज का सोच रहे होंगे, विकेट लेने का जरूर सोच रहे होंगे। मोहम्मद अली जो बतौर बॉलर अपने आप को इस सीजन में काफ़ी हद तक मनवा चुके हैं, आज अलीशान को उनको खिलाना होगा। और काफ़ी अब ये मुश्किल टास्क हो गया है, क्योंकि अलीशान आखिरी नंबर के प्लेयर के साथ 55 रन एक बड़ा टास्क है। वकास बड़ा अच्छा साथ दे रहे थे। ये लेग बायर्स हो जाएंगे 4 रन। लकी बाउंड्री यहाँ पे सेंट्रल पंजाब के लिए। इनफैक्ट शायद बैट का इशारा किया है अंपायर वलीद याकूब ने। जब डिफ्लेक्शन था ये बैट से, तो चौके के साथ अपने स्कोर का आगाज किया अली ने, मोहम्मद अली। और अब बरतरी सिंध की महज 51 रन की। काफ़ी वक्त है सिंध के पास, लेकिन जितनी दाद दी जाए सेंट्रल पंजाब की फाइट बैक को, अलीशान को, रिजवान हुसैन को, वो कम है। ये बेहतरीन बॉलिंग है, बेहतरीन एरिया है बॉल करने का। और यहाँ पे ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए ताबिश खान को, क्योंकि यही चांस है विकेट हासिल करने का, ये लाइन और लेंथ। बहुत ही ज़बरदस्त डिलीवरी दी है और 11वें नंबर के बैट्समैन यकीनन काबिल माफ़ी हैं इस डिलीवरी का सामना करने के लिए। मुसलसल बिजी हैं फवाद आलम। चाहे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जब आपके टॉप के जो 5 प्लेयर्स उन्होंने ख़राब शॉट मारे हों, तो आप टेल एंडर से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। कसूर तो टॉप 5 बैटर्स का है। आबिद अली, इमरान डोगर, अली ज़रियाब, मोहम्मद साद, सैफ बदर, सभी ख़राब तरीके से आउट हुए। खुर्रम मंजूर को सेकंड स्लिप में इंडक्ट किया है, 2 स्लिप एक गली के साथ। और अब असद शफीक को भेजा है, शॉट है मिड विकेट पोजीशन पर। ताबिश खान दिफा अंदाज से इस बार दवा खेलने में कामयाब हुए, सरवाइव किया। उसके साथ ही 5 गेंदें सरवाइव कर गए मोहम्मद अली। बड़ा इंटरेस्टिंग ये मैच अब, और महज 1 विकेट दरकार है यहाँ सिंध की टीम को। और सेंट्रल पंजाब को 51 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। बहुत मुश्किल डॉन्टिंग टास्क है यहाँ से, क्योंकि बहुत वैरायटी मौजूद है सिंध की बॉलिंग लाइनअप में। हर तरह की बॉलिंग है, लेफ्ट आर्म सीमर भी है, एक्सपीरियंस ताबिश खान भी है, और सोहेल खान तो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। उनके साथ इब्रार हैं जो कि स्पिन ऑप्शन है, जो वो भी मिस्ट्री स्पिनर है, अटैकिंग ऑप्शन है। वो फेवरेट तो यहाँ से डेफिनेटली अब सिंधी हैं। अब मैटर ऑफ टाइम है कि कब वो 1 विकेट हासिल करते हैं और ये मैच जीत पाते हैं। कदमों का इस्तेमाल, गेंद स्लिप में जरूर गई, लेकिन साद थोड़ा पीछे खड़े थे। अच्छी यहाँ पे गेंद की
इस मौके पर, और अली शान खतरनाक अंदाज से निकल के खेले। और मैं समझता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा और फील्डर क्लोज करना चाहिए, अली शान को गैप्स दिखाने चाहिए ताकि एच के चांसेस हो। एक स्लिप और होनी चाहिए या फॉरवर्ड शॉट लेग और होना चाहिए ताकि अली शान को गैप्स नजर आए और फिर अली शान गलती करें। और दूसरी जानिब अली शान को इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। पिछले ओवर में भी पहली बॉल पे सिंगल लिया उन्होंने। अब ये देखें, एक शॉट ट्राई किया और दूसरा शॉट ट्राई जरूर किया, 4 रन भी मिले। और यही कुछ अब करना होगा, लेकिन इब्तिदाई गेंदों पे नहीं। जहाँ बहुत बड़ा गैप मौजूद है मिड विकेट एरिया में, बाउंड्री लाइन पे कोई फील्डर नहीं है, सिर्फ गैप तलाश किया, हवा में खेले और 4 रन हासिल किए। ये अच्छी अप्रोच है अली शान की जानिब से, क्योंकि रन्स लेते रहना चाहिए, क्योंकि ब्लॉक करते रहेंगे उससे फ़ायदा हासिल नहीं होगा। बॉलें बहुत हैं, टाइम बहुत है, सिर्फ 47 रन हैं, सिंध को सिर्फ 1 विकेट चाहिए, तो रन्स की तलाश में रहना चाहिए। और फील्ड खोल दिए, सुहेल खान को मिड विकेट पोजीशन पे प्लेस किया अबरार ने। डीप बैकवर्ड पॉइंट पोजीशन पे फील्डर मौजूद हैं, कवर्स में फवाद खुद हैं। एक दफा फिर बड़ी हिट खेलने की कोशिश, एहसान अली 1 रन। मैं समझता हूँ मजीद अभी फील्ड और खोल देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हिट लगा रहे हैं अली शान, और ताकि उनको सिंगल लेने का मौका मिले, मोहम्मद अली बैटिंग करें। अब किसी स्ट्रेटेजी के साथ अबरार को टैकल करते हैं मोहम्मद अली, देखना होगा। जहाँ फिर 3 बॉलों के लिए एक्सपोज कर दिया है मोहम्मद अली को इब्रार के आगे। फास्ट बॉलर के लिए आप समझ सकते हैं, लेकिन मिस्ट्री स्पिनर इब्रार जैसे मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा आइडिया है शान की जानिब से। सुहेल खान वार्म अप होते हैं, हमें नजर आ रहे हैं, जल्दी हम सुहेल खान का रिएक्शन देख सकेंगे। और अब मोहम्मद अली के लिए खुसूसी जो है एहतमाम किया गया है, और जैसे कोई खास मेहमान आता है सब घर वाले घर में जमा हो जाते हैं। आप देखें कैसा घेर के रखा है यहाँ पे मोहम्मद अली को। जी हाँ, खास तो है वो, क्योंकि इनकी विकेट मैच जितवा देगी सिंध को। बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से स्टार्ट किया है, ड्राइव किया है, अच्छा साइन है ये। बैट बॉल था अबरार की जानिब से, लकी रह गए, इसको बड़ी हिट खेलने नहीं गए क्योंकि क्लोजिंग पोजीशन पे फील्डर मौजूद हैं और फुल टॉस कर दी थी अबरार ने। सरवाइव किया यहाँ पे मोहम्मद अली ने। या ये बहुत शानदार टेक्निक है, काश कुछ सीनियर प्लेयर्स भी इनसे कुछ सीख सकते हैं। बैट एंड पैड को साथ मिलाते हुए, मैरिट पे खेलते हुए बॉल को अच्छे तरीके से हाथ से पिक कर रहे हैं इब्रार को। आसान नहीं होता ऐसे बॉलर को पिक करना। आपको याद होगा कि सदरन पंजाब के भी आखिरी नंबर के बैट्समैन ने काफ़ी तंग किया था केपी के बॉलर्स को, और अब यहाँ पे जिस तरह से वकास ने बैटिंग की अली शान के साथ मिलकर, अब मोहम्मद अली खेल रहे हैं, तो काफ़ी मुश्किलात हैं यहाँ पे। आसानी से विकेट नहीं देने को तैयार हैं इख्तितामी नंबर के बैट्समैन। ओवर मुकम्मल, 261 पे 9। बहुत ही शानदार फाइट शो किया आज के दिन सेंट्रल पंजाब ने। रिजवान हुसैन की इनिंग की बात करें, बहुत ही कमाल की इनिंग खेले, 85 रन बनाए उन्होंने। फ़हीम अशरफ 34 रन बना सके, ख़राब शॉट किया तो आउट हुए। अली शान अभी तक क्रीज पे मौजूद हैं 67 रन बनाकर, अच्छा साथ दिया अहमद सफ़ी अब्दुल्ला ने। वकास ने भी 13 रन बनाए, और अब मोहम्मद अली। तो ऐसा तो नहीं है कि इस किताब का जो सेंट्रल पंजाब की बैटिंग की किताब है, इसका पहला पन्ना भी सुहेल खान ने खोला था, और आखिरी जो किताब का पन्ना है, जो किताब बंद करेंगे, वो भी सुहेल खान, क्योंकि अब सुहेल खान को गेंद दी है, उनके सामने अली शान, तो खान टू शान। ये मैच तो सुहेल खान के नाम रहेगा, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है। बड़ा शॉट खेले हैं, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं है, ये बॉल चला जाएगा 4 रन के लिए। बहुत ही शानदार बैटिंग जारी है यहाँ पे अली शान के जानिब से, बेहतरीन शॉट और बेहतरीन रिजल्ट। बहुत ही उम्दा बैटिंग कर रहे हैं अली शान, किसी भी बॉलर को खातिर में नहीं ला रहे। और दूसरी जानिब मैंने पहले भी कहा कि अगर फवाद आलम को इस मैच में वापस आना है तो अली शान पे पूरी फील्ड को उनको खोलना होगा, ताकि सिंगल लेके मोहम्मद अली सामने आए और बड़ी हिट लेने से एतराज़ करें और बड़ी हिट लेने का रिस्क ना लें। लेकिन अगर आप फील्ड को बंद करके रखेंगे तो अली शान को ऐसे गैप्स मिलेंगे। और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की अली शान ने अब तक इस टेंस सिचुएशन में। या क्योंकि रन इतने कम हैं, आपको विकेट्स भी हासिल करनी है, रन्स भी बचाने हैं। ये आसान कप्तानी नहीं होती है, जब एक कैप्टन के लिए बहुत मुश्किल सिचुएशन हो जाती है ऐसी। अब बेहतर फील्ड प्लेस की है, अगर हम इस रिप्ले के बाद देखेंगे, एक बड़ा स्ट्रोक खेले यहाँ पर, पूरी तरह से सुहेल के पेस को इस्तेमाल किया, लाइन और लेंथ को इस्तेमाल किया, और फवाद अब खुद भी जो है वो बाउंड्री के करीब पहुंचे हैं। अब अच्छी फील्ड प्लेसमेंट है यहाँ, और कैच ड्रॉप हुआ है क्या यहाँ पे उमैर बिन यूसुफ से, देखना होगा।
एकीकरण के लिए जिद्दोजहद करते हुए दोनों टीमें, और ऐसा लगता है कि यहाँ पर कैच निकला है उमर बिन यूसुफ के पास से। 2 रन का बड़ा वैल्यूएबल 2 रन का इजाफा। 38 रन अब दरकार है सेंट्रल पंजाब को। शायद थोड़ा आगे गिर गया बॉल, गाइड जरूर किया था, काफी करीबी मामला। जी हाँ, थोड़ा शॉट गिरा यहाँ पे करीब खड़े हुए फील्डर उमर बिन यूसुफ से। देखिए इस फील्ड का एक नुकसान भी होगा कि आपके पास सिंगल्स और 2 अवेलेबल होंगे, और आप ऐसा नहीं चाहते हैं बैटर को देना इतनी अपॉर्चुनिटी। सिंगल अवेलेबल हो कोई मसला नहीं, क्योंकि मोहम्मद अली सामने आएंगे। 2s और 4s और बाउंड्रीज ये मुश्किलात पैदा करेंगे सिंध के लिए, क्योंकि फिर स्ट्राइक अली शान से चेंज होगा नहीं। अभी ऐसा शफीक हैं जो थोड़ा आगे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सिंगल को रोक सकें जो अली शान लेंगे, लेकिन अब वापस भेज दिया फवाद ने असद को, क्योंकि 3 गेंदें हुई हैं, शायद मिस कैलकुलेट कर गए थे गेंदों की तादाद को असद शफीक। यहाँ पे मैं समझता हूँ मजीद उमर बिन यूसुफ है, इनको और पीछे लेना चाहिए, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं फील्डर्स की सर्कल में। बाउंसर किया सोहेल खान, अब एंड बचाने की कोशिश करते हुए। कोशिश होगी कि सामने वाले एंड से मोहम्मद अली सामने आए। जी हाँ, 38 रन दूर है सेंट्रल पंजाब, और आप देख सकते हैं कि तमाम ही फील्डर सवाए स्लिप और गली के बाउंड्री लाइन पे हैं। अच्छा तेज बाउंसर किया था सोहेल खान ने। यहाँ पे सिंगल अवेलेबल है, अब क्या एक बॉल के लिए एक्सपोज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है अली शान के लिए। अभी तक तो अच्छा डिफेंस शो किया है अली ने, मोहम्मद अली ने। एक चांस एक बॉल का तो शायद दिया जा सकता है, या एक दूसरी सोच ये भी हो सकती है कि फील्डर अंदर आए, ऊपर से मार के 4 रन हासिल करें। एक और बाउंसर सोहेल खान की जानिब से, और अली शान उस बाउंसर को अटेम्प्ट करने भी चले गए। बड़ा अच्छा अपने आप को शो किया, अपने स्किल्स को अली शान ने। अभी भी हम देख रहे हैं आखिरी बॉल के लिए भी फील्ड खुली ही है, तो यहाँ पे मौका बन जाएगा सिंगल लेने का। और अब हम देख रहे हैं कि मिड विकेट के फील्डर जो हैं खुर्रम मंजूर को दायरे में बुलाया गया है। डीप एक्स्ट्रा कवर से असद आहिस्ता आहिस्ता चल के सर्कल के अंदर आ रहे हैं, और अब वो जो कोशिश है सिंगल रोकने की वो होगी यहाँ पे सिंध के लिए। अब शॉर्ट बॉल की तो ये खुर्रम के सर के ऊपर से स्ट्रोक जाएगा, जिस हिसाब से बल्ले को चला रहे हैं, और सोहेल जो काफ़ी ऊपर जा रहे हैं शॉर्ट पिच पे, तो यहाँ पे कोशिश ये होगी कि खुर्रम के सर के ऊपर से खेलें स्ट्रोक। दौड़ना शुरू किया यहाँ पे सोहेल खान ने। आखिरी गेंद बड़ी इंपॉर्टेंट होगी ये देखा आपने, कैच की अपील कर रहे थे हसन। 3 मुसलसल बाउंसर्स की गई। शायद इसीलिए अंपायर की तरफ देख रहे थे कि 3 बाउंसर्स किए हैं सोहेल खान ने इस ओवर में। ओवर का इख्तिताम हुआ 68 ओवर के बाद 267 पे 9 सेंट्रल पंजाब। देखिए सोहेल खान ने गो की विकेट हासिल नहीं की, लेकिन जो काम उन्होंने किया है वो बड़ा ज़बरदस्त किया कि उन्होंने स्ट्राइक चेंज नहीं होने दिया। यहाँ पे अब एक और चीज़ भी देखनी होगी कि चाय का वक्फा अब ऑलमोस्ट टाइम हो जाता है, लेकिन आखिरी विकेट है। अंपायर्स चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं ये सेशन, क्योंकि आखिरी विकेट इस मैच की है। 40 रन दूर है सेंट्रल पंजाब ये मैच जीतने को, और 1 विकेट चाहिए सिंध को ये मैच जीतने के लिए। खुनकी में इजाफा होता हुआ आप देख सकते हैं कितनी तेज़ हवाएं इस वक्त चल रही हैं। हमारे कैमरामैन ने अपने दोनों हाथ अपने अपर के पॉकेट्स में डाले हुए हैं, लेकिन खेल में शिद्दत है और खेल में हिद्दत है। अब इसकी कितनी मुद्दत है ये पता नहीं। मोहम्मद अली ने बहुत ही शानदार स्पेल किया था जब बॉलिंग करने आए थे। यहाँ पे भी कमिटेड तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, बहुत ही शानदार क्रिकेटर हैं, 100% देते हैं, बहुत जान मारते हैं। यहाँ पे अगर साथ निभा सकें अली शान का तो बहुत ही शानदार हो जाएगा ये सेंट्रल के लिए। उनकी में इजाफा होता हुआ, प्रेशर, टेंस सिचुएशन, नर्व्स का इम्तिहान दोनों टीमों के लिए। फाइन अंदाज से खेले मोहम्मद अली, अली शान को पूरी तरह से मजबूत करते हुए मोहम्मद अली। दो स्लिप के साथ गेंद कर, एक स्लिप एक लेग स्लिप के साथ दिफाई अंदाज से। ये अच्छी टेक्निक है,
अबरार को खेलने की। अभी उनका इरादा ऐसा ही है जैसे सब बॉल को वो इन स्विंग के लिए खेल रहे हैं और अच्छा बैट और पैड के साथ खेल रहे हैं। ये अच्छी अप्रोच है। 5 फील्डर बशमूल विकेट कीपर घेरे में मोहम्मद अली को। सलीम मिड ऑफ, फॉरवर्ड शॉट लेग स्लिप और विकेट कीपर। उनसठ ओवर का खेल मुकम्मल हुआ। 267 पे 9 सेंट्रल पंजाब। Well, the fight is continuing. Just 40 runs. Central Punjab has really given it their best shot. 35 for 5 they were. And here they are, 267 for 9. 232 runs. And 4 wickets since then. Another 40 needed. Could it go right down to the wire? Good afternoon, Amar Saeed. Good afternoon. And a very good afternoon to all the viewers as well. In the air, and the sweepers were there, but he split the gap perfectly. What a solid strike from little man Ali Shan. He's carrying the fight to Sindh. 36 more to go. Wow, that was a beautiful shot. A half volley really pitched up and beautifully driven upishly, but he didn't even try to keep it down really. And in the gap, lovely shot. 36 to go, the partnership for the 10th wicket. 20 runs already. Muhammad Ali has played 14 deliveries. And now, getting close. Tensions building. Sohail Khan, who started the rot. Sindh looking to him to finish the job off. 69 overs bowled. This is over number 70. Since the start of play, as Sindh have done throughout the day, they're just waiting for something to happen, and still they're doing that. They have a 36 runs cushion, and they're still waiting for something to happen. And all the Sindh fans must be hoping that it does happen all by itself. Central Punjab really have took the fight. Look at that field. Deep cover, deep extra cover, deep long off, long on. Ali Shan opens the face of the bat, looking for that one. Finally will get one. He stuttered for a moment, but then decided to allow Muhammad Ali 2 deliveries in the over. Well, I don't think Ali Shan should be too worried about Muhammad Ali playing the fast ball especially. He's shown that he can defend well against Abrar. He played pretty well, negotiated the previous over pretty well. I think the fast bowlers should be easier to face on this track at this stage. Third man is coming back to regulation. Third man, I think, got a slip.
second slip, which is quite wide, a gully. Short lifting delivery, fended off very nicely. Muhammad Ali kept it out safely. 1 to go. That's the man on your screen who bowled his heart out yesterday to get Sindh bowled out. Now he's got a job to do with the bat in hand. A few very easy missed chances, and even then Sindh have managed to come to this position, just a wicket away from victory, and Central Punjab 35 runs away. Safely negotiated. Rapturous applause from the Central Punjab camp for Muhammad Ali. Another over safely negotiated. Ali Shan will be back on strike. 272 for 9. Very tense situation, Abrar. Slightly short, he found the gap, and that will run away to the fence. Ali Shan rocking back to that short delivery from Abrar, and he found the gap as well. Target reduced by another 4 runs. Tension is building here. And look at Fawad Alam. The camera can show us. He's not happy with it, and short ball outside off stump. Where Abrar field is now a short leg, a short fine leg, a deep square leg, and a deep mid wicket. And he bowled that one outside off stump. Point is deep, the cover is deep as well. Ali Shan is not being threatened at all. Sindh has made it very, very clear that they're not going for his wicket. No pressure on him. Just waiting for something to happen, like Ahmed said just a while ago. 4 deliveries gone. What will they do? Will they bring the field in? Well, the strategy at the moment seems like the whole team is waiting for a magic ball from the bowler. That is how the field is being set, definitely. Fielder from cover has been brought in. The mid-on has come in. Shan was looking to advance down the wicket. Abrar saw him coming. 1 delivery to go. Still plenty of gaps. Look at that point fielder. He's hanging very deep. Can easily concede a run. But now that short leg fielder is going over to the offside. Look at that. Mid wicket has come in. And then there is that ring of fielders on the offside. That mid-off is still hanging back. Tempting Ali Shan for the big one. Ali is called. And he's made it. Throw at the non-striker, and Abrar was nowhere near the stumps. Panic all over from Sindh. And Ali Shan has retained the strike. Well, again, technical fault. Look at that. Where is Abrar? He's standing there after delivering the ball. He should have been behind the stumps. And had he been there, it was game over for Ali Shan. He had given up. And I thought he didn't even know that the ball is being thrown at his end. Look at that, not even in the picture. And what is Abrar doing? He's just lost. There's a lot of arm waving, finger pointing from Sindh.
Experience or not, this is pressure cooker situation, and it's telling even on the most experienced. Asad Shafiq, Khurram Manzoor, loads of first class cricket under their belt. You could see the panic setting in. Who would have thought this is going to happen when we turned up this morning? 5 down for 55. It just looked like it was academic. Look at those partnerships. 60 for 6th. Another 51 for the 7th. And this last wicket partnership, 26 runs already. Swung it away. He's not going to take a single on the first delivery. This is really pressure stuff now. But I still feel I completely agree with Amr. Sindh is just waiting for that moment to arrive all by itself. Yes, even in short periods when they have applied pressure on batters throughout the day, that has been the story of the day. Whenever they have been able to apply pressure, they haven't taken advantage of it. Whenever an opportunity has come. Wow, very close. Looking for that ramp over the keeper. But if I look around the field as we watch this replay, short pitch delivery looking to ramp it over the keeper's head. How are we trying to get Ali Shan out? You tell me. Well, we're not. Definitely not. That seems to be the plan, just to give him a single and attack Muhammad Ali. Whereas Ali Shan, he's experienced enough. He won't be giving Muhammad Ali the strike. Definitely not for the first 4 or 5 balls. It has been an absolute thriller right down to the wire. Look at Central Punjab camp. The intensity. Humayun Farhat cannot bear to look on. Abid Ali's got a nervous smile on his face. Sindh, on the other hand, very quiet. I haven't seen Hassan chirp as much as he normally does in the last half an hour or so. They're really quiet and flat on the field. No one near to Ali Shan to make him realize he's in a contest. It's his choice when he wants to take a single and when he wants to decline it. This time on the 4th delivery, he's done it again. Well, I hope that Sohail makes these 2 deliveries count. Previous over, he bowled short to Muhammad Ali. I think that was a waste of time and energy. I think you've got 2 balls. Try to pitch it up. Try to get him out the way he got the other batsman out last evening. Even if you look at this field, there's a deep point for Muhammad Ali. He doesn't see anywhere in his periphery when he settles in his stance. The nearest fielder to him on the offside is cover, which is almost about 30 yards away from him. Short cover catching, short mid-wicket catching, maybe just get in his ear. He's a tail-ender. Off the edge. They're not going to run. Amr Saeed pulling his hair out in the comm box. Former captain. He's been baffled by the tactics of Sindh. And he can only explain and elaborate so much. But nothing has gone to plan. They don't want to hear him. And that's the result. A plan, did you say? What plan? There doesn't seem to be one. There you go. Job done, Muhammad Ali. Very, very well done.
He got under that bouncer. He's doing a terrific job for his side. Said he did it with the ball, and now he's doing it with the bat. Over to you, Ali Shan, he says. 278 for 9. Well, Fawad Alam, the skipper, has decided to come on himself. Not a bad idea, that one, actually. Change of angle. And of course, Ali Shan will have something else to think about. And just the usual. That is good. I like that too. You can argue that he waited too late for that, but I don't think it's never too late. 1 wicket to go. This is a good call. Slip. A deep point. Deep cover. And when they get close to victory, Central Punjab, pressure will mount on Ali Shan as well. The closer they get, that pressure will increase. At the moment, he's playing in his comfort zone. But if they get tight enough, he would like to hit a few big shots to finish it quickly. That's another battle that he has to fight with himself. But at the moment, I think he's just content with this plan of getting a single off the second or third delivery of the over. The way Muhammad Ali is playing, he's also now depending more, or trusting him more rather. He's played very well, Muhammad Ali, so far. His defensive game has been impressive, not only against the fastest stuff but also against Abrar. Played some very good defensive shots, never looked in two minds, and that is why Ali Shan has taken that single on the third ball this time. 3 deliveries. What can Sindh and Fawad Alam do? What's the role of those close-in fielders to try and get under the skin of Muhammad Ali? Tailenders doesn't like a chat or two. And then a teaser, high-flighted delivery tempting him. Fawad Alam, what will he come up with? All these options going through his head maybe. And on the other hand, Muhammad Ali, maybe a number 11, but very determined character. He definitely will not give it away so easily. Desperate appeal from the Sindh fielders. Oh, homing in on those stumps, thick inside edge. Saved Muhammad Ali. He was looking for that armour to trap him in front. Almost did it. What will the last ball hold? Mid on and mid off are up. Mid wicket is up too. Solid. Any number 11 will be proud of that forward defence. 279 for 9. "28 more needed." That's the Sindh dugout. And everyone is seems to be worried. And this is the Central Punjab dugout. Everyone quite hopeful because they have made a match out of it. They seemed to be in a mess when the day started, but they are in a good position now. If you note that Central Punjab dugout, nobody's moving. Everybody is staying to their places. Look at this Sindh camp. Hassan Mohsin, Umar, Coach Basit Ali. Wow, what a game. 4 days of exciting cricket
has come down to this, and no team wants to surrender. But you have to say the fight back on the last day from Central Punjab is quite amazing. Abrar once again given the responsibility. On these 28 runs depend the whole campaign of Sindh. The previous 8 matches has come down to this. If they lose it from here, I don't think they will have a realistic chance of making to that final. Really, that is how close. Big hit! Away from the fielder. Muhammad Ali, what are you doing? Muhammad Ali was almost at handshaking distance with Ali Shan. He wasn't even looking. Look at this. Muhammad Ali. Ali Shan was game. Muhammad Ali wasn't even looking at him. Complete chaos, but the throw was weak. Yeah, better throw would have put Ali in an awkward position. It wasn't to be. Deep cover, long off, long on, deep mid wicket, deep square leg. Abrar, these are the 3 sweepers on the offside. Off the edge, he will look for 2 here, and he will get it comfortably. Anyway, it will do for Central Punjab. Off the edge. But Ali Shan will take it. Look at him, he's on 86 now. He's rode his luck at times. Look at his running, very intent, head down. Comfortably does it. Fourth delivery of the over, and the single is taken. There's tension everywhere. Tension on the pitch, tension in the dugouts, in the commentary box. Ahmad Saeed cannot believe. You need to be out there. It's a lot of eyeballs, and all our viewers at home, I'm sure you're loving this contest. Thinking to yourself, why didn't you tune earlier? There has been some exciting cricket in this year's Quaid Azam Trophy Championship, but this is by far the closest game. Oh! Muhammad Ali solid as a rock. We've mentioned this before that when a 4-day game goes to the wire, nothing, no white ball cricket can compare to this. Big shout. Hit bat first, bat first. Umpire Walid Yaqub made the call. Another over negotiated safely. 25 to win. Wow. Just cannot keep your eyes off this contest. Look at that. The googly flighted delivery on that front foot. Inside edge onto the pad. Good decision, Walid Yaqub. I'm sure he will be under pressure as well. Well, I can tell you it's not easy to umpire at this stage of the game. Decision here or there can be very costly for any one of the teams. So you've got to be on your toes, and I'm sure there would be. And here's Razak, also cannot remain seated in this tense situation. Normally expressionless Abdul Razak, hiding his expressions under that mask. Fawad Alam, look at him. Are they waiting for that second new ball? 6 overs to go for that. I don't know if it's going to last that long. At the moment, they're scoring at 2 or 3 runs per over, because a single per over generally.
Shot. Oh, just falling short of Mir Hamza. Mir Hamza this time putting his body on the line, stopping the boundary. He must have thought about coming for that catch. But at the very last minute, he just stayed back to save the boundary. Look at that, played officially. Oh, just short. Inside out. Ramanzur right on that boundary line. They weren't even running. Oh, it's tense. You can feel it. Same pattern as previous few overs. Single taken, 2 deliveries for Ali to negotiate. Central Punjab. So close, yet so far. 24 runs to go, and just to let all our viewers know that till those 24 runs are scored, none of the teams are out of this game, because Sindh only needs 1 wicket. It's a 1-ball game, and those 24 runs, still a lot of time to go. Look at that, posing for the photographers. Muhammad Ali, he's negotiated 25 deliveries. Yet another over done and dusted, 283 for 9. It's the smallest margins of victory by runs in Quaid Azam Trophy. 2 runs, Islamabad versus Bahawalpur in the 95-96 season. 3 points, United Bank versus ADBP at the Pindi Club Ground, 89-90. 3 runs, PNSC versus National Bank at the LCCA, Quetta Hyderabad, 3 runs, Peshawar Wabda, 3 runs, and 5 runs, SNGPL versus Port Qasim in the 13-14 season. Wow, we don't want to get it that close, Ahmad. Well, if you've noticed, we've had none of these close finishes in Karachi, so maybe we're in for a surprise here. Wow. Abrar is a youngster. He's been given the responsibility. Look at that. Ali Shan, 12 runs away from that 100. 2 sixes. But I don't think he's going to try that. Over number 76. Down the leg side, Hassan moving very neatly across. Well, they've added an attacking fielder for Ali Shan. 2 slips now. Looked like it was googly. Ali got to it. 3 deliveries done. Good Sindh attempt to bring a fielder close in. Tempt Ali Shan to go for the big one. Instead, they've taken out the catcher into mid-wicket. Wow! What an audacious stroke was that! The reverse sweep. He's going for the second run. A wayward throw. This was wild from Tabish. 2 runs. The end result. What a shot that was. Yeah, in that situation, look at that game awareness. Immediately when that fielder was taken away and placed at that mid-wicket, immediately he played that switch hit and got a couple. Excellent thinking and good courage shown as well. Well, his nickname is Dhoni and he's playing that role of a finisher. Calm and cool. Could he remain calm and cool right till the end? 1 delivery to go. Why would you not bring all the fielders in?
That deep cover. Well, that fine leg is being brought up now. The slip has gone back to short third man. Short third man, point, cover. Extra cover is still hanging deep. Easy one run. Abrar came up with a shorter delivery, surprised Ali Shan, and has done one half of the job successfully. But this will be tea here because half an hour taken extra has been played out. Did we all need that break? I don't think. The tension continues for another 20 minutes because it's tea time.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली सलमान अपने साथी कमेंटेटर फरहान निसार के साथ तमाम नाज़रीन को इस नेल बैटिंग मैच में खुश आमदेद व कहता है कि जहां पर सेंट्रल पंजाब को इस मैच में कामयाबी के लिए 22 रन दरकार और दूसरी जानिब सिंध को महज 1 विकेट दरकार। और चाय के वक्फे के बाद एक छोटी सी ये एक कॉन्फ्रेंस है जो कोच बासित अली और साथ साथ असिस्टेंट कोच मसरूर और दीगर खिलाड़ियों के दरमियान। 1 विकेट दरकार है यहाँ पर इस मैच में कामयाबी के लिए सिंध को और 22 रन दरकार है सेंट्रल पंजाब को। एक ज़बरदस्त मैच और मैं समझता हूँ इस टूर्नामेंट का अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग मैच इस वक्त जारी है कि जहाँ पे 155 रन स्कोर किए 9 विकेटों के नुकसान पर। सिंध ने 187 करने के बाद डिक्लेयर की इनिंग अपनी। सेंट्रल पंजाब ने फिर 338 रन स्कोर किए और यूं 285 रन 9 विकेटों के नुकसान पर अब तक का स्कोर। अली शान 90 रन पे पहुंच चुके हैं और ये 90 का वो फेरा है कि जो बहुत बेवफा साबित हुआ है। अब तक हमने देखा शफी की सेंचुरी मिस हुई, आबिद अली की सेंचुरी मिस हुई है, इसके अलावा सुहेल खान भी अपनी सेंचुरी करीब पहुंच के मिस कर गए। तो काफ़ी यहाँ पे हमें बड़ी सेंचुरियाँ मिस होती नज़र आई हैं, लेकिन जितनी दाद दी जाए कम है। अली शान को उनकी शानदार बैटिंग की बदौलत वो सेंट्रल पंजाब की टीम को इस मुकाम तक लेकर आए। मेरे साथ मौजूद हैं फरहान निसार। फरहान, एक बहुत ही ज़बरदस्त मैच यहाँ हमें देखने को और कवर करने को मिल रहा है। बिल्कुल अली सलमान, और अगर सनसनी खेज को अगर किसी शक्ल में बयान किया जाए तो वो ये मैच है, असाब शिकन मार्का है ये। और अली शान 90 गेंदों के साथ नाकाबिले शिकस्त हैं और इन्होंने अपनी टीम की शान बढ़ाई है। यहाँ पर अली शान ने 152 गेंदों पर 90 रन, 9 चौके, 2 बुलंदोबाला छक्के और अभी महज 22 रन का फासला है, 1 विकेट दरकार है। और शायद इससे अच्छी फिनिश हमें कायद आज़म ट्रॉफी के 2021-22 के सीज़न में अभी तक नहीं मिली। यकीनन अली शान अपनी सेंचुरी से ज़्यादा अपनी टीम की जीत की तरफ निगाहें किए हुए होंगे। 4 रन के साथ मोहम्मद अली क्रीज पे मौजूद हैं, बड़ा अच्छा साथ निभाया। 25 गेंदों तक उन्होंने सरवाइव किया और फवाद आलम यहाँ पे बॉलिंग के निशान पे तैयार हैं। 22 रन की दूरी पर है फतह और 1 विकेट की दूरी पर है फतह सिंध के लिए। नफसियाती हरबे भी ऐसे मौक़ों पर इस्तेमाल करते हैं और मोहम्मद अली की भी जितनी तारीफ की जाए कम है। 3 फील्डर बैट के बिल्कुल करीब कैच पकड़ने के लिए, लेकिन सर को झुकाकर गेंद को बिल्कुल ज़मीन के साथ खेले और तनाव इनके चेहरे से नुमाया नहीं है, लेकिन एक इनके अंदर भी एक जंग चल रही होगी कि ये बकिया 5 गेंदें किस तरह से सरवाइव करनी है। लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी है फरहान के सिंध के सामने जो सेंट्रल पंजाब की टीम है क्योंकि बैकफुट पे है, लेकिन अगर आप उनके प्लेयर्स से बात करें, इनके कोच अब्दुल रज़ाक से बात करें, अकरम रज़ा से बात करें, तो सब के सब बड़े कॉन्फिडेंट हैं और बड़ा पॉजिटिव इस मैच को ले रहे हैं। और यहाँ तक पहुँच जाना भी सेंट्रल पंजाब की कामयाबी। अगर हम कल शाम का स्कोर देखें तो 55 रन पर 5 मुस्तनद बैट्समैन सेंट्रल पंजाब के कमरा आराम में पहुँच चुके थे, लेकिन उसके बाद इस स्कोर तक पहुँच जाना ये बहुत बड़ी कामयाबी है सेंट्रल पंजाब की। अब तक बड़ी उम्दा बैटिंग की है मोहम्मद अली ने। इससे पहले एज ए बॉलर अपने सलाहियतों को मनवा चुके हैं और यहाँ पर एज ए बैट्समैन मोहम्मद अली पूरी तरह से अली शान का साथ देते हुए। मोहम्मद हसन यहाँ पे मैन इन इंचार्ज फील्ड को प्लेस करते हुए, क्योंकि कप्तान बॉलिंग कर रहे हैं तो विकेट कीपर आधा कप्तान होता है। और ये अपील ज़रूर है, लेकिन लेग स्टंप पर जा रही थी। फवाद आलम इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और मोहम्मद अली गेंद होने के बाद लंबे लंबे सांस लेते हैं। 5 गेंदें सरवाइव कर चुके हैं फवाद आलम की। ये आखिरी गेंद है इस ओवर की, जिसके बाद अली शान को सामने आने का मौका मिलेगा। और ये ओवर भी खेल लिया मोहम्मद अली ने और इनके डग आउट से बजती हुई तालियां इस बात की गवाह हैं। दो 9 विकेटों के नुकसान पर बाईस रन यहाँ मजीद दरकार हैं सिंध को इस मैच में कामयाबी के लिए। और अली शान अब सामना करेंगे डेंजर मैन। अबरार बॉलिंग के निशान पे तैयार हैं। जितना प्रेशर दोनों टीमों के खिलाड़ियों पर है, इतना ही प्रेशर यकीनन अंपायर्स पे भी होगा। एक गलत डिसीजन इस पूरे मैच का नतीजा तब्दील कर सकता है। अली शान चाय के वक्फे के बाद
किस मिजाज के साथ आए, क्या सोच लेकर आए, देखना होगा। अबरार फार एंड से बॉलिंग के निशान पे तैयार हैं। और ऐसे मुकाबले जो हैं वो किसी भी खिलाड़ी के प्रेशर से हैंडल करने का पता बताते हैं, उसकी दिलेरी को साबित करते हैं, और अली शान इन तमाम चीज़ों में पूरे उतरे हैं। और अबरार बिल्कुल भी उनके लिए ख़तरा साबित नहीं हो रहे इस इनिंग्स में। मजबूत दिफा और साथ साथ जारियत का उम्दा नमूना रही है बैटिंग अली शान की जानिब से। एक मुश्किल सिचुएशन पे बैटिंग करने आए और इस मैच को बनाने में कामयाब हुए। काफ़ी करीब इस मंजिल को लेकर आ गए। अब्दुल रज़ाक को आप देख सकते हैं, उनके साथ साथ मैनेजर अशरफ अली को देख सकते हैं, दोनों अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त प्लेयर। इस बार ऑन साइड पर खेला, 2 रन के लिए आना चाहेंगे लेकिन फील्डर बड़ी तेज़ी से आए। स्लिप फील्डर के अलावा तमाम फील्डर्स जो हैं वो बाउंड्री लाइन पर थे अली शान के लिए। और अब आखिरी 2 गेंदों का सामना करेंगे मोहम्मद अली, डेजी के नाम से जाने जाते हैं अपने साथियों में। और अब इनके लिए फील्ड तब्दील होगी। स्लिप, शॉर्ट लेग, सिली मिड ऑफ, विकेट की तलाश में अबरार अहमद इन 2 गेंदों पर। सिली मिड ऑफ पे एहसान अली, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर उमैर बिन यूसुफ। पहली स्लिप में साद और साथ यहाँ पर अब खुर्रम मंजूर को गली पोजीशन पे रखा है। गली और सेकंड स्लिप के दरमियान इनफैक्ट है खुर्रम मंजूर। दिफाई अंदाज से यहाँ पे मोहम्मद अली एक मरतबा फिर खेले और किसी बैट्समैन जैसी महारत से दिफा कर रहे हैं। याद रहे कि जो पिछला सेशन था वो भी आधा घंटा एक्सटेंड किया गया क्योंकि 1 विकेट दरकार थी, लेकिन चाय की ताखीर का सबब भी बने और अभी तक क्रीज पर मौजूद हैं मोहम्मद अली। और इस गेंद को भी सरवाइव करने में कामयाब हुए। तो चाय के वक्फे के बाद जो दोनों ओवर हैं वो बड़ी खुश उसलूबी से सरवाइव किए हैं मोहम्मद अली ने। और अब अली शान एक मरतबा फिर क्रीज पर। 21 रन दरकार हैं इस मैच में कामयाबी के लिए। अली शान अब नए ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे। और इस मैच में अगरचे 21 रन का अभी भी फर्क दरकार है, लेकिन ये अगर आप देखें कायदे आज़म ट्रॉफी में तो हमें सिंगल डिजिट में भी मुकाबलों का फैसला होता हुआ दिखाई दिया। 95-96 के सीज़न में भावल स्टेडियम भावलपुर में इस्लामाबाद ने भावलपुर के खिलाफ महज 2 रन से कामयाबी हासिल की थी। और ऐसे बहुत से मैच आपको फहरिस्त में मिलेंगे जिनका फैसला 10 से कम रन के दरमियान हुआ। तो अभी भी 21 रन का फ़र्क है इन दोनों टीमों के दरमियान। 21 रन दूर है सेंट्रल पंजाब जीत से। अली शान फवाद आलम का सामना करने के लिए तैयार। दिफाई अंदाज से खेले फवाद आलम के नए ओवर की पहली गेंद को अली शान। स्लिप फील्डर के अलावा तमाम फील्डर्स जो हैं वो बाउंड्री लाइन पर तैनात हैं। दूसरे गेंद को भी दिफाई अंदाज में खेले। आमतौर पर चौथी गेंद पर सिंगल करते हैं, यहाँ भी रन्स दस्तयाब थे, लेकिन पहली 4 गेंदों का सामना खुद करना पसंद करते हैं अली शान। आसानी से रन ले सकते थे लेकिन रन नहीं लिया। देख सकते हैं आप बाउंड्री पे काफ़ी कवरेज मौजूद है। कदमों का इस्तेमाल, निकल के खेले, इस मरतबा उठता हुआ स्ट्रोक और 2 फील्डर के दरमियान से बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुए। इस मौके पर बहुत ही खूबसूरत बैटिंग का मुजाहरा अली शान का अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। दर्द सर बने हुए हैं सिंध के बॉलर्स के लिए। फवाद आलम की गेंद फ्लैटेड डिलीवरी, कदमों का इस्तेमाल किया और एक्स्ट्रा कवर पे उठता हुआ स्ट्रोक, गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। इनसाइड आउट खेले और सिर्फ एक फील्डर बाउंड्री लाइन से थोड़ा सा आगे था और उसके सर के ऊपर से खेले। नाप तोल कर बैटिंग कर रहे हैं अली शान और ये चौथा गेंद था, इस पर सिंगल लिया अली शान ने। और सेंट्रल पंजाब और जीत के दरमियान अब फर्क रह गया है 16 रन का। आखिरी 2 गेंदें खेलना होंगी मोहम्मद अली को। आसमान की जानिब निगाहें मोहम्मद अली की। फवाद आलम के चेहरे पे तफक्कुरात, परेशानी। इतने करीब आके मंजिल अगर हाथ से निकल गई तो डेफिनेटली काफ़ी मायूस होंगे फवाद आलम, लेकिन जितनी दाद हम अली शान को दे रहे हैं उतनी ही दाद के मुस्तहिक मोहम्मद अली भी हैं
कि जिन्होंने बड़ा अच्छा साथ दिया अब तक और 33 गेंदों तक सरवाइव किया है 11वें नंबर के बैट्समैन ने। सर झुका कर अगले कदम पर, और ये खासा रहा है मोहम्मद अली की बैटिंग का, भरपूर दिफा कर रहे हैं। एक रन के लिए मेहनत करते हुए ओवर मुकम्मल हुआ। मोहम्मद अली आखिरी 2 गेंदों को बड़ी खूबी के साथ संभालते हुए, और अब अली शान सामना करेंगे नए ओवर की पहली गेंद का। अच्छा कॉन्टेस्ट है, आप देख सकते हैं काफी रिलैक्स नजर आ रहा है सेंट्रल पंजाब का डग आउट। अकरम रजा, उनके साथ हुमायूं फरहद, आबिद अली, वीडियो एनालिस्ट शानुल्लाह, कि जिनकी खुशी और उस वक्त बढ़ जाएगी और उनका गम कम हो जाएगा क्योंकि सुबह इनका लैपटॉप एक टूट चुका है। अगर सेंट्रल पंजाब की टीम जीत जाती है तो यकीनन इनकी खुशी में इजाफा होगा। दूसरी जानिब आप देख सकते हैं बासित अली, असगर और साथ साथ सुहेल नकवी, मैनेजर मोहम्मद उमर, मसाजर हसन मोहसिन, दोनों तरफ के मनाजिर आपने देखे। शफल करके खेल रहे हैं अली शान, बिल्कुल विकेटों के सामने आ जाते हैं और लेग स्टंप इनकी दिखाई देती है। तमाम फील्डर्स बाउंड्री लाइन पर, एक स्लिप है, दूसरा गेंद भी दिफाई अंदाज से खेले और जब चाहते हैं जहां चाहते हैं स्ट्रोक खेलकर रन हासिल कर लेते हैं। इतना डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ पर सिंध की टीम के ऊपर अली शान, और अपना बेहतरीन मजमूई स्कोर पर भी पहुंच चुके हैं। इससे पहले भी 96 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेल चुके हैं। लेकिन इस पिच की जो बेवफाई है वो यकीनन अब तक किरदार अदा कर सकती है। एक स्ट्रोक के फासले पर अपनी सेंचुरी से, और हरगिज अपनी सेंचुरी का नहीं सोच रहे होंगे इस मौके पर अली शान। और अली 2 नर्वस 90s हम देख चुके हैं इस मैच में, और 2 नर्वस 90 जिससे पहले के मैच में हमने देखे। उससे पहले के मैच में भी जब उमर सिद्दीक और सलमान आगा नर्वस 90s का शिकार हुए, और इस मैच के अंदर से शफीक और आबिद अली। और अब ये चौथी गेंद है, इस पर सिंगल भी बचाना चाहेंगे फवाद आलम, और कवर में फील्डर करीब हैं, 2 फील्डर ऑफ साइड पर, और इस मरतबा कट किया दोनों फील्डर्स के सरों के ऊपर से, और ये 4 रन मिलेंगे। और इस 4 रन के साथ अली शान ने अपने फर्स्ट क्लास कैरियर की पहली सेंचुरी मुकम्मल कर ली। और इस सेंचुरी से ज़्यादा जो खुशी की बात इनकी टीम के लिए रहे कि अब जो फतह और शिकस्त के दरमियान जो फ़र्क है वो सिर्फ 12 रन का रह गया है। बहुत ही ज़बरदस्त सेंचुरी है, मैं समझता हूँ इस सीज़न की सबसे ज़बरदस्त सेंचुरी होगी कि जो यहाँ पर हासिल की है अली शान ने। बहुत ही उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया, 11 चौके और 2 छक्के यहाँ पर इस स्कोर में शामिल हैं। अली शान ने बहुत ही उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया, और इस सेंचुरी का मजा, इस सेंचुरी का लुत्फ उस वक्त दोबारा होगा जब सेंट्रल पंजाब ये मैच है जीत जाएगी। बड़ी हिट लगाने की कोशिश है, अंपायर की उंगली फिजा में बुलंद, और यूं 12 रन से कामयाबी। सिंध की टीम 12 रन से इस मैच में जीत गई और सेंचुरी मुकम्मल करते ही चूक गए। अब्रार दिफा को तोड़ने में कामयाब, लेकिन बहुत ही उम्दा इनिंग खेली है नौजवान अली शान ने। जितनी दाद दी जाए अली शान को कम है। 2-4 हाथ जब दूर मंजिल रह गई उस पर अली शान हिम्मत हार गए। और इस डिसीजन को देखना होगा, रिप्ले देखना होगा। सिंध की टीम ने एक सनसनीखेज मुकाबले में 11 रन से कामयाबी हासिल की। अभी तक विकेट पर खड़े हैं अली शान, यकीन नहीं आ रहा उन्हें कि वो आउट हो चुके हैं और उनकी टीम मैच हार चुकी है। ये देखिए स्लो करना चाहते थे और ये गेंद यूं ही लग रहा है कि तीनों स्टंप्स के सामने टकराई है, लेकिन ताखीर से फैसला दिया। और उसके बाद ये सिंध की टीम का जश्न देखिए, अपने डग आउट की जानिब भागते हुए इस कामयाबी को सेलिब्रेट करते हुए। और क्यों ना करें, एक असाब शिकन मार्के में सिंध की टीम ने सिर्फ 11 रन से कामयाबी हासिल की है और एक बेहतरीन क्रिकेट हमें देखने को मिली है। लेकिन बड़ा अच्छा जेस्चर आपने देखा कि सिंध के मैनेजर सुहेल नकवी ने गले लगाया अली शान को, और आप देख सकते हैं सिंध के तमाम खिलाड़ी गले लगाते हुए अली शान को। यह है असल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, यह है क्वाइद आजम ट्रॉफी का खासा। वीडियो एनालिस्ट आसिम ने गले लगाया और ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर है दोनों टीमों के दरमियान। ये अब्रार को देखें आप, कितना शाबाशी दे रहे हैं, गले लगा रहे हैं। तो दोनों टीमों ने
मैदान में उतरी, एक टीम ने मैच जीता लेकिन दूसरी टीम ने दिल जीत लिए, और ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर, बड़ी अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमने देखने को मिली जो अमूमन देखने को नहीं मिलती, कि अबरार जिन्होंने आउट किया, मुकाबला मैदान के अंदर था, लेकिन जिस अंदाज से अली शान खेले, उनको गले लगाया, उनको मुबारकबाद दी, मोहम्मद अली को गले लगाया, ना सिर्फ अबरार ने बल्कि वीडियो एनालिस्ट ने, जो मैनेजर ने, साथ साथ रिजर्व खिलाड़ियों ने, डॉक्टर ने, मसाजर ने, हर एक ने गले लगा के शान को, उनकी शानदार बैटिंग की मुबारकबाद दी, दाद दी, और साथ साथ जो है मोहम्मद अली को प्रेस किया, क्योंकि ये क्रिकेट की जीत है। जो शानदार खेल हमें आज इस चौथे दिन देखने को मिला है, शायद ही पिछले किसी मैच में देखने को मिला, और यही वजह है कि अली शान इस शायान शान जो फेयरवेल उसका मुस्तहक है। जिस तरह से वो मैदान से बाहर आ रहे हैं, मुखालिफ टीम ने भी उनकी उम्दा बैटिंग को सराहा है, दादो तहसीन पेश की है, और इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि ये जो 11 रन का जो फ़र्क है यहाँ तक पहुँचाने में अली शान का किरदार बहुत ज़्यादा नुमाया रहा है। बहुत ही उम्दा बैटिंग की है नौजवान अली शान ने, और ये इनिंग उनके कैरियर को बहुत ही ज़्यादा जिला बख्शेगी, उनके कैरियर को बहुत आगे लेके जाएगी। बहुत कुछ उनको इस इनिंग से सीखने को मिलेगा कि मुश्किल सूरत हाल में नर्व्स कंट्रोल करते हुए किस अंदाज से बैटिंग करनी है। वेल डन अली शान, नौजवान बैट्समैन, जिस अंदाज से उन्होंने बैटिंग की और अपनी टीम को मुश्किलात के भंवर से निकाला, और 11 रन, महज 11 रन रह गए, लेकिन दिल जीते यहाँ पे सेंट्रल पंजाब ने। 55 पे 5 खिलाड़ी आउट थे, और फिर वहां से स्कोर को लेकर 295 तक लाना हरगिज आसान नहीं था। यकीनी तौर पे दिल शिकस्ता जरूर है, लेकिन इस शिकस्त से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सेंट्रल पंजाब को। तो ये बैटिंग की कहानी, इब्तदाई जो 5 बैट्समैन थे उनमें सिर्फ रिजवान हुसैन जो है वो क्रीज पर डटे रहे, 85 रन की इनिंग्स खेली। फ़हीम अशरफ के साथ एक अच्छी शराकत, फिर अहमद सफ़ी और वकास मकसूद ने साथ दिया, लेकिन अली शान जो है वो इस मैच के हीरो रहे, जिन्होंने 165 गेंदों पर 100 रन की बाकमाल इनिंग्स खेली, कैरियर बेस्ट इनिंग्स खेली, लेकिन फतह और शिकस्त के दरमियान जो 11 रन का फ़र्क था उसे कम ना कर पाए। लेकिन इनकी बैटिंग की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। रिजवान हुसैन ने 85 रन की इनिंग खेली, और रिजवान हुसैन की विकेट गिरने के बाद ऐसा लगता था कि शायद ये मैच जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस अंदाज से खेले हैं अली शान, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की उन्होंने, और ये इनिंग जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि उनके कैरियर के लिए बड़ी ज़बरदस्त ये इनिंग साबित होगी। उनको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इस इनिंग से, और जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। 8वें नंबर के बैट्समैन अगर 100 रन करता है इस मुश्किल सूरत हाल में आके, तो यकीनन उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर उन पर जिम्मेदारियों का बोझ डाला जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन पर डाली जाए, तो आइंदा आने वाले वक्त में एक और पाकिस्तान को बड़ा अच्छा विकेट कीपर बैटर मिल सकता है। और ऐसे लम्हात होते हैं अली जो मेक और ब्रेक करते हैं, हीरो या ज़ीरो बनाते हैं। तो अली शान यकीनन हीरो बनकर उभरे हैं इस इनिंग्स में। और बॉलिंग की हम बात करते हैं तो सुहेल खान सबसे कामयाब बॉलर रहे, जिन्होंने 63 रन के बदले 4 विकेटें हासिल की। 3 विकेट्स उन्होंने कल हासिल की थी। इब्रार अहमद को रन्स देने पड़े, लेकिन 112 रन के बदले 3 विकेटें, और जिसमें अली शान की कीमती विकेट भी शामिल है। और यूं 295 रन पर ऑल आउट हुई सेंट्रल पंजाब की टीम, और 11 रन की फतह मुकद्दर बनी सिंध की। और जिस अंदाज से विकेट गिरी है, पहली विकेट इमरान डोगर विकेटों के सामने अपने आप को लाने से नहीं रोक सके, आबिद अली इनसाइड एज का शिकार हुए। बड़ी कामयाबी थी सुहेल खान की, और यहाँ से सिंध इस मैच में वापस आई, और उसके बाद ये अगली विकेट एक और सुहेल खान की जानिब से अली जरियाब आउट हुए। ये चौथी विकेट थी साद, जो अपनी ओवरस्टम को कवर नहीं कर सके, और उसके बाद फिर सैफ बदर जिस अंदाज से आउट हुए, रन लेना चाहते थे, यस नो की हेजिटेशन हुई, वापस अब क्रीज में पहुंचे हैं बैट्समैन, और यहाँ पे ये रन आउट हुए सैफ बदर, और खुश नहीं थे अपने रन आउट होने से, हेजिटेशन हुआ था दोनों के दरमियान। फ़हीम अशरफ आज आउट होने वाले पहले खिलाड़ी जो पुल करने गए, और बड़ा अच्छा कैच लिया अबरार ने, 55 पे 5 से 112 के स्कोर तक लेकर आए थे ये दोनों, और उसके बाद पुल करना चाहते थे। रिजवान हुसैन की विकेट बड़ी कीमती विकेट थी, और उसके बाद बड़े हिट लगाना चाहते थे अहमद सफ़ी, कैच हुए, और उसके बाद एक और अच्छा कैच था यहाँ पे साद खान की जानिब से जब वकास आउट हुए, और ये वो विकेट जिसका इंतजार था सिंध की टीम को, और इस मैच के लिए डिसाइडर ये विकेट साबित हुई। अली शान की नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी अपने ना सिर्फ इख्तिताम को पहुंची, बल्कि एक नेल बैटिंग मैच में 11 रन से कामयाबी हासिल हुई यहाँ सिंध की टीम को। और जितनी दाद दी जाए हमें मोहम्मद अली को, अली शान को, वो कम है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त मैच जीतने में आज सिंध की टीम कामयाब हुई है। तो ये है मैच समरी। सिंध की टीम ने पहली इनिंग्स डिक्लेयर की 155 पर 9 विकेटों के नुकसान पर, क्योंकि 10 आउट होने पर
3 पॉइंट्स मिलते। सेंट्रल पंजाब को सुहेल खान ने 65 रन किए, मोहम्मद अली ने 3 विकेटें हासिल की, यही कुछ किया। सेंट्रल पंजाब ने 187 रन 9 विकेट पर इनिंग्स को डिक्लेयर किया। आबिद अली बदकिस्मत रहे जो 2 रन की कमी से अपनी सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर पाए। अबरार अहमद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। दूसरी पारी में सिंध की टीम ने 338 रन बनाए। इस मरतबा असद शफीक की बदकिस्मती थी जो 97 रन पर आउट हुए और फिर 295 रन बनाए और 11 रन के फर्क से सेंट्रल पंजाब की टीम को इस मैच में शिकस्त हुई। अली शान ने 100 रन किए और सुहेल खान ने 4 विकेटें अपने नाम की। ऑलराइट, तो इस खबर के साथ ही कि इस मैच में 11 रन से सिंध की टीम ने कामयाबी हासिल की। एक नेल बैटिंग है मैच रहा, बड़ा इंटरेस्टिंग है मैच रहा और इस लेग का सबसे ज़बरदस्त ये मैच रहा जो बिलाखिर अपने इख्तिताम को उस वक्त पहुंचा जब सिंध ने अली शान की विकेट हासिल करते हुए 11 रन से कामयाबी हासिल की। इस वक्त लेंगे हम एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको इस मैच की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में खुश आमदीद कहेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। It just doesn't get any better than this. What a wonderful game of first-class cricket we have witnessed over here. The pendulum swung both ways throughout the 4 days of this game. It's time to talk to the captains. First of all, Mohammad Saad. Saad. Tough luck, Saad. बहुत अच्छी गेम हुई. बस in the end result हमारी फेवर में नहीं हुआ, but it was a good game of cricket. कहाँ आपको लगता है कि मैच में पीछे रह गए आप? आई थिंक असद भाई बहुत अच्छा खेले हैं सेकंड इनिंग में, बाकी सुहेल खान के रन्स वाइटल थे। हमारी पहली इनिंग में भी वी कुड हैव डन बेटर इन द फर्स्ट इनिंग, मैक्सिमाइज नहीं कर सके जो हमारी सिचुएशन थी, तो रन्स वी कुड हैव स्कोर्ड मोर रन्स। यस, अ लॉट ऑफ पॉजिटिव, स्पेशली अली शान की अगर हम बात करें, व्हाट एन इनिंग, व्हाट अ ब्रिलियंट नॉक जी, बिल्कुल वाज टू क्लोज टू विन द गेम बट अनफॉर्चुनेटली, बाकी ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, अच्छी गेम हुई है मैच। राइट, आगे अब एक मैच रह गया इस टूर्नामेंट में, काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे आपके चांसेस फाइनल के लिए, स्टिल अ लॉट टू प्ले फॉर। हाँ, डेफिनेटली लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स, बट लेट्स सी हाउ इट गोस। राइट, ऑल द बेस्ट फॉर द रिमेनिंग गेम। थैंक यू। Fawad Alam, the proud captain for Sindh. Goosebump stuff, Fawad. Still well done in the end. Thank you very much. शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख शुक्र है। अच्छी परफॉर्मेंस रही, but still a lot to learn from.
जिस तरह का मैच शुरू हुआ, जिस तरह की सिचुएशन थी, सारी सिनेरियो से आई थिंक क्रेडिट जाएगा पूरी टीम को। आई थिंक क्योंकि आपने देखा हो पहली बैटिंग हुई, फिर क्या 6 आउट थे, फिर उसके बाद सोहेल खान की इनिंग्स, फिर हमने 155 रन किए, फिर एक तरह से एक टाइम पे ये लोग बहुत अच्छा जाते, फिर हमने इनको जल्दी आउट किया। मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई हैं हमारी टीम से। फिर कमिंग टू द सेकंड इनिंग्स ये था कि बैटिंग जब शुरू हुई तो शुरुआत में स्टार्ट अच्छा हुआ, खुर्रम अच्छा खेला, उमर बिन यूसुफ अच्छा खेला, असद शफीक ने जाके जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉक किया, फिर उसके बाद फिर अगेन सोहेल खान ज़बरदस्त बैटिंग की, फिर उसके बाद ताबिश खान ने जितना भी जो है किया, फिर हसन ने किया। मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर अगर बॉलिंग में आए दोबारा हम लोग अगले दिन तो 5 आउट हम लोगों ने जल्दी कर दिया। तो यही क्रिकेट है, क्रिकेट को यही होता है कि जो इजी रहता फिर यही होता है। यही मैंने सुबह बात की थी कि ये मत समझना कि वो हार गए हम जीत गए। अभी 5 विकेटें हैं, मैच का कुछ पता नहीं होता। जितने भी रन हैं हम जहाँ पर आप पकड़ सकते हो उधर ही पकड़ लो, उनको उठने ना दो। वही हुआ कि एक दो इनिंग्स होती हैं जिसकी वजह से मैच दें कहाँ से कहाँ आता है। फिर हमने थोड़े से लैप्सेस भी किया। आई थिंक वो अगर कैचेस अवेल हो जाते तो आई थिंक इतना मैच नहीं आता। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा, कैचेस छूटते हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके बैट्समैन को क्रेडिट देना पड़ेगा। जो विकेट कीपर है वो बहुत ज़बरदस्त खेला आई थिंक, जिसकी वजह से मैच पूरा आया। फ़हीम की सुबह पार्टनरशिप उनके साथ अच्छी हुई। आई थिंक वो सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त रहीं। सोहेल खान के बारे में क्या कहेंगे? नॉट विद जस्ट विद द बैट बट विद द बॉल। सोहेल खान की अपनी दुनिया है, वो जब चाहता है वो कुछ कर सकता है, लेकिन वो जब खुद चाहता है आई थिंक वो अपने फ्रेम ऑफ माइंड है उसका, उसमें एबिलिटी हर चीज़ की है, बॉलिंग की भी है, बैटिंग की भी है। लेकिन वो जब अपने आप को कर सकता है, जब उसको चाहिए कि हाँ मैं लड़के खेलूँगा तो वो खेलता है, जब उसको नहीं करना तो वो कर देता है। सीनियर प्लेयर का यही काम होता है, जो इतने अरसे से खेल रहा होता है उसको सारी कंडीशंस पता होती है। क्योंकि नए लड़के जो आते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो इस तरह के सिनेरियो जैसे आप देखें 44 पे 6 आउट होना, 40 पे 6 आउट हो जाना, उसके बाद आपकी टीम मैच जीत जाए। इनिंग्स में देखें आप, सोहेल खान आके 8वें नंबर पे आके पहली इनिंग में 60-65 रन करता है, फिर उसने 8-10 आउट किए हैं पूरे मैच में। उसके साथ जिन बॉलर्स ने, अबरार ने, ताबिश खान ने, मीर हमजा ने, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग की है। और क्रेडिट जाएगा पूरी टीम को। आई थिंक इट्स अ टीम गेम, जो कि इस मैच में पूरा नज़र आया कि इंडिविजुअल कुछ नहीं था, पूरा टीम गेम रहा। फाइनल की दौड़ में अभी आप शामिल हैं, तो स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट गेम। इंशाल्लाह जी फाइनल खेलेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। पूरी कोशिश यही है। यही इस मैच में भी जब स्टार्ट होना था मैच का तो यही फ्रेम ऑफ माइंड था कि फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो ये मैच जीतना है। कि अगर हालांकि पहली इनिंग हमारी बड़ी वो हो गई थी, लेकिन हमारा स्टिल बिलीव था कि हम कर सकते हैं। हम जहाँ पे हमें कुशन कहीं मिलेगा तो इंशाल्लाह हम पकड़ लेंगे, तो वही हुआ। और इंशाल्लाह अगले मैच के लिए फिर से तैयारी करेंगे और अच्छा खेलेंगे, और ताकि वो अगला मैच भी जीतें, ताकि फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकें। Right, thank you so much and all the best for the remaining game. Thank you very much. Right, you heard it from the captains. That is all we have from down here. It's back to the commentary box. Thank you very much, Ali Yunus. Wow, what a game of cricket we've just seen here. Look back at the match summary over the course of 4 days. 155 for 9 declared Sindh. Sohail Khan with the runs. Muhammad Ali with the wickets as well. 187 for 9 was Central Punjab's response. Magnificent 98 from Abid Ali. Abrar Ahmed with 3 for 37 stood out with the ball. Sindh second time around was a big pat on the back to skipper, former skipper Asad Shafiq. 97, what a knock that was. Ahmed Safi Abdullah 4 for 58. In Central Punjab 295. Ali Shan's 100 went in win. In the end, Sohail Khan with the wickets. Central Punjab losing by 11 runs. 8 rounds completed, 9 rounds rather completed, and this will be the final round of games starting in 2 days' time. Balochistan versus Northern will be here at State Bank Sports Complex. Sindh versus Southern Punjab still in the hunt for that final will be at NBP Sports Complex, and Khyber Pakhtunkhwa will lock horns versus Central Punjab at the UBL Sports Complex. Time for all of us to take a breather. What a game this was. I hope you enjoyed our coverage. We look forward to your company in 2 days' time. Until then, it's goodbye from State Bank Sports Complex.